कह रहे थे तुमसे कोई हमारे स्टाफ का कोई मीनवाइल सर इज कमिंग, वी शुड नो कि ये 5 दिन का हमारा एकेडमिक प्रोग्राम है, ठीक है। 4 दिन एकदम भयंकर तरीके से पढ़ाई होगी, तो अच्छे से पढ़ना है, नींद भी बहुत आएगी, खुलते रहना है, कॉफ़ी हम लोग पिलाते रहेंगे, खुद भी हो तो मुंह धोते रहना है, ठीक है। आगे वाले स्पेशली फ्रंट 2 रोज वेरी इंपॉर्टेंट, सोना नहीं है, बाहर के लोग आए तो उनके सामने नहीं सोना है, नाक नहीं कटनी है, ठीक है। आज एंडो नहीं आवाज़ आ रही है पर इको करिए आवाज़, हाँ इको कम करो। तो आज एंडोक्रीन ब्रेस्ट है, मॉर्निंग सेशन एंडोक्रीन होता है, आफ्टरनून सेशन ब्रेस्ट है, उसके बाद हमारी कीमोपोर्ट की वर्कशॉप है। तो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस कि सब लोग जितने लोग हों सारे लेक्चर्स में, सब आज नहीं चारों दिन रहो, प्लस मैक्सिमम लोग वर्कशॉप्स अटेंड करो, ठीक है। कीमोपोर्ट कैसे डालना है, कैसे करना है, बाकी ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड कैसे होना है, नमस्कार सर। सारी वर्कशॉप है, एक दिन सूचरिंग की वर्कशॉप होगी, वैस्कुलर एनास्टोमोसिस की वर्कशॉप है, सब तरह की अलग अलग टाइप की वर्कशॉप्स है, चारों दिन वर्कशॉप्स होगी, एग्जॉस्टिव सेशंस होते हैं मॉर्निंग से लेकर शाम तक, लेकिन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कहीं और नहीं मिल, कहीं और जाने, प्लस ऐसे एकेडमिक सेशंस भी नहीं मिलेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी कुछ दिमाग में जाए एटलीस्ट उसे रखना है और जागे रहना है, ठीक है। थैंक यू। अभी जस्ट सर विल बी ज्वाइनिंग इन कपल ऑफ मिनट्स, देन विल स्टार्ट। क्वेश्चंस पूछने, थर्ड ईयर्स वेरी इंपॉर्टेंट, JR4 ऑल्सो, क्वेश्चंस पूछने स्पीकर्स से, ठीक है। इट्स रेज योर हैंड्स एंड डू डिस्कशन, ठीक है। डबल वे इन्वॉल्वमेंट होगा तो जाहिर सी बात अच्छा रहेगा, सिंगल वे बैठोगे तो नींद ही आएगी, ठीक। क्वेश्चन पूछने बाद में पूछो, सामने पूछो, एंड ऑफ द लेक्चर में ऑब्वियसली पूछोगे, ये जब टी सेशंस होंगे, ब्रेक होंगे, तब पूछो, जैसे भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।
ये तो ब्लैक मैजिक से उठाओ। ब्लैक मैजिक से कैसे? अरे यार भाई, अरे ये सेटिंग्स के बगल में 3 डॉट है। वीडियो कैप्चर डिवाइस है। नहीं 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 नहीं। अरे फरहान भाई, अच्छा तुमने मेरा वही चेंज कर दिया, कैमरा भी ले लो। अभी देखो हमिंग आ रही है। मत करो उसको। A very good morning to all of you. On behalf of the surgery department in King George Medical College, I welcome you all to the surgery education program of 2025, which is a part of our 113 Foundation Day celebrations. And the surgical education program is a 4-day academic feast for which will be discussing the surgical principles governing all major organ systems. And today we'll be starting off with breast and endocrine surgery and head and neck surgery, for which I invite Dr. Nikhil Singh, who's a professor and head of the department in general surgery at the Autonomous State Medical College in Gonda. Okay, I'd like to thank Professor Sonkar and his team for inviting me to give a presentation in this session out here. And I would be talking on approach to goiter. So there are going to be lots of photographs in this. So obviously goiter, everybody knows, comes from the Latin word gutur, and it's a diffuse enlargement of the thyroid gland. Swelling which is lined, encapsulated, big or small, hanging like a scrotum from the neck. That is what Sushruta said 600 BC, at 600 BC. So thyroid nodules and multinodular goiter, they are two different things. So thyroid nodule is a discrete lesion within the thyroid gland, which is palpable or sonographically distinct from the surrounding parenchyma. And multinodular goiter is a clinically recognizable enlargement of the thyroid gland characterized by excessive growth and structure or functional transformation in one of the areas of the normal thyroid tissue. So this is what they look like. I guess you must have seen a lot of goiters. So the classification, simple goiters and diffuse hyperplastic goiters, nodular goiters, so toxic goiter, neoplastic goiters, thyroiditis, and miscellaneous. Now we go to the evaluation of the goiter. So it's clinical evaluation, laboratory diagnostics, diagnostic imaging, FNAC. So first we have to confirm that it is a goiter. So it's a midline swelling, we all know. We can have other midline swellings also. Goiter, thyroid gland, as you know, moves generally with deglutition. So we can have a thyroglosal cyst also out there, or a dermoid also, which can move with deglutition, or a plunging granula in the midline. So you have to establish the etiology, rule out thyrotoxicosis, assess the risk of malignancy, and the retrosternal extension. So if you go by history, you have to see the age of the patient. For example, you have puberty goiters, you have disharmogenic goiters in the initial part. Then the gender, mostly the ladies have more of goiterogenic changes in their thyroid. The locality, whether the patient is from an endemic area, we all know the Himalayan range. And the interesting part is there is a river struma. And if you know, sometimes struma is again referred to as goiter.
So basically this comes because all along that river, there were a lot of people who had goiters. So by the name of the river, it's known as struma also. Then thyroid nodules, you have to find the duration. The growth means whether it's grown very aggressively or it's very slow growing feature. Compressive symptoms. The compressive symptoms generally is when the patient says that he or she, when they're lying down, then they feel the compression. That is the initial part when it presses on the trachea, when the multinodular goiter or goiter becomes big. And then later on they have compressive symptoms. The compressive symptoms on the esophagus are very rare. I think all of you know why, because it can be easily displaced, but the trachea stays at one place. And the risk factors, radiation, family history, the diet, and the bowel habits and sleep. Bowel habits and sleep is basically for features of hyperthyroidism. Then you have to check out whether it's a hereditary thing or not. So you take the family history also. It can be one of the part of MEN1, MEN2A, 2B complexes, as you can see. So manifestation, as I just told you, what are the symptoms and signs? It's a slow-growing anterior neck mass, or can be a fast one. Acute one. Acute one would signify anaplastic carcinoma or bleeding in the thyroid gland. Lateral or multinodular examination, enlargement during pregnancy, which is pregnancy goiter. The patient may have cosmetic complaints, be an asymmetric lump, and maybe causing tracheal deviation or compression. There can be acute, occasional upper airway obstruction, dyspnea, cough, and dysphagia. Sudden transient pain or enlargement is generally due to hemorrhage, and there can be gradual developing hyperthyroidism features and long-standing goiters. This generally happens in long-standing goiters, multinodular goiters. There may be superior vena cava obstruction, which is rare, then recurrent nerve palsy, which is rare. Obviously, these two, and Horner syndrome, especially Horner syndrome and recurrent nerve palsy, are features suggestive of carcinoma. And they can be lymphadenopathy or non-adenopathy. Now you go to clinical examination. The issues are whether it's benign or malignant, single or multiple, unilateral or bilateral, mobile, fixed, whether there's any lymphadenopathy or not, whether there's any retrosternal extension of this swelling, the compressive symptoms or not, and what is the consistency. So these are the features generally what we look for during examination. So I think you know all these methods. The Lahey's method, that can be done from the front or the back. You push the finger and you try to feel the nodule. Pislow's method is when you ask the patient to extend the neck and you see the thyroid thing come forward. Kreil's method is for small nodules, when you just push it with your thumb and then you feel when you ask the patient to deglutate, or you ask the patient to have a sip of water. That's the best. Actually, you should ask the patient to have a sip of water. That's why they understand. Or you can do the Cocker's test. You know what the Cocker's test is. When the patient has trichomalacia, you try and push it from both the sides, and the patient will start having respiratory distress. Or you can find pressure effects on the carotid by the non-palpable carotid. That's the Berry's sign. Generally happens in carcinoma of the thyroid. So then you do palpation of the thyroid. It's soft, firm, or hard. Soft or cystic swellings, colloid nodules, but colloid nodules can also present as firm nodules if they're totally full. And then hard nodules are generally carcinomatous nodules. So long-standing can also have calcification, and they can present as hard nodules. So you have to be careful, as you can see in this X-ray. You see the mobility of the thyroid. It's mobile or not, whether there's restricted mobility or it's fixed. Anaplastic carcinoma are generally fixed. Then you palpate the trachea. You know how to palpate the trachea. You go from this part and you just follow it down, and you see whether tracheal deviation is there or not. You, especially in retrosternal goiters, when people who have short necks and stouty build, it's a little difficult to see whether they have retrosternal extension. So you have to ask the patient to extend the neck and then deglutate. If you can see the lower border, it's good. But you can't see the lower border, probably the patient has retrosternal goiter. And you can try and push your fingers underneath the lower border of the thyroid swelling. And another method is you do percussion on the manubrium.
If there's retrosternal extension, you have to look for the Pemberton's sign. I guess everybody knows. You ask the patient to raise their hands up, and then you see the veins dilating out there. If there's superior vena cava obstruction, you'll see the veins on the chest dilating. Then you have to look for any lymphadenopathy. Whether there's any lymphadenopathy, apart from just the thyroid, you have to search for the lymph nodes. The next is you rule out toxicity. I guess everybody knows the features of hyperthyroidism. So, nervousness, irritability, palpation, fatigue, menstrual disturbances, heat intolerance, sweating. So you see moist skin, tremors, tachycardia, and you look for the eye signs and thyroid bruit. So if it's grave, then you know all these eye signs. I guess I don't have to explain you, I'm just showing you the images. And you try and see exophthalmos in these patients by standing behind the patient. You generally don't see the eyeball, but in these patients you can see the eyeball. It tells you. So evaluation, now you assess for the malignancy of the patient. So you look for some signs and symptoms in these patients. Highly suspicious patients would be having family history of MTC or multiple endocrine neoplasias, rapid tumor growth, very firm nodules, fixation to adjacent structures, focal cord paralysis, regional lymphadenopathy, distant metastasis. I'll just show you the pictures of distant metastasis also. Moderate suspicion is age less than 20 years or more than 60 years. Male sex, solitary nodule, history of head and neck irradiation, firm texture, possible fixation when you move it. Nodule more than 4 centimeters in diameter, partly cystic, compressive symptoms. So this is a case of rapid tumor growth, as you can see, probably anaplastic carcinoma. These are hard nodules. This is distant metastasis from follicular carcinoma. I guess you must have seen such patients in your clinical rounds. Skull mets, as you see, there you can see pictures of X-rays which can show you a skull met. And this is again distant metastasis. Then you look for familial MTC. Carefully, clinical examination should be done to seek signs of MEN2B in these patients. And family history suggestive of thyroid, parathyroid, tumors and pheochromocytoma should be sought. Now coming to diagnostic investigations, T3, T4, TSH, ultrasonography. See, TSH is the most important one out of all these. But to say, you can say T3, T4, TSH, ultrasonography, FNAC, scintigraphy, CT or MRI, lung function tests. Now lung function tests are generally done for retrosternal goiters and serum calcitonin, MTC. So I don't think I need to show you this. So this is a classification which is done for FNAC. This does system classification. Diagnostic category 1, non-diagnostic unsatisfactory, 1 to 4. So I guess this is more of theoretical stuff. We'll just skip this. Now coming to true cut biopsies. In which patients should you go in for a true cut biopsy? Like your examiner may ask you, like, when would you like to do a true cut biopsy? So should be done in intermediate FNAC results on repeated FNAC. And then there's A type of indeterminate significance, follicular neoplasm, and in case of calcified thyroid nodules. But there's a word of caution that this should be done under ultrasonographic guidance because there are a lot of complication rates in this. Ultrasonography, now the thyroid imaging reporting and data system has come, which generally if you send a patient for ultrasound, they give you this. Thyroids 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 1, 2, 3 is like, okay, you can just remember this much, that it's probably benign because till 3 is less than 5% of malignancy. The other ones you need to investigate more. So this is the recommendation. For example, if a patient comes to you with some ultrasound report, so you should know what to tell the patient. Like they're going to ask you, should I go in for FNAC or shouldn't go in for FNAC? So if it's normal thyroids 1 and 2, that's you don't need to go in for FNAC also, you can just follow up the patient. If it's more than 1.5 centimeters, you follow up. If it's more than 2.5 centimeters, you go in for FNA and follow up for 1, 3 to 5 years. Similarly for 4 and 5, that associates with more of chances of malignancy in these patients.
This is just an ultrasonographic benign adenoma. These are different ultrasonographic pictures of the thyroid. You can have papillary carcinoma with mixed echogenicity. Now, ultrasound guided aspirations, very thyroid nodules. You have to, if you want to go in for an ultrasound guided aspiration, you have to look for the dominant nodule actually. You do an aspiration from the dominant nodule. So that is where your, the ultrasound helps you during FNAC. And plus, if it's a cystic thing, you take it from the wall. You don't take it from inside the cyst. Now, this thyroid elastography has come in these days. So it's a technique that measures the elasticity of the thyroid. And according to that, there are two systems which grade it from 1 to 4. 1 being a soft or an elastic thyroid, and then 4 is, it becomes firm. So that is how they try to grade whether it's a malignant or a non-malignant thyroid. For example, these are the two images in which you can see that the score 1. Score 1 means it's probably benign. And if you go to like 5.23, that means it's probably malignant. These are some X-ray pictures of, now next is X-rays. Whenever you're taking a patient up for surgery, you need to have X-rays of the neck. So you can see tracheal deviation, you can see calcification, you can see the soft tissue pressing the trachea out there, and the thyroid mass behind the trachea. So long-standing goiters can develop calcifications which can stimulate carcinomas. And this is a retrosternal goiter, huge retrosternal goiter, which is mostly in the chest. And lung metastasis, you can always find out lung metastasis also. Although nowadays we don't generally refer to that, we go in for a PT scan. Then you can see skull, bones, metastasis. Now coming to CT and MRI. We generally do not require CT and MRI in these patients. There are specific situations in which you require CT and MRI. So when you want to see whether the thyroid is a big thyroid, you suspect compressive symptoms. You suspect that the patient is a patient of carcinoma thyroid and it's involving the surrounding areas, it's infiltrating into other areas. Then you go in for a CT or a MRI. So not routinely done, however, does reveal any suspected retrosternal extension, relationship of goiter to trachea, esophagus as well as caliber. Now coming to scintigraphy, you see the functional status of a thyroid nodule, thyrotoxicosis, differential diagnosis, thyroid cancer. These are the indications now for an isotope scan. And thyroid cancer, after the surgery you want to see the post-thyroidectomy residual mass which is there, and you follow up for tumor recurrence. So these are different images of, you can also find out the lingual thyroid after doing a thyroid scintigraphy. Now coming to PET scans, unlikely tool for primary assessment of thyroid nodule, you'll generally have it for distant metastasis. The sensitivity is high but specificity is less than 40%. The most remarkable feature is very high NPV, almost 100%. If a patient in MTC you have persistent hypercalcitonemia and you want to evaluate, you can go in for a PT scan and you can find out the focuses in that. 5 minutes, okay. So now genetic screening, we can go in for genetic screening. As you know that for red proto-oncogene analysis is approximately 25% of patients with presumed sporadic MTC. That is why you generally need genetic screening in these patients. So relevance of thyroid tumor genetics to surgeon is that most thyroid tumors arise as a result of multiple mutations in different genes, familial thyroid cancer syndromes, and sporadic thyroid cancers. So treatment option is clinical follow-up or levothyroxine suppression treatment, radioiodine treatment, and surgical treatment. These are the basic things that you have. But obviously before you go in for surgery, you need to do a vocal cord assessment. So you need to have the history. If there's any, the patient tells you that they have voice abnormality, dysphagia, airway symptoms, hemoptysis, pain, rapid progression, prior operation of the neck done before.
or you have an extensive, on examination you feel an extensive mass fixed to the larynx or the trachea. So treatment for Graves' disease is surgery, radioiodine and antithyroid drugs. So when do you go in for surgery? You go in for surgery when the patient has a nodule in Graves' disease. You want to know whether the nodule is malignant or not. That's a very rare thing. If it's the Graves' disease is not being controlled on antithyroid drugs, and number three, if the patient wants immediate relief and does not want to go in for radioiodine, a lot of patients, and for cosmesis reasons also. And if there are eye signs, then you go in for operation for Graves. Or the patient is desirous of pregnancy following, there is planning early pregnancy, so that you can't give radioiodine in that. And Graves disease in children and adolescents. And all these are the indications for surgery in Graves. Now, treatment options in MNG is regular follow-up, iodine supplementation, levothyroxine supplementation, radioiodine therapy, surgery, percutaneous ethanol injections. So regular follow-up, we can have it just like that. Iodine supplementations we can try for these patients. Sometimes the goiter regresses, but they are obviously positive and negative of everything. If you give the patient levothyroxine suppression, then the goiter may reduce, but you would need to put the patient on a lifelong therapy for that. You can't just iodine therapy may regress thyroid, but it's not necessary. So we go in for surgery. So surgery in multinodular goiter, moderate goiters with no symptoms, in the sense that patient says that they want it for cosmesis. And indications for therapy would be pressure symptoms. If there is hyperthyroidism, rapid growth in one nodule, that's suspected malignancy in these patients. If there is retrosternal extension, and relative would be cosmetic and patient's concern. So the treatment would be significant goiter reduction. The advantages would be rapid decompression of the trachea, prompt relief of symptoms, definite histologic analysis. Disadvantage would be vocal cord palsy in good hypothyroidism and risk of hypothyroidism dependent on resection, the extent of resection, and risk of recurrence following resection. For example, nowadays we prefer for MNGs a total thyroidectomy. Previously it could be bilateral subtotal thyroidectomy also. So actually NTT is near total thyroidectomy. There is no term as such, but you just put it. So it's total thyroidectomy versus bilateral subtotal thyroidectomy. You should know the advantages and disadvantages of these two. Why we should go in for total thyroidectomy is that there is adequate removal of the whole tissue, there is prevention of recurrence, and avoidance of completion therapy in presence of occult malignancy. And disadvantages of bilateral subtotal thyroidectomy would be hypothyroidism is not avoided, then long-term recurrence rates are there, and tenfold increase, surprisingly, is more of complications of surgery. Then thyroid carcinoma coming to thyroid carcinoma for microcalcification less than 1 centimeter, observation without surgical resection can be considered. This is basically what the Japanese are doing now. It's not a consensus thing. The Japanese have found out that in the next 10 to 15 years, they just see 2 or 3% of the patients of papillary particularly. I'm not talking about anaplastic on here, medullary thyroid cancer, or maybe follicular also. they have some features of lymph node metastasis, or the thyroid gland becomes bigger. So that is why they keep them under regular observation. And then tumors larger than 1 centimeter with or without lymph node metastasis, surgery with or without radioiodine is curative in most cases. Actually 1 to 4 centimeters, you can also go in for a hemithyroidectomy. And for lesions more than 4 centimeters, you have to go in for a total thyroidectomy. And depending on if it's a papillary carcinoma, you find out whether there are any lymph node metastasis, then you go in for neck dissections, and that can be include central neck dissections also.
Then for metastatic disease, surgical resection or stereotactic body irradiation is favored over systemic therapy, and anti-angiogenic multikinase inhibitors are approved for thyroid cancer that does not respond to radioiodine. It has been seen in 50% of patients that it has responded. The patients who are not responding to radioiodine, targeted therapies are there which are directed at genetic mutations that may give rise to thyroid cancer and are used with patients. I request Dr. Kulranjan sir to facilitate Dr. Nikhil Singh sir for his talk. ले लूँ मैं? ये तुम बहुत ऐसा करे man. Our next talk is on retrosternal goiters, and the talk will be conducted by Dr. Anand Mishra sir. Sir is a renowned breast and endocrine surgeon and is a professor and the head of the Department of Endocrine Surgery at KGMC. तुम लोगों से बहुतों से फर्स्ट इंटरेक्शन होगा मेरा है MBBS में हुआ है किसी से How many of you are MBBS from here 30% around okay so very good morning at the outset my sincere thanks to Dr. Sonkar Dr. Akshay and all the team for giving me this opportunity. So I will be talking on retrosternal goiter. You have just listened the talk on solitary thyroid nodule. Solitary thyroid goiter. Goiter means swelling. Morphologically it can be diffuse, bilateral जैसे grapes में दिखाई. It can be multinodular goiter or unilateral. So retrosternal goiter is one of the goiters which is going into the thorax. So some of the concepts when we operate, how do you investigate those all concepts. I will just give you summary of those concepts in next 20 minutes. So it was first described in 1749. I think we need to know the definition and there are number of definitions. So descends inferior to the thoracic inlet. What is the thoracic inlet? Thoracic inlet in front sternum, clavicle, and behind it is that so that becomes the thoracic inlet. So anything going below thoracic inlet, or some say that it has to be 50%. Mike please. Says more than 50% of this mass has to be below the thoracic inlet, or some say it has to be below for 4 thoracic vertebra. Then different people in their series they have described the definition. So the greatest diameter of intrathoracic component by X-ray is well below the thoracic inlet, lesion up to the aortic arch, lower border up to the T4 vertebra, or more than 50% of those all. Now, what are the trigger factors which takes down this goiter to below? So these are 4 reasons. One is negative effect, negative suction effect, or respiratory dynamics, negative intrathoracic pressure, or it is negative pressure, or it's in addition to the gravitational forces. The goiter goes down because it's a space. Now, on the basis of this development, it can be primary or secondary. Primary, you know, if it is part of the primary goiter, primary thyroid development, from lobes, isthmus, anything, it is primary. Secondary means some
thyroid rest cells are there in the thorax, and if it develops from there, the goiter develops, it becomes secondary, means it is not having any supply from the neck, inferior thyroid veins, superior thyroid veins, or arteries, or all those primary which it is supplied. Then these different classifications you need not to remember, but you should know. Higgins more than 50%, more than 50% in chest, or basis of the grading. Then this is one of the recent classification, Randolph, and more acceptable. So you have anterior mediastinum and you have a posterior mediastinum. Okay? Superior mediastinum is divided into anterior and posterior. Take. If it is coming to the anterior mediastinum, it is type 1. If it is going to the posterior mediastinum, it type 2. And if it is going cross, it becomes A and B, all those things. And 3 is primary in the thorax. And on basis of this, we divide the approach of the surgery. If it is anterior, type 1, you will do surgery, it will be delivered from the cervix, cervical area. And if it is cross going down, then you have to do some additional thing, either sternotomy or thoracotomy, lateral thoracotomy. Same way, this is another classification based on the location, anatomy, and surgical approach. Same way I told you, if it is anterior mediastinum, it is anterior to great vessels, and then you can deliver these goiters from neck. If it is posterior mediastinum, still you can deliver it. But if it is going across the vessels, across the trachea, means right lobe is here, and right lobe, the retrosternal part is going behind trachea, and the retrosternal goiter is sitting behind the trachea on the left side, okay, opposite side. So in that situation, you have to do a sternotomy. Same way, a classification has been given on the basis of the imaging, CT imaging. I will be coming to those all imaging which are included in their management. So on basis of CT imaging, they have described 4 types, and if it is like an apex pointing down, or if it is a pyramidal shape, and then they have tried to define the management. Last column you can see surgical approach. How do you manage these cases? So this is type 1. You can see the trachea, you can see the upper picture of CT scan. Can you see a pointer hai kya? Can you see this? Here you have a trachea, and this goiter is sitting here, one of the vessels here, and while in the cross one, trachea is going here, the goiter is here, and it is going across the trachea. So it becomes type 2, behind the trachea. Now, what is the incidence? Usually we talk of goiter in the neck. So number of series they have given 20, so it varies from 5% to 20%. And if those series I make a total, it is around 14%. So it is a rare retrosternal goiter. Some of the component is common, but if you take the true definition, more than 50%, it is a rare thing. Now, one of the thing, most of it is described that we commonly see this retrosternal goiter on the left side. And why on the left side? So you can understand this thing on the basis of anatomy. What happens? You have anteriorly the arch of aorta is going up, and it is slightly anteriorly placed on the right side, and it goes posteriorly, and posteriorly it goes near the vertebra. So anterior to posterior arch. So you have a space on the left side, anterior mediastinum. So most of time, because of that reason, you see these retrosternal goiter on the left side. Why right side posterior preference? So if it is right side, most commonly it goes behind the trachea, because or arch of aorta or great vessels, because you have a space on the arch behind these on innominate vein and arch. So left side it will be in anterior mediastinum, otherwise it will go cross. Now this venous drainage, a simplified picture you have to understand. You have IVC, the lumbar vessels, and they form above the diaphragm hemiazygos and azygos system. And these hemiazygos and azygos system finally drains into the inferior vena cava. Do you have this pointer? No pointer. Okay. So these two system, hemiazygos system, they communicate with each other.
and they drain into inferior vena cava. Now, if there is a block at this level, so I am trying to tell you about the superior vena cava syndrome. If there is a block at this level, what will happen? This channel will work, and these vessels, so neck vessels will be dilated, this channel will work. Or if block is here at this level, if block is this level, then it is okay, this blood is going down. If block is this level, so blood will not be able to go to the right atrium, so this channel will be dilated, this will be dilated, then lumbar vessels will be dilated, and then you have superior vena cava, all those vessels on the abdomen, on the chest. So that was, I was trying to explain you. If block is below where a azygos system goes, or if goes above. So if it is below, then you have all those vessels, superior vena cava obstructions. Then in these, in retrosternal goiter, you can also see downhill esophageal varices. And because of this, if you have a block at this level, so esophageal varices will be downward. Same way, you have a subclavian steal syndrome. Retrosternal goiter, it is trying to obliterate the this system where subclavian and vertebral system from where there is origin, so there will be steal syndrome. Now, the important physical sign, very important physical sign is Pemberton syndrome, and it has 3 components. You ask your patient to elevate both arms, and it has to touch the sides of the head for 30 seconds to 1 minute, and there are 3 components. If any one of the component is positive, then you say that Pemberton is positive. One is congestion of the face or cyanosis. Second is dilatation of the veins on the neck. And third component is if patient develops respiratory difficulty. So 3 components, you ask your patient to raise the arms, and any of these 3 components are positive. They may be all 3 positive. So same way you can see this patient, and when we ask the patient to raise the arms, dilatation of the veins, and you can also notice slight congestion of the face, although in dark color people you cannot appreciate. It is more appreciable in Western population. Then rate of malignancy, it is very low. It depends, and different series had describes different series. Yes, malignancy can be there. Now, the evaluation, history, age, syndromes, family history, all these has to be taken like what Dr. Nikhil has explained you, and they are important things in the evaluation. Patient can present with respiratory system basically, or esophageal system, vascular system, I told you, basis of superior vena cava syndrome or downhill varices. Patient may have neurological systems. Then metabolic, patient may be euthyroid or hyperthyroid, and very rarely infection. So in different series, it is usually asymptomatic, it can be asymptomatic, but usually these patients present with a neck mass and pressure symptoms, most of the patients. And rarely some patients may have dry cough or stridor. Sometimes these patients have dry cough and stridor, and they are having treatment, and then somebody takes a chest x-ray and then sees swelling in the x-ray. And how do you see these x-rays? I will tell you. So some of the important factors in the thyroid nodules, I am not going into detail. Dr. Nikhil has explained when these patients need evaluation. So if I combine, it is a basically solitary thyroid nodule or multinodular goiter which is going retrosternal. So evaluation is basically of thyroid, which Dr. Nikhil has explained you. It includes history, clinical examination, and then 3 investigations. What 3 investigations? One is biochemical evaluation, thyroid function you do. Then other is you want to see the morphology, so one form of imaging, and basically we ask for high resolution ultrasound. And third thing is pathology. You want to see the pathology, what type of pathology. So it's a 3 test, always and always. And basically we get an FNAC, and it preferably it has to be an ultrasound guided, image guided biopsy. No role of thyroglobin, no role of calcitonin. On Bethesda system, if you have type 2 and type 3 and type 4, then where there is no clarity, AUS or plus or follicular neoplasm, then you can have molecular testing to decide about the surgery. So I am just skipping.
some of these investigations, CT scan. So these patients need to have an X-ray chest, lateral X-ray neck, AP view and lateral view, ultrasound neck, and then CT scan. CT scan is the investigation of choice in most of these patients. Sometimes, rarely, we ask for other imaging, high-end imaging. And basic imaging is chest X-ray, and you can recognize that this patient has a retrosternal swelling. You will see swelling in front just besides the aortic knuckle. You will see, notice the tracheal displacement, compression, it can have calcification, soft tissue masses, and a swelling in the superior mediastinum. Same way CT scan, but important thing in CT scan, how do you, it is a mediastinal isolated mass or it is a retrosternal goiter. For that, you need to see a continuity with the cervical, right? You need to see a continuity, and then you identify those all great vessels. There are certain considerations for cross-sectional imaging. We need to find the suspicious nodule, whether it is unilateral or bilateral, anterior versus posterior, because these all points will come when you are going for surgery or management. And its relation to the trachea, to the great vessels, and then degree of tracheal compression, because that will decide about the patient's intubation and aesthetic considerations. So, people have tried to define the extracervical approach versus sternotomy, and high-risk patients, who are the high-risk patients, who are moderate risk, and who are low risk. So, all these patients you should try to deliver. First approach is cervical approach, and then we try to deliver, and most of the time, 95% times, we are able to deliver these goiters from the cervical approach. But there are certain high-risk features in which, if it is going below the arch of aorta, that becomes very important, because above that there is innominate artery. Innominate kaun si hai? You all know? It is connecting those two subclavians. Innominate ho rahi hai, and then it is forming the superior vena cava. Mediastinal component aa raha hai, very large, or it is like a pyramidal. The upper thing is and lower pyramidal, so you cannot deliver from this inlet. One of the important tests is pulmonary function test, and if any patient has dry cough and has a goiter, this will give you an idea whether it has a retrosternal component. Normally, you have this type of flow loop in exhalation and inhalation, but if it is extra thoracic obstruction, then you have flattened inspiration, and if it is extra thoracic, means intrathoracic below the neck, then you have flattened expiration things. You can find book nuclear medicine, just it can help you about the thing. Now, rationale for surgery, these all patients are candidate for surgery. They have an indication for surgery. It can cause airway obstruction, inaccurate, dangerous for biopsy, and then you cannot record malignancy in these patients. Now, they are basically surgery is same. How do you do it? Multinodular goiter, but quick. And it is, if you see cervical delivery, it is basically you don't pull it, it is pushing from the finger. You sweep your finger and deliver the retrosternal thing. I'm not going to show you video because time is. In some cases, you need sternotomy, purely intrathoracic goiter, patient has superior vena cava syndrome, or there is suspicion of carcinoma or lymph node involvement, retrotracheal isolated intrathoracic goiter. In these cases, you need to sternotomy case. So, I will just show you. So, that was my finger, and there is below you can see the retrosternal part. You put your finger, you take care of the superior pole and put your finger and then deliver, because otherwise you will damage the recurrent lesion nerve. This is another case, and in most of the cases you can just appreciate the groove above of the inlet in these patients. So, it is isolated on one side, retrosternal goiter, and sometime you can do these things with the partial sternotomy. I finished my time? Okay. So, I will finish with one case. This lady was a 38-year-old female resident housewife, neck swelling 3 years, and then
dull aching, mild intensity, non-progressive pain of the neck. She was seen with multiple doctors in 2009, investigated by multiple doctors. Just taking you a representative case, these all investigation on different dates, thyroid function test, and then you can just see different papers. Patient has been investigated at Sanjay Gandhi. You have investigation of colloid nodule there. Then at a private institute, adenomatous goiter. Then in 2009, you have this high resolution ultrasound. Then patient finally came to us in 2011, and we also investigated at ERA. Patient had dry cough and those all problems, and then we examined the patient. We thought it is a multinodular goiter, and swelling was moving with deglutition. Pemberton was negative in this patient. We investigated ultrasound. FNAC was benign goiter. And what happened during the operation theatre? So that is the right lobe. You can see asthmus black thing, and right side you can see the lobe, and then there was a little attachment, and then a mediastinal part, a superior mediastinal part, retrosternal part, which is you can see. When you are working on the lower pole, then you notice there is something attached to this. This was thing, right lobe, isthmus, left lobe, and then retrosternal part, and then that was the trick. We were able to dip. We didn't had any CT scan. All those information we were able to. This was the post-op picture, and this was the specimen. Now, can somebody tell me what has gone wrong? We were there in the operation theatre. What has gone wrong in this patient? We were not able to identify the retrosternal part. Can somebody point out? So if you see, it is very small attachment. When we are doing the examination, one thing, there were multiple investigation, ultrasound, and those. So we maybe myself and my team was carried away that this patient has a multinodular goiter, and then we were able to feel this border. So we thought it is not retrosternal, and we missed this thing, and also patient didn't had retrosternal, this Pemberton positive. So sometimes this can happen. So just take home points. It is an indication, retrosternal goiter is an indication for surgery even in asymptomatic patients, and preoperative investigations usually we say high resolution ultrasound, but in retrosternal goiter it should include CT scan, contrast enhanced CT scan. And then most of these majority of this substernal goiter you can deliver through the cervical route. So with this, my sincere thanks to everybody. Thank you, sir, for your very elucidative talk. May I please request Dr. Avnish Kumar sir to facilitate, sir. मेरा पेन ड्राइव दे देना. Thank you. फोटो लो भाई अच्छे से. Our next talk is a video lecture on safe thyroidectomy, and this will be conducted by Dr. Kulranjan sir. He is a professor of the junior grade in the Department of Endocrine Surgery. He's actively involved in research and teaching, a published author, and a renowned mentor as well. गुड मॉर्निंग. होपफुली सभी उठ गए, नहीं तो मैं उठा दूंगा. इट विल हैव लिटिल ऑफ थियोरी, फिलोसफिकल ज़्यादा होगी. आनंद सर हमेशा बोलते रहते हैं कि तुम फिलोसफी पे ज़्यादा बोलने लगते हो, बट आई टेक लाइफ इन सच ए वे, इफ़ यू गिव अ मैन अ फिश ही विल ईट फॉर अ डे, बट इफ़ यू टीच हिम हाउ टू फिश ही विल नेवर बी हंग्री ऑल हिज लाइफ. सो टॉपिक टुडे इज सेफ थायरॉइडेक्टमी. सेफ का मतलब क्या होता है? कोई भी, एनीबडी? सेफ, व्हाट इज सेफ? So you do not do any injury or harm. So I'll start the presentation by the greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge, and most of us
remain in this phase for a long time. But what is even more dangerous is superficial knowledge is potentially more dangerous than ignorance. It gives a false sense of security, encouraging an ignorant man to persevere in his efforts that can result in huge damage. And this is what exactly happens in our surgical careers. So when we see this, when there is a relationship between confidence, knowledge and skills, and all of us go through this diagram. So probably at the level of MS, we are just reaching the peak of Mount Stupid. By the time we finish our super speciality, we start climbing down, and then we enter in valley of despair, where we encounter all the complications, and then we realize actually how little we know or how less skilled we are. And gradually, wisdom sets in. So I can say that after almost 12 to 13 years of becoming a faculty, I am just beginning to cross my valley of despair, and it is here that actually the mentors help us. Our heads and seniors to us, they will be there to guide us what we should do, what we should not do, and things like that. And when we look at learning curve per se, beginner's luck is always there. When we do a first or second procedure, it will always go perfect. But as time increases, you always tend to go wrong. You become overconfident, you try to take shortcuts, and it's here where we make mistakes. And then with time, as wisdom sets in, then again our complication rates reduce and we do better surgeries. And this is again, it's very important. This philosophy हमारे day to day जीवन में भी आता है. For exams, if there is a little amount of stress, we always perform better. लेकिन जब वही stress ज़्यादा हो जाता है, then increasing fear, anger, and our performance goes down. So this will individually happen in any surgery, and it will happen in our career per se. So with these things, I would like to get the real meaning of safe. What does safe mean? It does not mean only protected from or not exposed to danger or risk, but it is also based on good reasons or evidence and not likely to be proved wrong. So there can be no alternative to the word safe. And whenever we have a procedure, most of the conferences will say safe cholecystectomy, safe hernia surgery, safe thyroidectomy. So safe is a very wholesome word, and it is not just avoidance of complications or dangers to the patient. If we look at thyroid surgery per se, the potential complications are many, and this particular slide I have used for over the last 10 to 12 years, and there is not one complication which I have not done or which I have not seen in the department. But to be surprised, even day first today we received a patient case of Graves' disease operated by a high volume thyroid surgeon in 21 or 22 who has presented with watery fluid leaking from somewhere in the neck, and every day 2 or 3 gauze or so. She has undergone repeated surgeries, repeated investigations, and we also kind of confused. So you will never reach an stage where you can be 100% sure, you cannot ensure 100% guarantee to avoid any complications. So safety of thyroidectomy would actually be determined by many factors. It could be pre-operative patient factors, intraoperative scenarios, or how we behave during the surgeries, and post-operative care of the patient. So it's not just doing a safe procedure, but how you approach a patient and how you care for the patient later on. And of course patient related and surgeon or facility related. So I'll just switch to the video, and then I'll again come back to a few slides. So this is a 10-minute video which I'll just run. So needless to say, thyroidectomy is usually performed under general anesthesia, but it can be performed under cervical anesthesia or even a local anesthesia. And I have just shown these adjuncts are there as to just show that to make surgery safe, a lot many adjuncts are there, as in this case neuromonitoring can be seen. But are these things really necessary in all cases? We will discuss that later. And the first thing, the position of the patient is in the neck is a little hyperextended around 15 degrees,
and the head end should be little elevated so that venous congestion is reduced. You make markings, both the sternocleidomastoids, the midline, and one of the skin creases are better utilized for the incision, if not 2 finger breadths above the suprasternal notch or 2 finger breadths below the cricoid cartilage, that is likely to give the best exposure. Then this is just again to show that we are using an adjunct. Energy sources make our job a lot easier. This is an energy device. After instilling local in the line of incision, you can realize that once we use adrenaline solution, again the bleeding is almost negligible. And then we go right, cut through the platysma, and once the platysma is cut, both the flaps would actually retract. And then what would happen is you need an adequate incision. What I mean by adequate, nothing is small or big. It should be adequate for your convenience, whether it is short necked and so for the goiter size. Then you raise the superior flap. This you raise till the upper order of the swelling, or you go at least till the head, and it's an avascular plane. Then inferiorly again you go till the suprasternal notch. Now we are mobilizing the sternocleidomastoids. You need not necessarily do this, but this gives us more space to operate within the neck. So that's done on the left side. You take that right till you see the IJV. So a known enemy is better than an unknown friend. So you're likely to encounter major bleeding from these vessels. If you keep them under vision, you're likely to have lesser complications. The same thing is being done on the left side. So again we can see the IJV. So we go till light laterally. Now usually we always, not always, we can always, at least we prefer to operate on the larger side first. So again go to the midline. This is better appreciated inferiorly and superiorly. Once again this is an avascular area. If we remain in the center, it is between both the right and left strap muscles. So inferiorly and superiorly again these vessels cross over, we need to be careful over there. So you are likely to encounter bleeding superiorly and inferiorly where these vessels cross over. Then how do we address the straps? These can be retracted or they can be cut, or one can be retracted and the inner one may be cut. So here we are retracting the strap muscles. So the upper layer is the sternohyoid and then inner layer is the sternothyroid. So now we have gotten hold of the sternothyroid. What's important is thyroid has a true capsule and a false capsule. So true capsule is dense condensation of the peripheral thyroid tissue, and your false capsule is slightly less adherent and it is formed by the pretracheal fascia. So in the anterior aspect of the gland you did not go right till the true fascia, but laterally what we, which better explained with the help of some slides. So we are doing this again on the right side. In this particular patient, the right side the nodule was larger. So what you should appreciate is till now we have been using only monopolar quarterly and bipolar, and the field has been more or less bloodless. अगर इससे कम bleeding होगी तो you can ask your anesthetist whether the patient is alive or not. So this minimal amount of bleeding is always expected. So again once we reach the lateral side, the thyroid is retracted medially. Once again after a certain stage too much of medial retraction should not be done. That can cause damage to the recurrent laryngeal nerve, which I will show with the help of some slides. So here individual vessels are ligated close to the thyroid. Now we have come to the superior pole. So here you have an Joll's triangle. There are various named triangles with respect to thyroid surgery, which I will again explain with the help of some slides. So once we have done laterally, once we see the nerve that somewhere here, the medial parathyroid will be anterior, inferior parathyroid will be anteromedial, superior parathyroid will be posterolateral. The superior parathyroids are more constant in position. So again this particular, here they are utilizing intraoperative neuromonitoring, where you can confirm that whether it is a nerve that you are encountering. So now we are working in the at the superior pole.
Here the neuromonitoring can be made use of for looking for the external branch of superior laryngeal nerve also. Again this relationship can be tricky, and this is an avascular area if it is done well, and then with the help of energy devices or by conventional tie and cut, we take care of individual vessels. Here the artery is usually more medial than the vein, and the superior pole is taken care of, and we should be a little careful in this area. The parathyroids will be just below the superior pole, posterolateral to the nerve. So we should be delicate in this area. Once again you can utilize either indocyanin green or even autofluorescence of the parathyroid to localize the parathyroid or prove that they are parathyroids. However, visual identification is the best possible thing to identify both the nerve and the parathyroids. So these are just adjuncts to make things safer, but these are not mandatory. So now we are again dissecting laterally. So again with the help of bipolar and monopolar cautery, we do capsular dissection. So here if we go between the true capsule and the false capsule, and at the junction of medial 2/3 and lateral 1/3, push down the capsule so that both your parathyroids and recurrent laryngeal nerves are safe. So once we do capsular dissection or learn the technique of capsular dissection, the likelihood of causing hypoparathyroidism and nerve damage is greatly reduced. The nerve is inserted near the Berry's ligament. Berry's ligament is nothing but it is the condensation of the posterior fascia or the false capsule over there. Again the relationship of the recurrent laryngeal nerve and the Berry's ligament should be kept in mind. In 75% to travel anterior, however in 25 it can be posterior, and both these situations should be handled in a different way, which I will explain a little later. So now we are taking care of the Berry's ligament. This again, this is the nerve. So here the nerve is anterior to the Berry's ligament. How do you identify the nerves? You can use the Zucker candle, or you can use your parathyroids, or you can use the various triangles that have been described to localize your nerve. So once you cut the Berry's ligament, it gives away. It is, and it's not an avascular structure, and it is not known as Berry's ligament. This is known as an anatomical complex of Berry's, where there is a ligament and also there are vessels. So now we are going to do the same thing on the left side. We are retracting the sternothyroid. We can cut this at the insertion. This will give us more space for operating. Again it would depend on our comfort, size of the goiter, and the available operating space within the neck. So the left nerve is a little oblique, the right is very much in the paratracheal position. Here once again you can utilize a neuromonitoring. We don't routinely use it, but this is just for teaching purpose. Now we are taking care of the superior pole. Again if you notice, we have not used any tie till now. So modern energy devices can make our job a lot more easier. The parathyroids are identified. Once again the position of the superior parathyroid is very constant, but the inferior parathyroid can vary in its location to a large extent, and how the thymus can be utilized to look for missing parathyroids I will show in some slides. So here once again we are doing lateral dissection just now. This was a smaller, so nerve has come into view, that can be pushed laterally. Here once again it was anterior to the Berry's ligament. Once again what is said is ki the anatomy on the right side will be similar to that on the left, but that may not hold true for both the parathyroids and the recurrent laryngeal nerve. What I mean by that is recurrent laryngeal nerve may be anterior to Berry's ligament on one side, however posterior to the Berry's ligament on the opposite side, and they should be tackled differently. So again a monopolar can be used to get the thyroid off the trachea, and what is important is always remove the pyramidal lobe. This is the commonest reason for recurrence of a thyroid nodule after performing an apparently good total thyroidectomy. So pyramidal lobe, ectopic thyroid rest, these are tissues which can cause recurrence. Once you get the specimen outside, always look whether inadvertently you have gotten a parathyroid out. In case there are any tissue on the lobe, you should always auto transplant it.
Then again you identify all your nerves, it will give you a good night's sleep. Then perform an Valsalva's maneuver. This should reduce the chances of post-operative bleed. Drains don't always drain, but it can always help us have a peaceful night. There is no harm in putting a drain and removing it the very next day, and it does reduce the edema. Again, subcuticular sutures can be used, and smaller incisions with a lot of retraction can actually give rise to poorer scar. So adequate incision, and there should not be any tension while retracting the wound. So I will just take 2 minutes to take you through a few more slides. So this is just to explain capsular dissection. So if we have a true thyroid capsule, this inner layer, and a false capsule. So once if we retract this medially and we go through this capsular dissection, I said medial 2/3 and lateral 1/3, then what will happen is, this is the recurrent laryngeal nerve and the parathyroid. So both the recurrent laryngeal nerve and the parathyroids can be dropped off medially. So capsular dissection is something which should be routinely performed. However, the disadvantage of capsular dissection is that occasionally you may leave behind thyroid tissue near the ligament of Berry. So occasionally we may have to change the strategy. I will show that again. So this is nothing but once you have retracted the thyroid medially, medial 2/3 and lateral 1/3, you go between the true capsule and the false capsule. Once we drop the capsule with this, you will notice that both the parathyroids and the recurrent laryngeal nerve will be pushed down, and your sinister complications of hyperparathyroidism and recurrent laryngeal nerve may be avoided. So how do you identify the recurrent laryngeal nerve and parathyroid? It is in relationship to the inferior thyroid artery, tubercle of Zuckerkandl, ligament of Berry and cricothyroid, and ligament of Berry happens to be the most standard place where the nerve will always enter the cricothyroid. But what is important is, even after we have visualized the nerve, majority of all the injuries to the recurrent laryngeal nerve will happen near the ligament of Berry, and a simple act of retracting the thyroid with a lot of force medially can actually cause traction to the nerve and bring about voice changes. Parathyroids and recurrent laryngeal nerve. So once we see any of the parathyroids, we can always anticipate the recurrent laryngeal nerve. Once we see the recurrent laryngeal nerve, we can always predict the location of the parathyroids. If you have in Zuckerkandl, the nerve usually travels posterior-medial to the tubercle of Zuckerkandl in most of the scenarios. So all these things are interrelated. So there are various named spaces within the thyroid surgery. Some of them may be actually just सबने अपना नाम डालने के लिए थोड़ा सा चेंज करके बाउंड्री अपना एक नाम दिया. So if we look Beer's triangle, here the carotid, and then we have the recurrent laryngeal nerve and the inferior thyroid artery, where recurrent laryngeal nerve forms the medial border. So Simon को भी थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ, उसने बस recurrent laryngeal nerve को बोल दिया esophagus, और recurrent laryngeal nerve becomes the content of this triangle. However, the easiest what we normally do is the triangle of recurrent laryngeal nerve. So you have a thoracic inlet, carotid, trachea. Here the nerve will come as a single branch. The more distally we locate for the nerve, there may be multiple branches, and we may actually cut 1 or 2 branches. And inferior thyroid artery is a constant position. In majority of the cases, the recurrent laryngeal nerve would traverse posterior to the inferior thyroid artery, in some anterior, and even in few 20% it may be through the branches. But once we have seen, and the inferior parathyroid is anteromedial to the nerve, and this superior parathyroid in its natural location is actually posterolateral. So once we have seen the inferior thyroid artery or the recurrent laryngeal nerve or a tubercle of Zuckerkandl, the recurrent laryngeal nerve is posterolateral to the tubercle of Zuckerkandl. So majority of patients would actually have a tubercle of Zuckerkandl. We can get out these relationships. And Joel's triangle is nothing but is just for the external branch of the superior laryngeal nerve. Here you have the midline,
and then you will actually have a superior pole of the thyroid, and external branch of superior laryngeal nerve would be there. You don't routinely look for the external branch of superior laryngeal nerve, but always try to preserve it. Cernia classification, I will not go into that. This is to show the relationship of the ITA. This is just to show this is the point of entry of the recurrent laryngeal nerve. By traction injury, most of the recurrent laryngeal nerve palsies are caused due to damage to the recurrent laryngeal nerve in this area, and point 2 is nothing but it is the level of the inferior thyroid artery. So this is actually what happens. This ligament or nerve would go anterior or posterior to the ligament of berry before it inserts into the cricothyroid. So too vigorous a retraction of the gland medially can cause traction injuries. So this is a diagrammatic representation. This is typically what is happening in a case also. Too vigorous a retraction, here the nerve is getting pulled up. So, and visually intact nerve actually may not function well. Once again, here if you see, here the recurrent laryngeal nerve is anterior. So here you can cut medially with an energy source or what. But here if you have to go by conventional dissection where the nerve is posterior to the Berry's ligament, you leave behind some thyroid tissue over here. So in a typical benign case it will not make a difference, but in a malignant case it will always show up on your thyroid scan and patient will have to undergo radioactive iodine. So there is a concept of capsular dissection which I said earlier, and then dissection along the recurrent laryngeal nerve. So when we dissect along the capsular plane, we are likely to save both the parathyroids and the recurrent laryngeal nerve, but what happens is we will always leave about some tissue, thyroid tissue near the ligament of Berry's. So what can be done is you can see the recurrent laryngeal nerve and then dissect medial to it and get the thyroid out. But what will happen here, if you notice, you may devascularize the parathyroid. So depending upon whether you are operating about benign cases or malignant cases, you can change about alter your strategies. But what will happen again, if your recurrent laryngeal nerve is medial to a ligament of Berry, here occasionally instead of going lateral to medial, you cut the isthmus, rotate it laterally, and you will be able to get out more thyroid tissue than before. So just one more slide. So if you see this is a typical relationship. So this is the thyroid lobe, this is the tubercle of Zuckerkandl, this is the nerve going. So if this was in its neutral position, the nerve would have been just behind the tubercle of Zuckerkandl. So tubercle of Zuckerkandl may be absent of grade 0 or 1 in 20% of the population, less than 1 centimeter within another 30 to 40, but in almost half the population you will have a tubercle of Zuckerkandl around a centimeter or more. And then once you see the nerve, you can look for the inferior parathyroids anteromedially, posterior parathyroids posterolaterally. So one relationship along with the ITA, you may be able to see all the structures. So should one look for all parathyroids? The answer is definitely no. Superior ones are more constant, look for them, preserve them. Inferior, if you see them, well and good. But again, this is a recent publication which came out in 2025, of course in January. Here we normally don't look for parathyroids, but what we should understand, the inferior parathyroids and the thymus have a common embryological origin. So the inferior can travel down with the parathyroids and it can be located very well within the substance of the thymus. So if this is the inferior pole of the thyroid and this is the thymus. So if inferior parathyroid is not visible in this area, you should always look for it in the tail of the thymus. So here if you dissect the thymus and just pull it out, you may be able to see parathyroids over here. So what we conventionally do is if we are not able to see the inferior parathyroids, more so in a benign case, we don't go looking for it to cause more and more hypoparathyroidism. However, in malignant cases where you have to perform central compartment lymph node dissection, preserving this parathyroid may be very difficult. So always auto transplant this parathyroids in your sternocleidomastoid or whatsoever. So energy devices, adjuncts, you can use them. Identification of parathyroids for identifying parathyroids or for predicting hypoparathyroidism. So we have used fluorescent dye in the department, we have used ICG dye, autofluorescence we still don't have them. So specific wavelength can actually make the parathyroids light up without injecting any dye. So those systems also available in the market. Then you can use the AST LDH ratio in the parathyroid tissue extract to prove that it is parathyroids. Then to see that whether you have caused hypoparathyroidism,
to promote early discharge, you can use post thyroidectomy PTH or PTH gradient. So these things may make our surgery and patient care a lot more safe. Then identification of recurrent laryngeal nerve and external branch of superior laryngeal nerve, intraoperative neuromonitoring. Again, across all meta-analysis, this is not something which will actually improve your rates better. There are specific indications like reoperative surgery where this may be of help, but visual identification of the nerve is the gold standard and should remain so long. Of late you will see some publications where they spray methylene blue, here the parathyroid, thyroid lobe and the recurrent laryngeal nerve can die. So just a word for this adjuncts in thyroid surgery. So this is nothing but a Gartner cycle where lot many things will come into the market and everyone will run behind them. This can hold true for your endoscopic surgery or even your robotic surgeries. But will they stand the test of time? Will they stand the requirement of the society? So this always, there is an increased hype for demand. Ultimately the demand reduces and then it would plateau down. So this is exactly what we are seeing in 2024, all the technologies. So if you see, the entire world is talking about generative artificial intelligence. India में अब हम लोग बात करना शुरू किए, but actually it's already in the decline. So for all surgeries or for everything, they are usually 10 to 15 years behind the West. Or if you look at this typical, this was published in 2022. हम इंडिया में अभी सारे स्मार्ट वॉचेज या फिर हम लोग अपने health gadgets use कर रहे हैं, but this is already on the decline and it will become a plateau. So any technology that comes into the market will always climb up, then go down and plateau. So these adjuncts and newer modalities like endoscopic thyroid surgery or even robotic may actually move. So ethics and malpractice in thyroid surgery, I'll just leave that. Then gesture, various gestures can have various meanings. My question to you, what does safe mean in non-formal US English? If anybody can answer that, immediately they get a chocolate. Anybody? What does safe mean in non-formal US English? लगता है लोग अपने रास्ते से भटक गए. Anyway, reading can make you a better physician. There are various blogs where why doctors need to read a lot of fiction and non-fiction. It will always make you a better physician. Just Google this. If you require any of these books, you can borrow them from me, not take them from me. So these are just a few examples for them which you need to and improve. Thank you. Thank you sir, for your very illustrative and I must say introspective talk as well. May I please request Dr. Surendra Kumar sir to facilitate sir for his talk. Talk is on radionuclides in thyroid disease, and this is being conducted by Dr. Prakash Singh sir. Sir is from the Department of Nuclear Medicine in KGMU Lucknow. He's done his specialization from SGPGI and he has multiple publications in peer-reviewed journals. Okay. Good morning, everyone. After discussion about surgical approach to
it was found there is no statistically significant difference between the success rate of two methods at 3 months. Further, there was another paper by the Indian group that was in AIMS. It was found that is there any need for adjusting iodine 131 activity for the treatment of high turnover Graves patient. High turnover Graves patient means if you have calculated they have a 2-hour uptake is very high as compared to 24-hour uptake. So it was found that in the high turnover Graves disease patient, if administered iodine 131, the outcome will be always poor. So to improve the success rate, the iodine 131 activity should always be increased by 1.5 to 2 times in the high turnover patient. Further, since we are going to augment iodine 131, there are a lot of factors that should be taken into consideration, like antithyroid drug should be stopped for 2 to 5 days, beta blocker can be used before and after radiotherapy, radioiodine therapy, sorry. Pregnancy must be avoided for 4 months after radioiodine therapy, breastfeeding must have been discontinued for at least 6 weeks, and in Graves ophthalmopathy, radioiodine should not be administered. A lot of questions always comes to us that what about the children, whether the radioiodine should be administered to the children. The radioiodine therapy is absolutely contraindicated in children less than or equal to 5 years of age. It may be useful as the first line greater than 10 years of age regardless of the gender. However, it should be delayed as possible as between 5 and 10 years of age. There have been some papers and publications about the theoretical risk of malignancy, but the observational studies have found no evidence of increased risk of malignancy or fertility problem after almost 40 years of clinical follow-up. Now, from benign we should move to metastatic or malignant etiology. This is one 2022 WHO classification of thyroid tumor. Here we have not included mixed medullary and follicular cell derived salivary gland type cancer. Mostly the radioiodine is mainly used in differentiated thyroid cancer only. So the patient has undergone surgery, completion thyroidectomy or hemithyroidectomy. We always do the risk stratification. Risk stratification as low risk, intermediate risk and high risk. And high risk we see if the HP is a history of gross extrathyroidal extension, there is incomplete tumor resection, or there are distant metastasis, or post-operative serum thyroglobulin is suggestive of distant metastasis. Further, like follicular thyroid cancer with extensive vascular invasion. So what we do after risk stratification? We first do the diagnostic scan, that is we administered 2 millicurie of iodine 131 orally to the patient, and we do the scan after 24 to 48 hours. Here we can see that there is a significant uptake in the thyroid gland, while in the stomach and in the intestine this is physiological route of excretion. So for this scan, to facilitate iodine uptake, the TSH stimulated level should be greater than 30 international unit per liter, because various studies have found that this level of hypothyroidism correlates well with the radioiodine uptake in the patient. So what we do, we ask for the levothyroxine withdrawal for 4 to 6 weeks or recombinant TSH injection. If the patient is like having some brain metastasis or having some spine problem, we cannot make the patient hypothyroid. So what we do with the recombinant TSH injection. After that we measure stimulated thyroglobulin and antithyroglobulin levels, and the proper history should be taken, like there should be no interfering medication, there should be no recent IV contrast study, and if possible the patient is advised to undergo low iodine diet 1 to 2 weeks prior to the therapy. So these are the 5 main patterns that we normally encounter on the whole body iodine scan post surgery. Here in the first scan we can see that there is no uptake, that is perfectly surgically ablated thyroid cancer. In the second we can see that there is a faint tracer uptake in the operative bed, that is we will call it minimal remnant. There is intense uptake in this third picture, that is significant remnant is there. Here in the fourth picture we can see that there are significant uptake along with the few other foci also, that is there is a residual thyroid tissue along with the lymph nodes. In the fifth image we can see that there is a typical starburst like pattern along with the other foci in the lungs and in the stomach and the liver. So this is a distant metastasis. So these are the 5 patterns that we will see, and after that we will plan for the surgery
radioiodine. So in after this scan, we do the categorization as the patient needs remnant ablation, or patient needs adjuvant therapy, or the patient needs treatment of known disease if there is a lymph node metastasis, if there is lung metastasis, or if there is a bone or some other metastasis. There are two schools of thought whether to give empirical or with a dosimetry. Since dosimetry is some cumbersome, the empirical is always backed by strong evidence. So it's like for the lymph node we give around 50 to 100 millicurie. For lung metastasis we give 150 millicurie, and for bone and the other malignancies we give 200 millicurie to the patient. So now we will proceed with how the radioiodine therapy in different scenarios. Like this is one patient. Here we can see there is no significant iodine uptake in the operative bed, and this is a low risk patient after the surgery HPE. And in the other slide we can see that there is an intense uptake, but in both the cases TG is 2 and the other in the other case the TG is 1. So in this low risk population, radioiodine offers no advantage, and radioiodine should not be given to any low risk patients. And this is backed by some research also, where it has been found that radioiodine remnant ablation in low risk head is an over treatment. Further, one study published in by Indian subgroup in the AIMS, it found that in low risk differentiated thyroid cancer post total thyroidectomy, RIA ablation does not confer significant survival advantage over no radioiodine follow up. Another study published in New England Journal of Medicine found that with thyroidectomy in patient with low risk thyroid cancer undergoing thyroidectomy, follow up strategy that did not involve the use of radioiodine was non inferior to an ablation strategy with radioiodine regarding the occurrence of functional, structural and biological events. So the first thing that is very much clear is that in low risk differentiated thyroid cancer, radioiodine ablation has no role. In the second scenario, this is a 25-year-old male post total thyroidectomy with central compartment neck dissection. Post op HPE was suggestive of papillary thyroid cancer with vascular invasion. 3 out of 11 lymph nodes were positive for metastasis. The patient underwent routine whole body iodine scan. There was a tracer uptake in the operative bed. So patient was administered with 30 millicurie iodine 131 remnant ablation. There was uptake, and after 6 months follow up, the patient has showed excellent response. There is all the disease has resolved. So our target for remnant ablation is to destroy presumably normal residual thyroid tissue. There are some other objectives also, like it helps in follow up with serum thyroglobulin level. It also increases the sensitivity of detection of locoregional and metastatic disease. It also maximizes therapeutic effect of any subsequent iodine 131 treatment. And with this high dose therapy, it also confer additional sites of disease that were not identified on pre-ablation scans. So in further, we have seen low risk, we have seen intermediate risk. In third case, we are going to see that there is a large remnant present along with the lymph nodes metastasis. These are the images of SPECT CT after the gamma camera scan. Patient was administered with 100 millicurie iodine 131, and the post therapy scan showed significant uptake in the operative bed along with the lymph node involvement. After follow up on like we always do follow up on 6 monthly. In the further follow up, the patient, we can see that there is no disease in the operative bed, no any lymph node involvement, and the serum TG level is also 0.8, which was previously 44.1 nanogram per ml. So in another scenario, we are here seeing the 50-year-old female patient post total thyroidectomy, post op HPE was suggestive of follicular variant papillary thyroid cancer with lymphovascular invasion. Here we can see there was a significant uptake in the operative bed along with the lung metastasis, and the serum TG was 117 nanogram per ml. Patient was administered with 150 millicurie radioiodine, and the post therapy scan revealed remnant along with the lymph nodes. However, on further follow up and the further therapy, we can see that patient TG dropped to 1.2 from 117, and there was no uptake in the operative bed nor in the lung metastasis. Another scenario, here we can see there was 32-year-old female post total thyroidectomy, and the patient underwent selective nodal dissection. Post op was suggestive of follicular thyroid cancer with
extensive vascular invasion. So the patient's TG was 2071 in the initial index scan and the anti-TG was negative. However, the patient was having severe skeletal metastasis along with operative bed along with lymph node involvement, and the patient underwent radioiodine therapy, and after, I think it's too early. Okay. So the patient underwent radioiodine therapy and the patient TSH was 105, however TG from 2071 dropped to 567 and there was a faint uptake in the operative bed and along with the skeletal uptake. So the patient is undergoing treatment continuously. So how we categorize the patient, that a patient has responded to the treatment, how we give the categorization to the patient. So there is this classification that the patient, if in order to have an excellent response, there should be negative imaging, there should be no uptake in the whole body radioiodine scan, the TSH suppressed should be less than 0.2, TSH stimulated should be less than 1 and the anti-TG should be negative. However, for indeterminate there should be non-specific imaging, for TSH it should be greater than 2 but less than 1, or for the stimulated TSH it should be greater than 1 but less than 10, and the anti-TG can be stable or can be in the declining trend. This is one very interesting thing that obviously completion thyroidectomy and the hemithyroidectomy is the standard treatment option, but radioactive iodine lobar ablation of the contralateral lobe is recommended as a safe and very alternative to the completion thyroidectomy, the patient with differentiated thyroid cancer, because this is non-invasive and then offers an effective alternate to the completion thyroidectomy, because most of the patients do not want to undergo completion thyroidectomy. It's always asked that if you are giving radioiodine, if it's a radioactive, what are the side effects associated with it? Yes, there are some side effects, but all these side effects are managed conservatively. Like there can be swelling of salivary gland, there can be swelling of thyroid remnant, there can be gastritis, there can be thrombocytopenia or leukopenia. All can be managed with a conservative management only. There are no as such major side effect or major synchronous malignancies associated with this radioiodine therapy. So there can be one scenario where we have treated the patients, but in further follow up we see that patient's TG is rising, but on whole body radioiodine scan it's negative. So we call these patient as iodine refractory disease patient or tennis patient, that's it, thyroglobulin elevated negative iodine scan patients. These always carry a poor prognosis and there are multiple treatment options available according to that whether the disease is localized or whether there are distant metastases. So like therapy, surgery can be done, ERBT can be done, embolization or TKI therapy can be given to these patients. So what nuclear medicine can offer to these patients, that if the lesions on the radioiodine scan are accumulating SSTR or PSMA expression, they can be offered lutetium SSTR or lutetium PSMA therapy, GT and FAPI on the block, and offer a very interesting approach to treat these patients. Further, this is one study, even though it has not shown promising results, but this was about 5 patients and 1 patient showed partial response, 1 showed stable disease and the 3 showed disease progression, but it's too early days, and like a lot of research is going on, a lot of treatment options are coming up. So further, the most important and the most happening thing on the nuclear medicine is the FAPI, that diagnostics, we are treating radioiodine refractory differentiated thyroid cancer, and it also opens up new avenue for the treatment of aggressive radioiodine refractory patient, as these are carry a very poor prognosis patient. So with this I would like to conclude and offer that with so much recent advances in nuclear medicine, the use of radionuclide therapy is going to be a very precision based and offer very safe, effective and free of complication. Thank you very much. Thank you, sir, for your extensive talk. May I request Dr. Kushwaha?
Our next talk is on hyperparathyroidism and multiple endocrine neoplasia syndromes. This will be conducted by Dr. Kushagra Gaurav sir. Sir is an associate professor in the Department of General Surgery in KGMU. बीच में लाइट खुल जाती है तो आंखें खुल जाती है ना, बहुत ज़्यादा थायराइड हो गया. अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर लेते हैं. ओके, हाँ ऑन है, आवाज़ आ रही है, ठीक. तो अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर लेते हैं. थायराइड बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, बिनाइन थायराइड पढ़ लिया, रेडियोआयोडाइन एब्लेशन पढ़ लिया, हाइपरपैराथायरॉइडिज्म उससे ज़्यादा पढ़ेंगे. तो it is more of practical for MBBS students but more of practical aspect for our PG students. So I presume जो यहाँ नहीं है वो वैलेंटाइन वीक मना रहा है. Rajat is not here. Aryan is sitting here. Okay, हमारी टीम है, चलो गुड. हमारी टीम ज़्यादा स्टूडियस है मंडे वाली, गुड. चलो jokes apart. We all know that we have 4 parathyroid glands in our neck, 2 pairs of parathyroid glands, one pair of superior parathyroid gland and 1 pair of inferior parathyroid gland. The pairs are usually 2. I am saying usually 2. What does that mean? That means कि हमारे नेक में केवल 4 usually parathyroid gland, सुपरन्यूमरी ग्लैंड, यानी 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे. तो ये जो एडिशनल ग्लैंड्स है इनको हम लोग सुपरन्यूमरी पैराथायरॉइड ग्लैंड बोलते हैं. एंड पता है ऑब्वियसली these secrete hormone PTH that is responsible for the calcium and phosphorus metabolism. These glands were discovered by a very famous anatomist Sir Richard Owen in the Great Indian Rhinoceros. ये बहुत फेमस पेंटिंग है, ये एक लंदन जू की पेंटिंग है, एंड दिस इज अ इंडियन राइनोसरस. द पैराथायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड इन इंडियन राइनोसरस इन अ लंदन जू. तो एमसीक्यू के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी इंडियन राइनोसरस की बात कोई कर रहा है एमसीक्यू में या लंदन जू की बात कर रहा है तो मान के चलो पैराथायरॉइड ही कर रहा होगा. सो दिस इंडियन राइनोसरस वाज प्लेस्ड एडजेसेंट zoo. They had a fight. The Indian rhinoceros died, and the anatomist Sir Richard Owen did the forensic thing, the neck dissection, और उसमें they discovered the gland, and that was labeled later on. Embryologically, the glands are derived from 3rd and 4th pharyngeal pouch. The superior gland, that is more anatomical and more utopic and more fixed in position, that is derived from which pouch? 4th. Very good. 4th endodermal pouch. And the inferior gland is derived from 3rd endodermal pouch. The inferior gland derived from a superior pouch and it traverses down. ऊपर से नीचे ट्रैवल करती है. इसी पाउच में थाइमस एंड थायरोथार्मिक लिगामेंट भी डेवलप होता है. तो ऑब्वियसली पूरा ट्रैक्ट ये आता है यहाँ पर. सुपीरियर ग्लैंड यहीं की यहीं डेवलप हो जाती है, तो इसलिए इस पोजीशन फिक्स होती है. इंफीरियर ग्लैंड क्योंकि यहाँ से यहाँ करती है, इस लोकेशन में कहीं पे भी हो सकती है. वो थायरोथार्मिक लिगामेंट में हो सकती है, वो थायराइड के अंदर भी हो सकती है, वो थाइमस के अंदर भी. वो ट्रैवर्स करते करते जहां उसका मन बैठेगा. दैट इज व्हाई कुलन सर ने भी बताया कि सुपीरियर ग्लैंड फिक्स होती है. सुपीरियर ग्लैंड को तो ढूंढना ही ढूंढना है. इंफीरियर ग्लैंड हो सकता है हमें ना मिले. एंड as sir said, superior gland is posterior lateral to the rectilinear nerve, posterior lateral related to होता है. आगे थायराइड बैठा हुआ है, थायराइड को मैंने हटा दिया, ये नर्व है. इंफीरियर ग्लैंड यहां पे होगी, सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड यहां पर होगी. PG is the blood supply parathyroid gland. So this is one of the favorite question of Sonkar sir कि पैराथायरॉइड ग्लैंड को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है. कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? Inferior thyroid artery. Both of the parathyroid glands are supplied by terminal end arteries from the inferior thyroid artery. So while doing thyroidectomies, हम लोग पैराथायरोइडेक्टमी ज्यादा थायरोइडेक्टमी करते हैं. तो थायरोइडेक्टमी करते टाइम हमें कभी भी टर्मिनल ब्रांच ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो आ रही है, जो ये टर्मिनल ब्रांच अगर आ रही है, यहाँ पर हमें यहाँ नहीं बांधना, ट्रंक को नहीं बांधना है.
ट्रंक को बांधेंगे तो ये तो डिवैस्कुलराइज होगा, साथ में ये भी डिवैस्कुलराइज हो जाएंगे। तो हमेशा हमें वो बांधनी है जो थायराइड में एंटर कर रही है, यानी इंफ्राथायराइड आर्टरीज की वो टर्मिनल ब्रांचेस जो थायराइड में एंटर करनी है, केवल उन्हीं को लाइगेट करना है। जो पैराथायराइड में एंटर कर रही है उनको लाइगेट नहीं करना है, उनको बचाना है। पैराथायराइड हार्मोन की फिजियोलॉजी इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सबको पता है, आई विल जस्ट क्विकली ब्रश थ्रू। पैराथायराइड हार्मोन इज सिक्रेटेड from the parathyroid cells and that secretion responds to the calcium volume in the system. So that calcium is, we know हमारे बॉडी में कितने टाइप के कैल्शियम होते हैं, one is total, one is ionic. तो ionic calcium is more in form and more responsible for this parathyroid hormone secretion. So whenever ionic calcium value is low, parathyroid hormone is secreted and this parathyroid hormone binds to the parathyroid hormone receptor on bones and increases bone resorption. सारा कैल्शियम बॉडी में बोन में रिजॉर्ब्ड है, तो जब भी सीरम में कैल्शियम कम होगा, आयनिक कैल्शियम कम होगा, तो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा और वो क्या काम करेगा, बोन का रिजॉर्प्शन बढ़ा देगा, स्टोर यहां से निकाल के ब्लड के अंदर ले आएगा। एंड साइमल्टेनियसली यही कैल्शियम, जब यही पैराथायराइड हार्मोन यहाँ किडनी पे रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, वहां पर वो जो विटामिन डी है, जो 25 हाइड्रोक्सिलेटेड विटामिन डी है, उसको एक्टिव फॉर्म में 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी में कन्वर्ट करेगा एंड कैल्शियम का रिजॉर्प्शन बढ़ा देगा। किडनी में जो भी सिक्रीट हो रहा है यूरिन, उससे भी कैल्शियम का रिजॉर्प्शन बढ़ा देगा। ये वाला विटामिन डी जो बना, ये जाकर एक्ट करेगा विटामिन डी रिसेप्टर जो कि इंटेस्टाइन में है, और जो भी हमने खाना खाया उससे भी कैल्शियम का रिजॉर्प्शन बढ़ा देगा। तो एनीवेज हाइपर पैराथायराइड हार्मोन, जब भी पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो सब जगह से कैल्शियम सिक्रीशन में हमारा सीरम में बढ़ता जा रहा है, तो दैट रिजल्ट्स इन हाइपरपैराथायराइडिज्म। सो कमिंग टू द टॉक कि हाइपरपैराथायराइडिज्म क्या है। हाइपरपैराथायराइडिज्म में क्लासिकल फीचर्स होंगे जब भी हाइपरकैल्सीमिया होगा। ये क्लासिकल हम 5 चीजें यूजी से रखते चले आ रहे हैं। क्या क्या चीजें? पेनफुल बोन्स, रीनल स्टोन्स, एब्डोमिनल ग्रोन्स, सिटिंग ऑन थ्रोन एंड साइकिक ओवरटोन्स। ये सब क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली जब भी कैल्शियम बोन से निकल रहा है तो बोन्स वीक हो रही हैं, तो पेनफुल बोन्स हो रहे हैं। ऑब्वियसली जब भी कैल्शियम सीरम में ज्यादा हो रहा है, दे आर गेटिंग फिल्टर्ड इन द किडनी एंड किडनी में स्टोन्स बन रहे हैं, तो रीनल स्टोन्स हो रहे हैं। एंड हाइपरकैल्सीमिया की वजह से पेनक्रेटाइटिस हो रहा है, हाइपरकैल्सीमिया की वजह से गैस्ट्राइटिस हो रहा है, दैट रिजल्ट्स इन एब्डोमिनल पेन, दैट इज ड्यू टू दैट सेज एब्डोमिनल ग्रोन्स। एंड ऑब्वियसली ज्यादा ऑस्मोलैरिटी की वजह से यूरिन में ज्यादा यूरिन हो रहा है, पॉलीयूरिया हो रहा है, एंड पेरिस्टाल्सिस स्लो हो रही है हाइपरकैल्सीमिया की वजह से, दैट रिजल्ट्स इन पॉलीयूरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। हाइपरकैल्सीमिया आल्सो रिजल्ट्स इन न्यूरल एक्साइटेबिलिटी बढ़ा देता है, तो नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, एंड एकदम हाई एंड पे हाइपरकैल्सीमिक क्राइसिस में, मेनिया में भी पेशेंट जा सकता है, तो दैट सेज साइकिक ओवरटोन्स। देयर कैन बी मल्टीपल अदर फीचर्स आल्सो, बट मोस्टली इन वेस्टर्न वर्ल्ड जहां विटामिन डी की सीरम वैल्यूज, विटामिन डी की जनरल पॉपुलेशन वैल्यूज लगभग नॉर्मल है, ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल है, तो वहां पर ऑलमोस्ट 30% ऑफ पॉपुलेशन कैन बी एसिम्प्टोमैटिक आल्सो। सिंपल हमने कैल्शियम चेक कराया, उसमें पता चला कैल्शियम बढ़ा हुआ है, फिर हमने पीटीएच कराया, तब पता चला एक्चुअली उनको हाइपरपैराथायराइडिज्म था। तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो 30% ऑफ वेस्टर्न पॉपुलेशन। बट इन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में हम लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, तो उसकी वजह से क्या है, मस्कुलोस्केलेटल जो हमारी कॉम्प्लिकेशंस है वो सबसे कॉमन है। एंड सबसे ज्यादा कॉमन क्या हमको सुनने को मिलता है, फ्रैक्चर्स ऑन ट्रिवियल ट्रॉमा। ट्रिवियल ट्रॉमा का मतलब कि बाथरूम में थे, यहाँ कुर्सी बैठे थे, यहीं से गिर गए, फ्रैक्चर हो गया। बहुत अनयूजुअल चीज, रिक्शा बैठे थे, रिक्शा पलट गया, फ्रैक्चर हो गया। तो बहुत छोटी सी चीज, ऐसी हाइट से ट्रॉमा जो पेशेंट की हाइट से कम हो, दिस इज लेबल्ड एज ट्रिवियल ट्रॉमा। तो उस हाइट पे से कम, मतलब अगर जैसे ये 2 सीढ़ी है, मैं लेट सपोज इस एक सीढ़ी से गिर जाऊं, तो क्लासिकल इसी में फ्रैक्चर हो जाएगा, हाइपरपैराथायराइडिज्म, क्योंकि बोन्स इतनी वीक हो जाती है, इतनी फ्रेल हो जाती है कि छोटी सी हाइट से भी गिरने से फ्रैक्चर हो सकता है। तो दैट इज लेबल्ड एज क्लासिकल फ्रैक्चर्स ऑन ट्रिवियल ट्रॉमा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइपरपैराथायराइडिज्म, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म इज मोस्ट कॉमन। प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में केवल एक ग्लैंड इन्वॉल्व होती है। नॉर्मली 4 ग्लैंड हैं, 2 सुपीरियर 2 इंफीरियर, नॉर्मली एक ग्लैंड इन्वॉल्व होती है, सॉलिटरी, एंड ऑब्वियसली जिसकी वजह से उसका एडेनोमा होता है। एंड ट्रीटमेंट ऑब्वियसली 80% to 85% टाइम अगर सॉलिटरी एडेनोमा है तो हम लोग उसको एक्सरसाइज करते हैं। द ट्रीटमेंट इज लेबल्ड एज फोकस्ड पैराथायरेक्टमी। 15 to 20% टाइम मल्टीपल ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी एक से ज्यादा
हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा तो उस केस में वी डू बायलेटरल नेक एक्सप्लोरेशन। BNE का मतलब है बायलेटरल नेक एक्सप्लोरेशन, हमें दोनों तरफ की ग्लैंड्स देखनी है। एंड बहुत रेयरली पैराथायरॉयड कैंसर होता है, उसका ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम क्रोनिक रीनल फेलियर। जब भी क्रोनिक रीनल फेलियर होता है तो उसमें फॉस्फेट बढ़ने लगता है, तो फॉस्फेट बढ़ने की वजह से क्या होता है, वो पैराथायरॉयड जो सेल्स हैं उनको इंडिकेट करके उनका हाइपरप्लेजिया करा देता है। तो ग्रेजुअली धीरे 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 होते होते चारों ग्लैंड्स का हाइपरप्लेजिया हो जाता है। इनिशियली कैल्शियम नॉर्मल रहता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स एंड डेकेड्स हाइपरकैल्सीमिया होने लगता है। तो इनिशियली इट इज मेडिकली ट्रीटेड, बट इन द लॉन्ग रन देयर आर वेरी फ्यू एंड सेलेक्टेड इंडिकेशंस ऑफ सर्जरी। टर्शियरी हाइपरथायरॉयडिज्म इज जब डेकेड्स ऑफ सीकेडी हो गया, किसी पेशेंट को सीकेडी है, चलते 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 सालों के बाद डेकेड्स ऑफ सीकेडी में कोई एक ग्लैंड होती है वो ऑटोनोमस हो जाती है। हाइपरप्लास्टिक चारों ग्लैंड हो गई, अब 10 साल बाद कोई एक ग्लैंड कहेगी अब मुझे अपने से काम करना है, तो वो ऑटोनोमस जब हो जाती है तो इट इज लेबल्ड एज टर्शियरी। उसका ट्रीटमेंट भी सर्जिकल एक्सीजन होता है। सो दिस इज द चार्ट। प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म क्लासिकल प्रेजेंटेशन, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, calcium would be increased, phosphorus will be decreased and PTH will be increased usually. सेकेंडरी में कैल्शियम यूजुअली कम होता है, बहुत लॉन्ग रन में जाके बढ़ता है, फॉस्फोरस हमेशा बढ़ा हुआ होगा। तो ये चीजें पलट जाती हैं, फॉस्फोरस कम होगा या फॉस्फोरस बढ़ा होगा। एंड टर्शरी में प्राइमरी की तरह की पिक्चर आती है विद अ हिस्ट्री ऑफ सीकेडी। डायग्नोसिस के लिए वी डू सीरम कैल्शियम, सीरम फॉस्फोरस, सीरम PTH values in addition to alkaline phosphatase to see the bone turnover and serum vitamin D for the medical treatment. We usually measure theoretically 24-hour urinary calcium values to see hyperurinary calcium values. We do certain imaging also, bone densimetry I'll be showing in the next slide. X-rays classical pictures are there, वो भी मैं अगली slide में दिखाऊंगा। ECG में हाइपरकैल्सीमिया के साइंस होते हैं जो कि शॉर्टर QT इंटरवल होता है एंड इंक्रीज्ड QRS एम्पलीट्यूड होता है। सॉरी, अल्ट्रासाउंड करेंगे तो वील फाइंड रीनल स्टोन एंड ऑब्वियसली साइंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। ये सब एडिशनल जो साइंस हमें मिलते हैं, डायग्नोसिस के लिए जरूरी नहीं है, बट कॉम्प्लिकेशन हाइपरकैल्सीमिया कितना है या कैल्शियम कितना प्रेसिपिटेटेड है उसके लिए। बोन डेंसियोमेट्री में हाइपरपैराथायरॉयडिज्म क्लासिकल क्या करता है, जो बॉडी में कॉर्टिकल बोन, दो तरह की बोन्स होती है बॉडी में, कॉर्टिकल एंड कैंसलस। यस, कॉर्टिकल एंड कैंसलस। तो कॉर्टिकल बोन जहां पर कॉर्टेक्स ज्यादा है, जहां कैल्शियम ज्यादा डिपॉजिट है, वहां से कैल्शियम को खींच के ले आएगा। तो बॉडी में 3 जगह क्लासिकल कॉर्टिकल बोन है, वन इज लंबर स्पाइन, वन इज डिस्टल रेडियस एंड थर्ड इज हिप, ठीक है, नेक ऑफ फीमर। तो तीनों जगह से हम वी डू अ 3 साइड बोन डेंसियोमेट्री। ये एक नॉर्मल टी स्को कर्व है, ये नॉर्मल बोन मास है, ये ऑस्टियोपेनिक है, बिटवीन द 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम है। तो हमेशा हाइपरकैल्सीमिया के हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, देयर इज लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोन मास इंडेक्स। रेडियोलॉजी, ये बहुत फेवरेट पिक्चर है, ये हम लोग MBBS से पढ़ते चले आ रहे हैं। ब्राउन ट्यूमर्स होते हैं, यू कैन सी, जब भी ऑस्टियोपोरोटिक बोन होती है तो क्लासिकल वेल डिमार्केटेड देयर आर ऑस्टियोलिटिक लीजन्स, जो कि जनरलाइज्ड ऑस्टियोपेनिया भी होता है, एंड देयर आर स्पेसिफिक लीजन्स जो हमारे को दिखते हैं। ये एक्सरेज डायग्नोसिस के लिए नहीं होते, बट हमें ट्रीटमेंट में इसलिए जरूरी होते हैं, हमें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ की बोन वीक है, हमको पेशेंट को शिफ्ट करना है, पेशेंट को उठाना बैठाना, तो ध्यान से यहाँ की बोन इतनी फ्रेल है कि फ्रैक्चर हमारे को पकड़ने में, ओटी टेबल पे रखने में फ्रैक्चर हो सकता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। क्लासिकल इज हैंड एक्सरे, देयर इज सब पेरियोस्टल रिजॉर्प्शन ऑफ द रेडियल एस्पेक्ट ऑफ मिडल phalanges ऑफ सेकेंड एंड थर्ड फिंगर। देयर इज कॉर्टिकल टफ्ट इरोजन, नॉर्मली हमें एक्सरे में एकदम क्लीन लाइन दिखती है, पर यहाँ से गायब हो जाती है, दिस इज नोन एज एक्रोऑस्टियोलिसिस। ये सब क्लासिकल एक्सरेज एकदम दिखते हैं। देयर इज पेपर पॉट स्कल, एकदम ग्रे वाइट जैसे पेपर और वाइट हमको जोन दिखेगा, दिस इज पेपर पॉट स्कल। देयर इज रगर जर्सी स्पाइन, जैसे रग्बी में जर्सीज होती है, ऑल्टरनेट वाइट एंड ब्लैक, ऑल्टरनेट वाइट एंड ब्लैक सूट होता है, उसी तरह से ऑल्टरनेट एरिया ऑफ ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोक्लोसिस हमको दिखता है। बायोकेमिकली वी हैव डायग्नोस्ड, बट टू लोकलाइज आउट ऑफ द 4 ग्लैंड्स प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 4 में से कौन सी ग्लैंड कल्प्रेट है, कौन सी ग्लैंड ज्यादा हार्मोन बना रही है, तो उसके लिए हमें लोकलाइज करना पड़ेगा। लोकलाइजेशन के लिए एटलीस्ट 2 इमेजिंग, नॉट 1 बट ड्यूअल इमेजिंग इज नेसेसरी।
दो इमेजिंग में, फर्स्ट ऑफ ऑल इज अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ नेक वेयर वी कैन सी अ हाइपोएकिक लीजन. ये अल्ट्रासोनोग्राफी नेक है, ये ट्रेकिया है, ये थायराइड है. इमेजिन करो अगर पेशेंट लेटा हुआ है, हम लोग ऊपर से अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, तो ये ट्रेकिया है, ये थायराइड है एंड ये हाइपोएकिक लीजन है जो कि थायराइड के लेटरली है. दिस इज क्लासिकल ओवल शेप्ड लीजन एंड दिस इज योर पैराथायराइड. ये आगे आईजेवी है, पीछे कैरोटिड है जो कि इस पिक्चर में नहीं आ रही है. सेकेंड इमेजिंग इज सिस्टम एबी स्कैन. जैसा कि अभी सर ने बताया, उसमें स्कैन्स होते हैं, वहां पर जो पिक्चर बाद में दिखती है ना, सब्सट्रैक्शन में हमें दिख रही है, ये बाद में रेसिडुअल. ये थायराइड का अपटेक जब खत्म हो गया तो उसके बाद एक रेसिडुअल पिक्चर दिख रही है जहां पे हॉट अपटेक दिख रहा है. तो दिस इज लेफ्ट इंफीरियर हाइपरपैथायराइडिज्म इन द सेटिंग ऑफ बायोकेमिकल एंड क्लिनिकल सेटिंग्स ऑफ हाइपरपैथायराइडिज्म. ऑब्वियसली दिस इज सेकंड पिक्चर जहां पर राइट साइड में इंफीरियर ग्लैंड एनलार्ज्ड है. 4D CT एक नई इमेजिंग है. 4D CT नॉर्मली हम लोग उसमें करते हैं जहां री ऑपरेटिव सेटिंग्स होती हैं, मिस्ड एडेनोमा होता है. नेक एक्सप्लोरेशन किया, हमको समझ ही नहीं आया कहां पर ग्लैंड थी, या एक्चुअली हमने ग्लैंड निकाली तब भी पेशेंट को बायोकेमिकली हाइपरपैथायराइडिज्म बना ही हुआ है. तो उस केस में नेक की बार बार सर्जरी हम नहीं कर सकते. ऐसा नहीं कर सकते कि नेक खोल के बैठ के ढूंढने कहां पर है. तो उसके लिए हम 4D CT करते हैं. एंड 4D CT, फोर्थ डायमेंशन क्या है 4D CT में? टाइम. यस, 4D CT में फोर्थ डायमेंशन इज द टाइम एंड ओके थैंक यू. फोर्थ डायमेंशन द टाइम जिसमें हम डिलेड इमेजेस लेते हैं. सर्जरी हम लोग कर रहे हैं. सर्जरी में वी डू द फोकस पैथाइडेक्टमी. बायलेटरल एक्सपेक्टेशन तब करते हैं जब मल्टीपल ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं. फोकस पैथाइडेक्टमी, द पोजीशन एंड एनेस्थीसिया सेम एज थायराइड. जनरलाइज एनेस्थीसिया होता है एंड एक्सटेंडेड नेक पोजीशन होती है. वी डू अ सर्जन परफॉर्म्ड अल्ट्रासाउंड. सर्जन खुद से अल्ट्रासाउंड करता है एंड वी मार्क द इंसिजन जहां की भी ग्लैंड एनलार्ज होती है. We give a very small incision, 2 to 3 centimeter incision just over that parathyroid. We dissect it and we take that parathyroid out. We don't look other parathyroid में, यानी बाकी 3 parathyroid gland को हम लोग नहीं देखते. तो this is labeled as focus parathyroidectomy. And how do we define cure? हम लोगों ने gland तो निकाल ली, PTH लिया, उसके 10 मिनट बाद लिया, फिर जस्ट उसका पेडिकल, जब पैराथायराइड का पेडिकल लाइगेट करने आ रहे हैं उससे पहले लिया, निकालने की 10 मिनट बाद लिया. तो हम सीरियल पीटीएच वैल्यूज देखते हैं. इफ देयर इज मोर देन 50% फॉल ऑफ प्री इंसिजन वैल्यू पोस्ट एक्सीजन वैल्यू के, तो देन इट इज लेबल्ड एज क्योर. यानी कि प्री इंसिजन वैल्यू जितना था उससे 50% से ज्यादा अगर फॉल हो गया है, दिस इज लेबल्ड एज क्योर. एंड माई में बहुत सारे क्राइटेरिया हैं अलग अलग लेवल्स के. तो क्लासिकली जो होती है वो मरून शेप्ड ग्लैंड बहुत ही प्यारी होगी. मतलब अगर तुमने पैराथायराइड सर्जरी देख ली ना तो तुम लोग पैराथायराइड सर्जरी के फैन हो जाओगे. मतलब लगेगा कि पैराथायराइड सर्जरी ही करनी चाहिए, थायराइड सर्जरी भी नहीं करनी चाहिए. इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत ग्लैंड होती है, मरून शेप क्लासिकली ओवॉइड ग्लैंड. वेरी फ्यू स्लाइड्स अबाउट मेन सिंड्रोम. मेन सिंड्रोम आर डिसऑर्डर्स जहां पर हमारे कई सारे एंडोक्रीन जो सिस्टम डिसऑर्डर्स होते हैं वो ग्रुप्स में होते हैं. कैसे ग्रुप्स में होंगे? देयर वुड बी 2 tumors of involving more than 2 endocrine glands. There would be a genetic abnormality and there would be a autosomal dominant, usually inheritance pattern. MEN 1 हमको पता है, MEN 2 हमको पता है, MEN 3 हमको पता है. ये इंटरनेट से स्लाइड ली है, इसमें बहुत अच्छे से याद करने के लिए सही है. MEN 1 में 3 P's होते हैं. क्या क्या होते हैं? पिट्यूटरी, पेनक्रियास एंड पैराथायराइड. तो 3P इन MEN 1. MEN 2 में क्या क्या होता है? पैराथायराइड इज कॉमन, मेटास्टेटिक कैंसर एंड फियोक्रोमोसाइटोमा, यानी 2P और 1M. MEN 2B में क्या क्या होता है? ये दोनों सेम रहते हैं, उसके साथ गैंग्लियो म्यूकोजल न्यूरोमास होते हैं, मार्फिनॉइड हैबिटस हो जाता है. तो देयर इज 1P फियो एंड देयर वुड बी 3M, मेटास्टेटिक कैंसर, म्यूकोजल न्यूरोमास एंड मार्फिनॉइड हैबिटस. तो ये क्लासिकल पिक्चर है जो कि आप लोग को याद रखनी है. क्वेश्चंस क्लासिकली ऐसे ही बने हुए आते हैं. पिक्चर पेशेंट का हैबिटस होता है एंड दे आस्क यू फॉर क्या करना है उसमें. MEN 1 is also known as Vermeer syndrome that arises due to mutation in tumor suppression gene, जो menin gene होता है उसकी वजह से. MEN 2 में MEN 2A and MEN 2B होता है. MEN 2A is more common than MEN 2B and that is occurring due to a proto-oncogene RET में जो क्रोमोसोम 10 पे है उसकी म्यूटेशन की वजह से होता है. टायरोसिन किनेज इनहिबिटर होता है उसका प्रोटीन. एंड MEN 3 जीन, MEN 2B को हम लोग MEN 3 भी बोलते हैं. और वैगामेन फ्रोबोस सिंड्रोम. रिसेंटली क्वेश्चन है MEN 4 भी पूछा जा रहा है. MEN 4 इज सेम एज MEN 1, सब कुछ फिनोटिपिकली इज सेम एज MEN 1, बट उसका म्यूटेशन अलग है. इसका म्यूटेशन क्रोमोसोम 11 का मेनिन जीन का है, इसका म्यूटेशन जो है
वो एक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर जिसको CDKN1 भी हम लोग बोलते हैं, उसकी म्यूटेशन की वजह से होता है। सो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म क्या ध्यान रखना है, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में हमें ये फोटो जरूर ध्यान रखनी है कि हाइपर कैल्सीमिया की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, एंड 85% टाइम इट इज प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म एंड सिंगल ग्लैंड इज इन्वॉल्व्ड। लोकेलाइजेशन के लिए हमेशा ड्यूअल इमेजिंग करनी है, one is ultrasound, second can be system EB preferably or a 4D-CT depending on the setting, and treatment is obviously focused parathyroidectomy, उस selective gland को निकालना है। MEN syndrome बहुत ज़्यादा important नहीं है, at least वो table याद रहे, तो usually comes as a short note for UG and PG, बस that is important I presume. Thank you. Thank you, sir, for your extensive talk. May I request Dr. Anshika Mittal, ma'am, to please facilitate, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Parotid surgery. This is being conducted by our very own Sonkar sir. His areas of expertise are head and neck surgery, surgical training, experience in various centers, and a well-recognized face in the field of surgery, a teacher, a surgeon, and a visionary. ये मूव करना पड़ेगा। क्या है? ये क्या? ये पॉइंटर है। पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंटर। All right. Good morning to all of you. I hope you are having a good time. And those who are getting sleepy, they can do some kind of pranayam. Faces and lot of residents from various institutions. I will keep my talk simple. I will try to keep my talk simple. I speak rapidly, so just let me know that I speak rapidly. I will give it a pause. I have a nasty habit of inviting trouble. What Kulranjan spoke, though he spoke much better than me, but I was always prepared. And I went to take exams several places. So what happened was, a lot of people were having difficulty in answering the questions about salivary gland neoplasm, but it is always a short case. In some places, it is a long case. So I thought I would talk about that. So it's not moving. All right. So this is going to be the overview: anatomy, epidemiology, clinical features, classifications, role of imaging modalities, differential diagnosis, surgical options, steps of superficial paradigm and complications. Anatomy you all know of. I will not dwell much on anatomy. You all know that it occupies the major portion of the masseter muscle, which is attached to the ramus of mandible, and a small portion is posterior to the ramus of mandible, and it is anterior to the anterior to the vessels, terminal vessel, temporal and superficial maxillary vessel, and oropharynx. Why it is important for you to remember oropharynx medial? Because sometimes if the this tumor, this part of the gland enlarges, it will have its presence felt in the oropharynx, and you can bimanual palpate it sometimes, no, but not always. Why it is important for you to imagine this video? Because we have burnt our fingers a lot many times. We have to revise our surgery. Parotid gland for the major part is lying superficial to the masseter muscle and mandible. So anything which causes enlargement of mandible, anything which causes enlargement of masseter will give rise to enlargement of and hypertrophy of the parotid gland, and therefore it will look like that there is a parotid lesion. But when you go there and when you start operating, you see the parotid gland is normal, or it is something else. Then you are caught in soup and you don't know what to do. You may have to abort the procedure, and then you may have to come back again. That is why, unlike previous times,
the role of imaging and role of clinical history, role of imaging comes into play, very important. All right. It is a rare disease. It is not very common, and you will see that not much development has taken place. I don't know whether it requires any development or not, but this much is there that it is a rare disease and not much development has taken place. इसमें बहुत नया नहीं आ रहा है. All right. So it is rare disease. 3 to 6% of all tumors of the head and neck. Incidence of malignancy in parotid, submandibular, minor salivary gland. Just remember, majority of the tumors of larger the gland, lesser the chance of malignancy. Smaller the gland, greater chance of malignancy. Parotid में malignancy की chance 20% से कम होती है, but जब होती है तो majority उसमें कौन सा tumor होता है? Mucopelmoid. और उसके बाद थायराइड में, उसके बाद सबमैंडिबुलर ग्लैंड में 50%, सबलिंगुअल एंड माइनर सैलिवरी ग्लैंड में अप टू 70-80% डिजीज जो होती हैं वो मैलिग्नेंट होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं. ऑलराइट, ये भी वही बात कह रहा है. प्रेजेंटेशन में इसमें आप देखेंगे व्हाट डज प्रेजेंटेशन टॉक्स अबाउट. The pleomorphic adenoma is 1:1 ratio. Warden's tumor 7:1 ratio, more common in men than female, and nearly the incidence and prevalence of disease nearly the same in both the sexes. So not much of an ado. Warden's tumor is also more common. It is also known as papillary cyst adenoma lymphomatosum. It is more common in older sex, but you will see it happens in younger age group. It is said to be bilateral, and it happens most commonly in the tail of parotid. So this information is important. Why? Because whenever it is happening in tail of parotid, you can always do a limited parotid dissection and save the whole of the gland. You save the contour of the gland, you save the cosmesis, and you prevent the patient from xerostomia. Now, what are the clinical features? We talked about the Warden's gland to be bilateral. Pleomorphic adenomas, ये tail में लिखा, but I don't agree with it. Sometimes also occurs in the body. If it tumor occurs in the body, one should suspect that is not a pleomorphic adenoma. होता उसमें भी है, but most commonly अगर ये कह रहे होगा, I have not seen this thing somewhere, कहीं तो लिया होगा उन्होंने. And it is known to be present for a very long time. Thyroid disease बहुत लंबे समय तक रहती हैं, and then they de-differentiate to malignancy. The same happens with pleomorphic adenomas. They can be present for 10-15 years, and then they de-differentiate to a malignant leader, and this is known as, क्या होगा इसका नाम? बहुत अच्छा था नाम है उसका, बहुत cool type का नाम है. And this name is known as carcinoma ex pleomorphic adenoma. Carcinoma ex pleomorphic adenoma means that it is developing in the milieu of a pleomorphic adenoma. It is present for the at least the pleomorphic adenoma is present for more than 10 years, and it can also happen de novo. It could be a new disease entirely. It can happen de novo, and it can happen most commonly in this setting. This setting would be secondary to a pre-existing pleomorphic adenoma. तो उसमें हो सकता है. Malignant tumors, needless to say, they would be history would be that the duration is very short. Duration is short. Involvement of the facial nerve, any part of the facial nerve, involvement of the skin, involvement of the lymph node. These are all preambles of a malignant tumor, and fixity is another, hard texture is another preamble, that and the sign that patient is having malignant lesion. Deep lobe tumors may present. So I was telling you that a small portion of the deep lobe of the parotid gland is posterior to the ramus of mandible, lies medial to the oropharynx, and as and when it enlarges in size, it can have pressure dysphagia, pressure-like effect on the oropharynx. ये लिखा है examination में reveal bulging of lateral pharyngeal wall, but it is little difficult to see because you will encounter antifascial pillar before that, and it will be little difficult to see. ये मैंने बता दिया आपको. What is the telltale sign of malignancy? Please remember, telltale signs of malignancy would be a shorter history, nodular lump, involvement of skin, fixity of skin, a priori presentation of facial palsy, and lymph node. These are all would be signs of malignancy. Another would be that if the Stensen's duct is exuding pus or blood. Another would be trismus. Why trismus is important in this? क्यों trismus important? How will it present with trismus? कोई पीछे से बताओ, तुम लोग बताओ. Trismus? अक्षय, is Akshay around?
यार इन लोगों को कॉफी पिलवा दो, get them some hot water, pour over them, generous hot water. हाँ, trismus, why would trismus happen? हाँ? Yeah, see, anatomy is all, first year में anatomy पढ़ाई जाती है, तो एनाटमी पढ़ाने के बाद आपको अंदाजा लग जाता है ये यहाँ है, अंदाजा ही होता है. इट इज बेसिकली एजुकेटेड गेस. यू ऑल नो दैट इट लाइज, मेजॉरिटी ऑफ इट लाइज ऑन दी 3 and 2/3 of the masseter, posterior 2/3 of the masseter, right? Masseter is another muscle of mastication. Then posteriorly it is deep lobe. If this gland were to become malignant and involve secondarily, what is another muscle it will involve? Which pterygoid? Majority of the bulk is formed by medial pterygoid. It involves medial pterygoid and lateral pterygoid. So if you imagine this gland, it goes superiorly, temporalis another muscle, anteriorly, posteriorly, ramus of mandible goes medial pterygoid, anterior superficially medial masseter muscle, and therefore it involves all the muscles of mastication, all the 3 directions. So trismus in these patients could be a sign of malignancy, and also it tells you that you, Mr. Look, you need to do something more than the normal superficial pedectomy you always think of. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मैलिग्नेंट प्रूव कर ले जाते हैं तो आपको ये पहले से प्लान करके सोच के रखना पड़ेगा कि ये लीजन मैलिग्नेंट है, तो इसके अंदर इसका मतलब हमें आइडल रिसेक्शन करने के लिए तो हो सकता है कि हमें हेमी मैंडिबुलेक्टमी करने पड़े, एक्सीजन और मीडियल लैटरल टेरिगॉइड करना पड़े, और इसका मतलब ये होगा कि जो सर्जरी होगी उसके जो मैग्नीट्यूड होगा वो सुपरफिशियल पेडिक्टमी से अप्रायोरी यानी पहले से ही बड़ा होगा. अगर आपने नहीं किया, यू विल बी डूइंग अ लेस देन नॉर्मल सर्जरी, and second surgery will be nearly impossible to do in this particular area because it is a very organ dense area. बहुत dense होता है और बहुत मुश्किल होता है करना. फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या देखेंगे? बहुत ज्यादा कुछ नहीं है फिजिकल एग्जामिनेशन में. वंस अगेन यूज इमेजिनेशन. आर दीज लंप मोबाइल? ये मोबाइल होते हैं? नहीं होते. लेकिन कभी कभी अगर पेरिटोनियल का कैप्सूल फेशिया अगर रप्चर कर लें तो एक डंबल शेप प्रेजेंटेशन में मोबाइल हो सकते हैं. नॉर्मली दे आर नॉट मोबाइल ट्यूमर्स. इफ दे आर राइजिंग फ्रॉम द डीप लोब, आर दे मोबाइल? वुड दे बी मोबाइल? नो, दे आर नॉट मोबाइल. तो उनमें कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता है. बट द ओनली थिंग यू वुड गेट टू सी इज इट वुड बी बॉसिलेटेड और नोडुलर स्ट्रक्चर. स्वेलिंग मिल सकती है. अगर बाइलेटरल मिले, स्वेलिंग मिले, बच्चा है, मेल सेक्स है, बच्चा है, इसका मतलब उसको कोई ऑर्काइटिस है, उसको वायरल फीवर है, उसमें मिल सकता है. एप्स्टीन बार वायरस, उसमें बाइलेटरलिटी मिलती है. बिनाइन डिजीज में बाइलेटरलिटी मिल सकती है, शॉग्रेन्स में मिल सकती है. इन कंडीशन को छोड़ के अगर यूनिलैटरल है, अगर इफ इट इज हार्ड, इफ इट इज नॉट ऑलवेज हार्ड, फॉर्म 10 सिस्टिक और सिस्टिक टेलोपेरेट, दीज ऑल गोज इन फेवर ऑफ बिनाइन डिजीज. तो यही इसके फीचर होते हैं. ठीक, पहले भी बता चुके हैं आपको कि जब भी कभी मैलिग्नेंसी, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हम लोग को जैसे सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल है, why we teach solitary thyroid nodule to you, and books have dedicated a full chapter, everybody is talking about solitary thyroid nodule. It is your job to rule out malignancy. Same is to here, that is your job to rule out. What happened? क्या हो गया? You can share it with us, or you can go outside and laugh, have a hearty laughter, because you are distracting me. I'm talking from my recall memory and distracting me. It's bad manners. It simply says you're not here. Who are you guys? German interns हैं? क्या है? Be very wary of the situation, okay? You are present in August Hall, nothing less than head is talking, you're smiling and laughing from ear to ear. So I would like to be a part of it. Sit down, don't worry. All right. तो मैंने ये बोला कि मैलिग्नेंट जब होगा तो मैलिग्नेंसी के अंदर उसको आपको रूल आउट करने के कुछ सटल साइंस हैं. वो क्या होंगे वो मैंने बता दिया. क्या क्या होंगे? स्किन से शुरू करें, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन. स्किन में इन्वॉल्वमेंट होगा, नोडुलर होगा, हार्ड होगा, शॉर्टर हिस्ट्री होगी, उसके बाद लिम्फ नोड मिल सकते हैं, उसके बाद स्टेंसिल डक्ट से कभी कभी पस और ब्लड आ सकता है, और अगर साइलोग्राफी करें तो क्या मिलेगा? साइलोग्राफी में डक्ट के अंदर रेगुलरिटी मिलेगी जैसे आपको ब्रेस्ट में मिलती है. सिंपली ब्रेस्ट और बहुत कॉमन सी चीज़ें मिलती हैं. ये डरावना लगता है, मुझे भी डरावना लगता है, बट आई विल गेट बैक टू यू. इसमें अभी बात करेंगे. इसमें आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये बेली लव पुरानी वाली.
सेल का ओरिजिन क्या, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द सेल, इफ इट इज मोनोमॉर्फिक एंड इट इज और इट इज प्लूमॉर्फिक. मोनोमॉर्फिक का एग्जांपल है एड्रेनल लिम्फोमा, वॉर्डन्स ट्यूमर. प्लूमॉर्फिक मल्टीपल सेल्स इंटरकैलेटेड एंड मायोएपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट करते, तो कौन सा ट्यूमर होता है शिवा? हाँ, इसमें नहीं लिखा हुआ है, यू वोंट बी एबल टू आंसर इट. कोई भी ट्यूमर पैरोटिड में जो अराइज कर रहा है वो ज्यादातर डक्ट से अराइज करते हैं. डक्ट के अंदर टर्मिनल डक्ट होती है, दो काम होते हैं, एक उसमें जो सेल होते हैं, एक का काम होता है सेक्रीटरी, एक का काम होता है एक्सक्रीटरी. और एक सेक्रीटरी से बनेगा, एक एक्सक्रीटरी से बनेगा, एक इंटरकैलेटेड डिस्क से बनेगा जो उनको जोड़ रही है. मायोएपिथेलियल सेल उसके ऊपर होते हैं जो हल्का हल्का कंट्रैक्शन देते हैं जिससे सलाइवरी जूस बाहर निकलता है. अगर वो एक सेल के ओरिजिन से है तो मोनोमॉर्फिक है, उसका एग्जांपल है सिस्ट एडिनोमा, पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा लिम्फोमेटोसम और वॉर्डन्स ट्यूमर. और मल्टीपल है सिर्फ एकदम प्लूमॉर्फिक एडिनोमा, तो वो करेगा इंटरकैलेटेड डिस्क से और मायोएपिथेलियल सेल से. अगर केवल मायोएपिथेलियल सेल से कैंसराइज कर दो उसको बोलते हैं मायोएपिथेलियो मैलिग्नेंसी, कैंसर ऑफ द मायोएपिथेलियल सेल, जो भी उसको बोलते हैं. और नॉन एपिथेलियल नॉन, अब इसमें कार्सिनोमा भी होगा. एसाइनिक सेल इसकी एक यूनिट है, उसे एसाइनिक सेल होगा. म्यूकोएपिडर्मा वंस अगेन दो आपको म्यूकस प्रोड्यूसिंग और स्किन के एपिडर्मल स्क्वेमस सेल कैंसर की जैसे फीचर मिलेंगे, उसे म्यूकोएपिडर्माइड कैंसर बोलते हैं. और स्क्वेमस सेल कैंसर बहुत रेयर होता है. और बाकी एसाइनिक सेल म्यूकोएपिडर्माइड कैंसर में लो ग्रेड, इंटरमीडिएट, हाई ग्रेड होता है. इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टू फीचर्स, दो फीचर पे डिस्क्राइब होता है. आप लोग को पीछे सुनाई पड़ रहा है? यू गेटिंग माय पॉइंट? आप लोग सुनाई पड़ रहा है ना? तो जो म्यूकोएपिडर्माइड है और ये लो ग्रेड और हाई ग्रेड है, it is dependent on two most important features. One is differentiation and second is key 67. जितना ज़्यादा होगा इतने खराब होंगे. Low grade have a 5-year survival of 70-80%, but high grade have a poorer survival, and if they have metastasized, the survival is in months and days, not years. All right. Otherwise, they are fairly good diseases. फिर नॉन एपिथेलियल ट्यूमर्स में whatever structure you can think of, lymphomas हो सकते हैं, हेमांजियोमास हो सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास हो सकते हैं, न्यूरल ओरिजिन के लीजन्स हो सकते हैं, अनक्लासिफाइड ट्यूमर्स हो सकते हैं, सिस्टिक लीजन हो सकते हैं, सेकेंडरीज भी हो सकते हैं और प्राइमरीज भी हो सकते हैं. एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि डू यू नो द लिम्फ दैट पैरोटिड कंटेन्स, और यू नो ऑलरेडी नो द मैंडिबुलर कंटेन पैरोटिड, दे कंटेन लिम्फ नोड्स. होता है? तो पैरोटिड के अंदर सुपरफिशियल और उसके सुपरफिशियल लोब में और उसके सरफेस के ऊपर खूब सारे लिम्फ नोड होते हैं. तो कभी कभी लिम्फ नोड जो स्कैल्प से मेटास्टेसिस रिसीव करेगा तो लगेगा मेटास्टैटिक है, लेकिन आपको रूल आउट करना पड़ेगा. अगर उसको आपने ध्यान से नहीं दिया है तो पता ये चलेगा कि वो एफिनेसी करेंगे, कहेंगे स्क्वेमस सेल कैंसर है. स्क्वेमस सेल कैंसर और पैरोटिड आर लेस देन 1%, दे आर फेयरली एग्रेसिव ट्यूमर एंड देयर ट्रीटमेंट लिटिल डिफरेंट. लेकिन ये आपको पता चलना चाहिए कि स्कैल्प में इन्फेक्शन तो नहीं है, स्कैल्प में डिजीज तो नहीं, मेलानोमा एंड स्कैल्प इन्फेक्शन कैन गिव राइज टू लिम्फ नोड डिजीज इन पैरोटिड ग्लैंड. पैरोटिड ग्लैंड में जो लिम्फ नोड होता है दैट कैन आल्सो गिव राइज टू लिम्फोमास. पैरोटिड ग्लैंड में एक डिजीज होती है जो थायराइड की तरह नाम होता है, उसमें भी लिम्फोमा हो जाता है. लिम्फोमा हो सकता है, तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है. एंड सेकंड थिंग इज you have to differentiate it from that lesion, and sometimes in the long standing patient you may develop lymphomas. तो थायराइड में उसको क्या बोलते हैं? क्रोनिक लिम्फोसिटिक थायराइडाइटिस. यहाँ पे बोलते हैं क्रोनिक लिम्फोसिटिक पैरोटाइटिस. इस पेशेंट्स के अंदर लिम्फोमा डेवलप कर सकते हैं प्राइमरी. The treatment of primary lymphoma, you make a two-cut biopsy, two-cut biopsy, you make diagnosis, and then patient is managed chemotherapy and by radiation. No surgery in lymphomas anywhere in the body. Why this information is important? Because you have to, if you do surgery in this patient, you will be doing a bad surgery, bad treatment, and prognosis will be bad. ये हम लोगों ने बात कर ली मोस्ट कॉमन ट्यूमर. पैरोटिड का सबसे कॉमन म्यूकोएपिडर्माइड कैंसर होता है, फॉलोड बाय एसाइनिक सेल कैंसर. सबमैंडिबुलर ग्लैंड में एडुनोसिस्टिक कार्सिनोमा. तो इसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है. इट इज सेड टू बी अ शिवा, यू कैन हैव सम हॉट वाटर, गो आउटसाइड एंड हैव वाटर. What is the importance of adjuncts carcinoma? It is a neurotrophic tumor. तो नर्व्स को जल्दी इन्वॉल्व करता है. इसमें लिखा हुआ है, बट आप देखो ना कैंसर को ऑलरेडी भी न्यूरोट्रॉपिक होता है, वो भी नर्व को पहले इन्वॉल्व कर लेता है. एंड इट इज ऑलवेज द पोर प्रोग्नोस्टिक साइन, सो लिटिल एग्रेसिव देन म्यूकोएपिडर्माइड एडजुंक्ट कार्सिनोमा. रूल ऑफ 80 कैन फॉरगेट. डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? डायग्नोसिस के 3 स्टेप्स है मेरी दृष्टि में. फाइंड इट स्पेशल साइटोलॉजी, इमेजिंग, बट 2 चीज इंपॉर्टेंट है. FNAC would be able to make diagnosis of tumor of adenoma majority of the cases. But once again, please remember, if you palpate a lesion of, say for example,
It is osteogenic sarcoma, osteosarcoma of mandible, ramus of mandible, and if you palpate it, you will palpate a parotid gland, and you will think it is a lesion of parotid gland. You will be missing that. If it is masseter lesion, you will be missing that. So here comes the importance of imaging. Most best investigation would be CT scan, but people also go for this ultrasound. Ultrasound is not able to penetrate the deep lobe. It will come. It will not show anything beyond the bone. So ultrasound is बहुत अच्छी investigation नहीं है. Ultrasound डिफ्रेंशिएट करता है मैलिग्नेंसी को, उसको बोलते हैं रेजिस्टिव इंडेक्स. थायराइड में हाइपरवेस्कुलरिटी होती है पेरिफेरल, वो इसमें मिलती है, बट मैलिग्नेंट लीजन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती, इसलिए अल्ट्रासाउंड इज नॉट अ वेरी गुड इन्वेस्टिगेशन. अदरवाइज सॉलिड सिस्टिक लीजन इसमें भी करके मैलिग्नेंसी करके प्रेजेंट कर सकते हैं. व्हाट वुड बी अ गुड इन्वेस्टिगेशन? सीटी वुड बी अ गुड इन्वेस्टिगेशन. बाय CT would not only tell you that it is what it is originating from, it will also tell you whether it is, if it is, say for example, pleomorphic adenoma, and it is malignant, it will also tell you that it involves the ramus of mandible. If it is a lesion of ramus of mandible, it will tell you there is osteogenic sarcoma, osteosarcoma of mandible, there is dilatation of the both the plates of the mandible. Something masseter you can always see vessel. और इसमें एक शब्द ये भी लिखा है कि MRI is a better investigation because if you give contrast gadolinium based contrast, the delineation of tumor is better. But I would go for CT scan. Role of cytology. यहाँ पे बेथेड्रा क्लासिफिकेशन थायराइड के लिए है, ठीक इसी पे का मिलान इज फॉर salivary gland malignancies and mostly for ये parotid. Now this ATP of unknown significance and the salivary gland neoplasm on certain malignancy, this and this, जहाँ पे उसने benign बता दिया और जहाँ पे malignant बता दिया, वहाँ सारी कहानी आसान हो जाती है. Remember, whenever diagnosis of benign disease and malignancy has been made, your job has been made easier because you know what you are dealing with. But wherever there is suspicion, that situation requires repeat biopsy and ATP on the ATP undetermined significance and salivary gland neoplasm on certain significance. यहाँ पे diagnosis थोड़ा बनाना मुश्किल है, clear cut features नहीं मिलते. It is mostly based on histopathology. Therefore, these are those patients where you will put some extra energy and labor. उसको repeat biopsy करनी है, repeat cytology करनी है, repeat biopsy करनी है, प्लस माइनस इमेजिंग करनी है. और जो लोग ये जानते हैं कि नेक में एक हम लोग प्रोसीजर करते हैं उसको बोलते हैं सुप्रामोहेड नेक डिसेक्शन. सुप्रामोहेड नेक डिसेक्शन करते हैं कि भाई लिम्फ नोड नहीं है, अगर है तो होता तो थेरेपेटिक हो जाए, 1 2 3 निकाल दिया आपने, और नहीं तो डायग्नोसिस बन गई आपकी, और अगर पॉजिटिव निकला तो आपने उसका MRD में लेवल 4 भी निकाल दिया, लेवल 5 भी निकाल दिया. ये टीचिंग है. इस इन्फॉर्मेशन में फ़ायदा ये होता है कि इफ़ यू हैव नॉट बीन एबल टू मेक डायग्नोसिस, देखिए फ्रोजन सेक्शन भी लिखा हुआ है, बट फ्रोजन सेक्शन हैज नॉट बिकम द स्टैंडर्ड ऑफ केयर. एंड हियर व्हाट इज बीन सेड इज that a superficial or suprafacial parotidectomy is a procedure which is equal to that of a biopsy. हम लोग आप पढ़ेंगे थायराइड में और पैरोटिड ग्लैंड में बायोप्सी को बहुत ज़्यादा टू कट बायोप्सी, ओपन बायोप्सी बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं करते हैं. देयर इज ऑलवेज एन इमिनेंट डेंजर ऑफ द इंजरी टू द लारिंजियल नर्व इन थायराइड एंड फेशियल नर्व इन पैरोटिड ग्लैंड. ऑलराइट, तो ये दो कैटेगरी याद रखनी है. 5 6 सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड 1 and 2 सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. So level 3 is ATP of unknown significance and some phase 4B is salivary gland neoplasm on certain malignant potential. इनको बहुत ध्यान रखना है, इनको दोबारा बुलाना है. कोनिडल बायोप्सी बता दिया आपको, हिस्टोपैथोलॉजी तो डायग्नोसिस बनती है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करती है, बट कैसे करेंगे, कब करेंगे, इट इज अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन. अगर आपने डक को इंजर कर दिया तो फिशुला बन जाएगा. एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ फिशुला? व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ benign फिशुला और फिशुला? What is the treatment of fistula? क्या करेंगे पैरोटिड का फिशुला है तो? Treatment is superficial parotidectomy. There is no way you can repair it. Sometimes you may, but it will be difficult for you to find pain and you will have to do superficial parotidectomy. तो superficial parotidectomy काफ़ी चीज़ों में करते हैं. You do superficial parotidectomy in many cases, but you have to understand what is the reason behind doing superficial parotidectomy. Why is it you do it? Frozen is not standard of care. Differential diagnosis बहुत आसान है याद रखना. डिफरेंशियल डायग्नोसिस पैरोटिड नियोप्लाज्म की, टेल ऑफ पैरोटिड, मेल 70 years, वॉर्डन्स ट्यूमर, सिस्टिक भी फील होगा, मिक्स्ड टेक्सचर है, प्लेओमॉर्फिक एडेनोमा. उसके बाद जो जो याद है सब बोल देना, जो जो याद है. मैं ऑनकोसाइटोमा और बिनाइन डिजीज में ग्रैनुलोमेटस लीजन है, सिस्टिक लीजन है, बिनाइन ट्यूमर्स है, जो जो होते सब हो सकते हैं. इसमें हेमेंजियोमा में एक इंपॉर्टेंट बात करने वाली है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंट
कुशाग्र, what would be an important thing? KT, not KGB. हमारे पास पुतिन का एक एजेंट है यहाँ पे, वो इतना इम्पोर्टेंट था कि उसने कहा कि इसको थायराइड सर्जन बना के इंडिया में इम्प्लांट कर दो और वो सारी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। तो ये हेमेंजियोमा में मैं अटक गया एक्चुअली। व्हाट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? It is the most common site, probably second most common site of hemangioma in the parotid gland in childhood period up to 12 and 13 years of age. 12-13 साल तक यहाँ पे जो most common रीजन होगा वो ये हो सकता है, हेमेंजियोमा हो सकता है। मैलिग्नेंट में और आसान है। मैलिग्नेंट में जितने ट्यूमर याद आते हों, मैलिग्नेंट में पैरेटो का मोस्ट कॉमन ट्यूमर है 40% इज न्यूकोएपिडर्मल कार्सिनोमा, सेकंड इज एथेनिक सेल कार्सिनोमा, थर्ड इज एडनोसिस्टिक कार्सिनोमा। इट कैन हैपन एनीवेयर। पैरेटोड में भी होता है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड में भी होता है, लिंगुअल में भी होता है, माइनर सैलिवरी ग्लैंड में भी हो सकता है। उसके बाद एडिनोकार्सिनोमा, इसका मैं सकांता लिम्फोएपिथेलियल प्रोलिफरेशन, ऑन्कोसाइटोमा, कार्सिनोमा एक्सप्लोमॉर्फिक एडिमा, लिम्फोमा, रिकरेंट, आपको नेक्स्ट रिकरेंट मिल सकती है, प्राइमरी मिल सकती है, सारे गूगली फिट कर दीजिए। इट इज ईजी, बिल्कुल बेली लेवल अप्रोच है ना? तो एग्जाम में बताएंगे इस तरीके से, बिल्कुल। आई विल रिमेंबर दैट आई टॉट यू अबाउट दिस, वेदर रिटेन इट और नॉट, बट आई विल रिमेंबर दैट। ओके, इट्स वेरी इजी। बिनाइन डिजीज का याद रखना है, मैलिग्नेंट डिजीज याद रखना है। कंडीशंस मेकिंग पैराटोमेगाली। व्हाट इज पैराटोमेगाली? प्रोस्टेटोमेगाली की तरह पैराटोमेगाली भी एक शब्द है। तो हाइपरट्रॉफी ऑफ द मैसेटर, डेंटल सिस्ट, ब्रिंकल सिस्ट, मिक्सोमा, न्यूरोमा। तो once again mandibular tumors, mastoiditis, lymphadenopathy, parotid nodes and sebaceous cysts, these all will give rise to, यहाँ पे बस imagination याद रखना है, यहाँ पे इसके causes याद रखना है, और you will be sailing through very nicely because this is not an educated guess, this is what actually it happens। ये benign disease है। स्टेजिंग सबको पता है, स्टेजिंग अब नॉट। ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? सुपरफिशियल पैरेटोडेक्टमी। Superficial peritoneectomy, superficial to facial nerve. It is situated in the facial-venous plane of Petty, facial-venous plane of David Petty, जिन्होंने MRM दिया था, उसके ऊपर करना है। उसके बाद दूसरा प्रोसीजर है कंजर्वेटिव, टोटल कंजर्वेटिव पैरेटोडेक्टमी। जब आपने नर्व बचा ली बिनाइन कंडीशंस के लिए, कि कब करते हैं? प्लूमोफिक एडिनोमा अगर डीप लोब में भी हो। ये पैरेटोड सर्जरी ऐसी है जिसमें आप पीसमील मैलिग्नेंसी में पीसमील निकालते हैं। इफ यू वांट टू सेव द नर्व, यू हैव टू रिमूव इट पीसमील। ओके, तो ये हो गई कंजर्वेटिव पैरेटोडेक्टमी। Total radical peritoneectomy, if the patient presents with facial palsy, if on imaging you have demonstrated that facial nerve is gone, then there is no reason for you to save facial nerve. अगर facial nerve को इस कॉज पे नहीं रखना है कि उसको डिजीज हो, क्यों? ये याद रखना है कि ये जब ट्यूमर छोड़ देते हो, ट्यूमर को पता है तुमने उसका बदसलूकी करी है, बदतमीजी करी है, उसको निकाल के बाहर फेंकने की कोशिश करी है, और वो दोबारा क्या करता है? बहुत तेजी से डेवलप होने लगता है और डिफरेंशिएट करता है। इतनी इंटेलिजेंस होती है इनके पास, सब होती है। तो तब डिफिकल्ट हो जाता है। तो कभी भी ट्यूमर के अंदर वहां पे ट्यूमर डिजीज नहीं छोड़नी है। बच सकता है तो रिसेक्ट कर बचा कर लेना है, नहीं बच सकता है तो सेगमेंटल रिसेक्शन करके उसमें केबल जंप ग्राफ्ट लगा सकते हैं, किसी भी नर्व का लगा सकते हैं। वहां पे मोस्ट कॉमन एक नर्व होती है, यस, क्रेटोरिकुलर। और कहां से ले सकते हैं? सूरल नर्व ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो छोड़ सकते हैं। और अगर पूरी ऊपर से नीचे से सारी नर्व बचाने की कोशिश करनी तो कौन सी नर्व बचानी है? बताओ बच्चों, पीछे बताओ, ग्रीन शर्ट चेक बताओ। अगर तुम्हें कोई नर्व बचानी है पूरे उसमें फेशियल नर्व में सारी ब्रांचेस, तो कौन सी नर्व बचानी है? कोई भी आइडिया दो ना, कौन सी नर्व बचाई जा सकती है? बताओ कौन सी नर्व है? यार आंख ज्यादा जरूरी है, मुंह टेढ़ा ज्यादा जरूरी है? तो इसमें जो ब्रांचेस है, इसमें आपको जो ज़ाइगोमेटिक है वो मोटर नर्व है ऑरिकुलरिस ओक्यूलाई मसल की, इसको बचाना जरूरी है। अगर बच जाए तो प्लीज बचा लें, क्योंकि अगर ये खुला रहेगा तो पोजोकेरेटाइटिस होगी, कॉम्प्लिकेशन होगी आंख की। ऑलराइट, इसको बचाना जरूरी है, अदरवाइज सारी नर्व बचाना जरूरी है। उसके बाद तीसरा प्रोसीजर आता है टोटल में, बड़ा लेक्चर, सॉरी। टोटल रेडिकल पैरेटोडेक्टमी में वंस यू मेड डायग्नोसिस, योर लाइफ बिकम्स इजियर, यू मेक फ्लैप, you go entirely just with the use of cortical exercise, everything, and then come back, and it takes very less of time. बचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, it takes lot of time and perseverance to save nerve. But if you are going, if you have pre-made diagnosis, you are convinced that there is involvement of the nerve, you simply have to cut in, and it takes less of time. And this is known as total radical periodectomy. And what is extended radical periodectomy? Besides, if it is a malignant lesion, besides if you are going to remove masseter muscle, besides if you are going to remove the mandible, ramus of mandible, hemimandibulectomy, this all, whatever you do, this becomes part of extended radical periodectomy. You have to notate it, you have to write it,
why did you remove it and what is the variation of surgery you did that. ये extended radical पेरिटोक्टमी कहलाती है, ये आपको पता होना चाहिए. एंड टोटल रेडिकल पेरिटोक्टमी में लिम्फ नोड डिसेक्शन भी आता है, क्योंकि अप टू 40% ऑफ द टाइम म्यूकोपेटेमल कैंसर वुड बी हैविंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लिम्फ नोड एंड एसाइनिक सेल एंड अदर हैव लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लिम्फ नोड, बट दे सर्टेनली डू इन्वॉल्व, और उसका प्रोग्नोसिस भी थोड़ा बहुत खराब इफेक्ट पड़ता है. मैनेजमेंट ऑफ ऑब्वियसली प्री ऑपरेटिव स्टेजिंग, ग्रेडिंग, इमेजिंग एंड देन सर्जरी. ये फेशियल नर्व की ब्रांचेस हैं, आपको बताइए क्या होती है फेशियल नर्व की ब्रांचेस, कौन बताएगा? हाँ झाऊ बताओ, उधर मत देखना, मेरी तरफ देखो. वेरी गुड. तो टू ज़ैंज़िबार बाई मोटर कार अगर याद रहे, ज़ैंज़िबार अफ्रीकन कंट्री, मान लो घूमने जाते थे, टू टेम्पोरल ज़ाइगोमेट्रिक, टेम्पोरल सप्लाइज व्हाट आशना? यस, ऑक्सीपिटल फ्रंटाली, फ्रंटाली सप्लाई करती है, ठीक, इस तरह याद रखना. और ये सप्लाई करती है ज़ाइगोमेटिक, ये सप्लाई करती है अपर बगल, सप्लाई करती है लिवेटेड एंगुलर, ये सब रैमस मंडिबुलाइज सप्लाई करती है डिप्रेशन एंगुलर, और उसके बाद एक मसल सप्लाई करती है, को सप्लाई करती है प्लेटिस्मा को. यू कैन कट विद इम्प्यूनिटी, कट विद नोबडी टेक्स केयर ऑफ इट. उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि इसमें रैमस मंडिबुलाइज को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है. इट इज वन ऑफ द थिनेस्ट नर्व. इसकी इंजरी में रिकवरी भी सबसे कम होती है. ये डीप फेशिया सबमैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर चिपकी होती है. इसके लिए आप एक मैन्यूवर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हेड मार्टिन मैन्यूवर. आपने अगर आरटीएल बंडल को उसको ऊपर डिसेक्ट करके फिक्स कर लिया, फ्लैप तो बच जाती है. दूसरा, ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन के ऊपर से आती है, दैट इज हाउ यू कैन फाइंड इट आउट. तो तभी अब मॉडिफाइड ब्लेयर इंसिजन लगाते हैं, तो एंगल ऑफ मैंडिबल से 2 सेंटीमीटर नीचे लगाते हैं कि अगर ये डिप भी कर रही हो तो इंजर ना हो. ये एग्जाम्पल है फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट का, मैलिग्नेंसी का, ठीक है. ये कॉर्नलेस, ये कॉर्नलेस अब जिंदा थे, अभी कुछ दिन पहले तक जिंदा थे, 8-10 साल पहले मरे होंगे. तो टेगल पॉइंट कॉर्नलेस पॉइंट है 1 से 1.5 सेंटीमीटर. पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक तो कंसिस्टेंट लैंडमार्क, इससे राइट एंगल पे एग्जिट करती है नर्व. तो कभी नहीं मिल रही तो पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक को डिसेक्ट कर सकते हैं, काट के नीचे गिरा सकते हैं. टिम्पैनोमेस्टाइड सूचर, जहाँ पे आपको मेम्ब्रेनस और बोनी कार्टिलेज कैनाल मिलती है, वहाँ पे ढूंढ सकते हैं. तीसरी बात, पेरिफेरल ब्रांचेस रिट्रोग्रेड मेथड से ढूंढ सकते हैं, इसमें इंजरी की चांसेस ज़्यादा होती हैं. चौथी होती है मेस्टाइड प्रोसेस को डिसेक्ट करेंगे, इसके अंदर फेलोपियन कैनाल में आपको नर्व मिल सकती है, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है. और ये एग्जिट कहाँ से करती है? कुछ लोग वो भी बता देंगे, सर वो भी देख सकते हैं. कौन सा? स्टाइलोमेस्टाइड फोरामन के मीडियल लैटरल पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टरोलैटरल निकलती है, तो उसको फील करना मुश्किल होता है. एनीवे, ये नर्व दिख रही है ट्यूमर में, दिस इज द नर्व. अच्छा, फेशियल नर्व पैलिसी काफी कॉमनली होती है, तो किस किस डिजीज में होती है? पोलरी डिफरेंशियल कैंसर में देयर इज 23 to 26% ऑफ द चांस. देन एड्रेनल सिस्टिक कार्सिनोमा फॉलोड बाय कार्सिनोमा एडेनोमा, म्यूकोपेडिडर्माइड एंड साइनिक सेल कैंसर. इनमें, इन ग्रुप ऑफ डिजीज में फेशियल नर्व पैलिसी करके डिजीज का प्रेजेंट कर सकता है. तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट फेशियल नर्व पैलिसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द पेशेंट एंड केसेस, बट यस इट इज प्रेजेंट वेरी कॉमनली. ठीक, देख लें. तो स्टेप्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. ये आपने इंसिजन मार्क की, मॉडिफाइड ब्लेड बिल्कुल कॉर्नलेस. यहाँ पे क्या करते हैं, अगर वहाँ पे ये उनको करते हुए देखिए कभी जतिन शाह को, ही इट गोज वेरी राइट फ्रॉम हियर. यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी होती है, उसकी इंजरी हो जाती है. तो यू हैव टू गो राइट फ्रॉम हियर एंड देन यू लिफ्ट इट अप लाइक दिस एंड देन यू मार्क इट एंगल ऑफ मैंडिबल समवेयर हियर, यू गो हियर एंड दिस कैन इंक्रीज. ठीक है. एंटीरियर फ्लैप, पोस्टीरियर फ्लैप, बाउंड्रीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नर्व, और ये सारी चीजें करते हैं. ये कैसे प्ले करेगा? कैंटिलीवर बनाते हैं, जहाँ पेरिटोइड का बनाते हैं, उसके लिए स्टर्नोमेस्टाइड तक बनाते हैं. उसके बाद नीचे डिसेक्ट करते हैं. ब्रेन की सेटिंग एज मच लो एज पॉसिबल, कुछ भी चीज नहीं निकलनी चाहिए. कोशिश करिए कि आप बाइपोलर यूज करिए, हार्मोनिक यूज किया, बाइक्लिन यूज किया, व्हाटएवर कम्स बिटवीन इज गॉन फॉरएवर. दूसरी चीज, थायराइड सर्जरी करें, जहाँ पे नर्व हो उसको ट्रैक्शन नहीं देना है, खींच खींच के. ऐसे करते तो देखने के लिए अपनी तो पूरा टिश्यू अपनी तरफ उठा के ले जाते हैं, वो नहीं करते. यू डोंट हैव टू डू इट बिकॉज इट विल बी एनाटॉमिकली इंटैक्ट बट इट विल बी गॉन, फंक्शनल इट विल बी गॉन. ठीक है. तो ये हम कर रहे हैं. वहाँ कर नीचे कभी कभी कोल्ड डिसेक्शन कर लिया, नर्व लगा लिया, वहाँ पे कोल्ड प्रेस रख दिया, ये ब्लीड करता है, हाइपोटेसिस यूज कर सकते हैं. ऑफ 90, तो क्या होगा, ब्लीड. ठीक है, ये ब्रांचेस दिख रही हैं.
तो सारी ब्रांचेस सुबह ऊपर से दिख रही हैं, ज़ाइगोमेटिक टेम्पोरल और सर्वाइकोफेशियल, और इसके अंदर कनेक्ट होती है, उसको बोलते हैं पेसेंसराइनस गूज वेब. इसकी इंपॉर्टेंस इतनी होती है, टू save these branches also, which is difficult to save. It is said the nerves talk to each other, and injury of one nerve can be compensated by the branches of pesencylinus. Okay, suction, drain. This is superficial peritoneum. You can do. इसमें हालांकि total होगी suction, drain, radiation, malignancy, lymph nodes more than 4 centimeters. This all holds true for this also. Complications: phase nerve, facial phase syndrome, numbness of the ear. माइक की बात करते पता इतना खत्म ही हो रहा है. Thank you. Facial nerve injury, face syndrome, numbness of the ear, salivary fissure, xerostomy, so you all know it. House Brackman, बस ये याद रखो कि what is important is that whenever you are going to do this surgery for benign disease, this information is important. You record it because there are certain number of patients, those who have already some kind of injury and palsy beforehand, and when you do surgery, it becomes pronounced that they will blame you for the surgery. तो ये याद रखना है कि अगर ये grading आपने करी हुई है, कुछ पेशेंट्स में कुछ सबसेट ऐसे होते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम होती ही शुरू से, मुंह टेढ़ा होगा, बैठे होंगे और रिलैक्स स्टेट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही सर्जरी करी प्रोनाउंस हो जाएगा, तो उसमें ध्यान रखना है. नेक डिसेक्शन मैंने आपको सबको बता दिया, हाई ग्रेड ट्यूमर्स हैं, तीनों में कभी कभी लिम्फ नोड होता है, उसमें कर सकते हैं, विजिबल लिम्फ नोड होगा तो कर देंगे. एक्स्ट्रापैरेटरी एक्सटेंशन, T3 T4 डिजीज एंड रेडिएशन की इंडिकेशंस क्या हैं? पॉजिटिव मार्जिन, लार्ज साइज, रेकरेंस, हाई ग्रेड. सर्विलेंस जस्ट लाइक हेड एंड नेक सर्जरी, हर 3 महीने में पहले 2 साल तक, फॉलोड बाई 3 to 6 months नेक्स्ट 2 years, एंड देन ईयरली एवरी ईयर. Prognosis: majority of the tumors behave well, but if there is metastatic disease, prognosis is very bad, as bad as oral cancer. Conclusion: knowledge of anatomy, role of cytology, role of two-cut biopsy, imaging, and correct decision making is important. Thank you. Sorry for exceeding my time. Thank you, sir, for your very illuminating talk. May I request Dr. Avnish Kumar sir to please hand over sir the memento. In the program, we have a clinical case presentation by our resident Dr. Rajat. I request Dr. Abhinav Arun sir and Dr. Jay Kumar sir, who is from the Department of Surgical Oncology, the head of the department, and is a highly qualified and experienced surgical oncologist. I request sir to please chair the session. Morning, sir. तुमने बगल में कौन कैसे बैठा दिया? हेलो
Good afternoon to all respected dignitaries of the dais. Myself and my colleague will be presenting a case on oral cavity malignancy. Hello. So, my patient, a 70-year-old male. A 70-year-old male, known diabetic, a known BD smoker for past 25 years and a known quid chewer for past 35 years, presented with painless ulcerative growth in the inner aspect of left cheek since 3 months. Now, in the history, there was no history suggestive of local or distant spread. Now, this is the facial profile. We can see that externally there is facial symmetry is maintained. The skin is, there is no involvement of the skin, the lips appear normal, and mouth opening is adequate, 3 finger width. And there is no loss of sensations in on the face or on the chin. Now, coming to the lesion proper, now this is the ulcer of proliferate centimeters, 3 centimeters from the anterior commissure on the left side, posteriorly extending up to the retromural trigone, superiorly 2 centimeters from the upper GB sulcus and inferiorly involving the GB sulcus. The margins are rolled out. There is necrotic slough present over it, and it doesn't bleed on touch. On the neck examination, we can see, we couldn't identify, but on palpation there is a small 1 cross 1 centimeter lymph node firm, palpable in left level 1B. And this is how it's described. Anything else you'd like to add in this examination? So, on palpation, you have to see a couple of more points. No, not mobility. First thing you have to see underlying induration. You see the ulcer, you cannot see the underlying infiltration. So you have to see the induration, how far it is from the ulceration. Is it confined to the ulceration or it's beyond the ulceration? Okay. Supposing you see this ulcer and the induration right up to the upper GB sulcus. Okay. So that is the infiltrative lesion. And secondly, you have to see physically whether the skin is pinchable over the tumor or not. Then only you can say the skin is free. Sometimes the skin is free, but it is tethered to the lesion. Understand? What is the significance of that? It comes in the management. You have to excise that skin actually. Because when the skin is tethered, that means the buccinator muscle is involved. If the buccinator muscle, that is actually a plane of resistance. Okay, if the buccinator is not involved, it's a plane of resistance, means that you can take that as a deep margin. But if the buccinator is involved, then you have to remove the skin also, because you do not get a deep margin. Okay? Symmetry is maintained, sensation, तो थोड़ा सा elaborate कर दें, क्यों देखने की कोशिश करी? Why did you want to see symmetry, sensation, lips, oral cavity? थोड़ा एक लाइन में जल्दी बता दें. Sir, if the tumor infiltrates the inferior mandibular nerve, there is usually loss of sensation over the chin region. So by having that, we can confirm that there is no involvement. Facial asymmetry overall, we are just trying to prove that there is no cranial nerve involvement, or maybe in that sense, if little far-fetched neural cancer normally कहाँ होता है? Skin की तरफ अगर involve होता है तो we can see bulging होता है तो bulging or a swelling. हाँ ठीक है, facial nerve symmetry मतलब facial nerve involvement से थोड़ा ज़्यादा बेहतर है कि disease
इस T4 या बड़ी बाहर निकल रही है. Nerve palsy is very rare in oral Very cancer, rare, very ultra rare. Nerve palsy का मतलब सब स्कल पे जाके हो रहा था, तो कुछ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज काम मिलती है. ठीक है, आगे. So, sir, our provisional diagnosis is a 70-year-old diabetic man, known BD smoker for past 25 years and quit smoke consumer for 35 years with painless progressive ulcerative lesion in the left buccal This is mucosa. not the diagnosis. This is summary actually. Your diagnosis will be CA, left buccal mucosa, CT2N1M0. That is the diagnosis. That is all. Okay. Sorry, sir. And this is not diagnosis. So why not it is squamous cell cancer of the buccal mucosa or GB cell cancer? Actually, the diagnosis histopathological is. Squamous cell carcinoma saying per तो se is a मतलब ये नहीं pathological बोलना है एग्जाम में diagnosis. कि इसका मतलब होता है, लेकिन वो पैथोलॉजी की डायग्नोसिस को नहीं बोलना है, क्लिनिकल डायग्नोसिस बोलना है. तो हमेशा यू हैव टू स्पीक अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, नॉट अ पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस. ठीक, नेक्स्ट. तो अब इसमें आता है व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ, कैसे अप्रोच करेंगे. So first we proceed with माइक लेके बोलो तो उनको भी पीछे को सुनाई पड़ना चाहिए ना. बच्चों तुम लोग आगे आ जाओ, खाली है जगह को, जो पीछे से आ रहे हैं आगे आ सकते हैं, जगह खाली है. Sir, first we take the biopsy of the representative area and confirm the diagnosis histopathologically. Then, sir, lymph node is palpable. We can take FNAC of the lymph node also because to know nodal status also. And if biopsy came to be positive, then we can go with the radiological imaging. No, you have any doubts about it, it's negative. Before a biopsy actually means you have missed it, you have to get some blood investigations done. Yes, sir. You get a CBC, you get viral markers, you get PTINR. No. Supposing he has a bleeding tendency, it keeps bleeding, it won't stop. Okay, you need viral markers before a biopsy. तो स्टैंडर्ड जो हम लोग करते हैं वो तो करना ही करना है, वायरल मार्कर. उसके बाद जो स्पेसिफिक टू ये हिस्टोपैथोलॉजी करनी है, हिस्टोपैथोलॉजी इज मस्ट. ओके, उसके बाद इमेजिंग प्लेज अ रोल. So you have got a squamous cell carcinoma. Now what? Sir, now we can do CT scan of the CCT of the face and neck, sir, to know the extent of the disease. What is the indication of CT in this case? What do you want to see in a CT scan? Sir, involvement, the tumor, extent of the tumor and involvement of the mandible also we can see in the CT scan. Okay, so what is significance of mandible involvement? Sir, हाँ बोलो बोलो को सही जा रहा है, बोल रहा है. सर डिसेंट अपना थेरेपी सर्जिकल अप्रोच में डिफरेंट. Sir, it will change our management. The surgery planning of surgery will change depending on how much mandible is involved. तो दो सिचुएशन हो जाती है, एक में मैंडिबल इन्वॉल्व नहीं है. पहले तो पता कैसे चलेगा मैंडिबल इन्वॉल्व ऑन इमेजिंग? वी वुड नीड टू नो. एंड when you know that whether the mandible is involved or not, then there are two things. Say one approach is the mandible is not involved, क्या करेंगे? When mandible is involved, क्या करेंगे? तो पहले तो बताओ what would be the radiological feature of on CT scan, पता चलेगा कि mandible is involved. हाइपोटेनिटिंग लीजन कॉर्टिकल ब्रीच हो सकता है सर, हाइपोटेनिटिक लीजन हो सकता है, फ्रैक्चर दिख सकता है सर. Sir, initially in very initial stages, it presents as two ways. One is infiltrative, the other one is erosive. So in initially infiltrative stage, we can see that there is periosteal discontinuity, there is elevation of the periosteum. Yeah. Eventually when the disease progresses, there is erosive stage. In that we can see hyperattenuating soft tissue, hyperattenuating lesion in the bone and occasionally leading to. तो नहीं है तो क्या अप्रोच होगी, और होगा तो क्या अप्रोच होगी? Sir, if mandible is not involved. In this mandible is not involved, so what will you do? Sir, keeping the oncological principles, we have to take 1 centimeter margin. If we are able to get 1 centimeter margin without resecting the mandible, we will not touch. Is it possible in this case? It is not possible in this case because. So that is the reason I asked what is the indication of CT in this case? Segment. To decide between segmental versus marginal mandibulectomy, CT will help. Is a marginal possible in this case? Yes, sir. Yes.
If it is in, see, there are two situations. He is saying it is very much visible, and in any way you're going to, because you have to do an arterial resection, you have to do limited dissection of the mandible. Now, if in a situation where mandible seems to be involved, what will be the extent of resection of mandible? In a situation where mandible is not involved, but part of the arterial section, what would be the extent? What would be the extent of mandible resection? This is his question. यही है ना? Sir, we may need, the imaging will help us if we are able to take 1 centimeter margin, and after taking that the ramus still has a 1 centimeter inferior margin, we will consider for marginal mandibulectomy. If we are not able to, if we are able to sacrifice so much of the mandible that we are not able to get inferior 1 centimeter margin, it is better we go for segmental mandibulectomy. In this you have shown that the sulcus is involved. So will you get a deep 1 centimeter margin, medial? No, sir, no, sir. So why will you go for a marginal mandibulectomy? That is the question. तो the answer to this question lies in कैसे करेंगे? Look, there are two things. One is a mandible is totally free, the tumor is away from the mandible. Okay? And one is the mandible is free, but the tumor is abutting the mandible. So there are two situations. So in this condition, the tumor is abutting the mandible. Is it not? It's most probably not involving the mandible. So in this situation, you will have to do a segmental. You cannot do a marginal. Marginal is done when there is small gap between the tumor and the mandible, at least a half centimeter margin. Then you can go for a marginal one. If it is abutting the mandible, you cannot do a marginal in that. You will get a positive margin. तो अभी इसमें क्या है, मैंडिबल में रैमस ऑफ मैंडिबल होता है, तो यहाँ पे सेगमेंटल मैंडिबुलेक्टमी वैसे करना मुश्किल होता है, नहीं करते हैं यहाँ पे. हेमी जब भी करेंगे रैमस निकालेंगे तो हेमी बन जाती है, वो पार्ट ऑफ स्पेसिमेन हो जाएगा. तो फंक्शनैलिटी इस एस्पेक्ट पे कभी नहीं छोड़ी जाती कि आर्टेरियो डिजीज, वो फंक्शनैलिटी पहले आर्टेरियो डिजीज है, दूसरा एस्पेक्ट है फंक्शनैलिटी, तीसरा है कॉस्मेसिस. तो पहले आर्टेरियो डिजीज देना है, ठीक है. और कुछ? What will you do for the neck? Sir, MR and we can do modified radical neck dissection in this patient. You know the 3 types of MRND? Yes, sir. So what type will you do in this? Type 3. Sorry? We preserve all that. Sir, usually that is surgeon's discretion per se, but in our You are a surgeon, is it not? Sir, we usually, what our seniors have taught us, that we usually go for type 2. We sacrifice the sternocleidomastoid, sir, because some of lymph nodes are under surface of the sternocleidomastoid. They can be left behind, and we really don't want that. So we usually go for type 2. No, we sacrifice the You sternocleidomastoid. can always go for type 2. There is another reason for doing type 2 in this case. That is, how will you reconstruct the patient? How will you reconstruct the patient? भाई रिकंस्ट्रक्शन में या तो पेडिकल फ्लैप लगेगा या फ्री फ्लैप लगेगा. Pedicle flap. पेडिकल फ्लैप लगेगा तो रिकंस्ट्रक्शन में इफ यू रिमूव, Sir, because we are also taking a bone, it's better we first go for a free वहाँ flap. पे एक्चुअली मुझे नहीं लगता है कि उनको अगर हेमी मैंडिबुलेक्टमी कर देंगे, रैमस के पास से काट देंगे डिटोमल ट्राइगोन तो मोस्ट ऑफ द मैंडिबल विल बी प्रिजर्व्ड, उनको रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस केस में खास कर. Look, in the exam, what you can say is that I will go for a free fibula graft. Okay, you can say anything. You tell the best thing possible. You're not going to do it, but you should say the best thing possible. So you can say I will go for a free fibula reconstruction, which will include the mandible and the soft tissue reconstruction. And supposing you have had examiner ask you, do not have the facility for that, then I'll go for a pedicle flap, local, which will be which one? Pectoral. Major myocutaneous. PMMC flap. Okay, for putting a PMC, you will have to remove the sternocleidomastoid anyway. Is it not? Yes. Okay. Anything else? So your final histology is again T2 N1, 1 node positive, no extranodal extension. Is there indication for radiotherapy, adjuvant treatment? Sir, adjuvant radiotherapy. Required? Not required. Yes, sir. Why? Node. Sir, node positive आया था sir. No, for single node positive there is no indication. Okay, if you have done MND,
Single node positive, no extranodal extension, RT not required. It is N1, okay, not N2 or N3. Okay. If there are two nodes positive, then there is indication for adjuvant radiotherapy. Unless you have done an SOND, supraorban neck dissection. Okay. You have done a supraorban neck dissection, one node positive. What are the alternatives? You have two alternatives. What? Sorry, sir, can you please repeat? Question is that if one of the lymph node is positive, After a supraorban neck dissection, one node is positive. What are the alternatives you have now? Sir, we can go for radiotherapy. Yes, one is radiotherapy, second is completion neck completion neck dissection MRND उसी समय अगर further में पता चल जाता है MRND करते हैं. If you do not want to give RT, you can always, the patient agrees, you can always go for completion neck dissection. Complete the neck, do an MND. Okay? Or you can ask some question if you want. You can also ask questions. पीछे से जो बैठे हैं बच्चों वो लोग बताते पूछ सकते हैं. See, question is whether one important question would be whether would you in a small lesion would you go for neck dissection or not. तो उसमें एक depth of invasion पहले चलता था, अब तो वो staging में आ गया है. तो staging में depth of invasion is new in AGCC 8, number 1. And any disease where the possibility of neck involvement is more than 50%, you always do some kind of neck dissection. तो elective neck dissection scores over therapeutic neck dissection जितना याद रखना. Therapeutic means जब neck आ गया तब कर रहे हैं. तो अभी आज तारीख में clinically N0 है तो भी neck dissection कुछ ना कुछ करना है. You have to limit it. Supraorban neck dissection. Supraorban neck dissection कर लिया, उसमें कोई भी नहीं आया. It is as good as survival benefit. तो compared to therapeutic neck dissection, it's survival benefit है. Thank you, thank you, sir. If this patient presents with इसमें एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अभी पेशेंट की माउथ ओपनिंग अच्छी थी, फिर अगर मान लो टिस्मस करके प्रेजेंट करता है तो क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या समझ में आता है आपको? बहुत खतरनाक जगह पे है ये. अगर ये थोड़ा सा एंटीरियरली होता तो छोटा काम करना पड़ता, पोस्टीरियरली ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट काम करना पड़ेगा. तो टिस्मस करके प्रेजेंट करेगा तो क्या कहेंगे? Sir, it has probably involved laterally involving the pterygoid plates, involved the सीधे टेरिगोल प्लेट में थोड़ा masseter muscle, sorry. उसने मीडियल टेरिगोल लेटर टेरिगोल इन्वॉल्व कर लिया है. तो उसमें ये पता होना चाहिए कि टिस्मस could be a function of because of involvement of the pterygoid and masseters. तो उसमें तो अगर इन्वॉल्व है तो उसमें 100% हेमीमेंडिबुलेक्टमी करनी है, रिसेक्शन करना है. दूसरा कंसेप्ट ये है कि then imaging, role of imaging once again comes into play, and you will have to see whether the trismus is not because of disease gone in the infratemporal fossa and above the sigmoid notch. अगर उसके ऊपर है तो नहीं करना, उसके नीचे है sigmoid notch के नीचे तो कर सकते हैं रिसेक्शन और रिसेक्शन, है ना. वो उस कंडीशन में trismus में उसकी रोल है इमेजिंग. There could be three reasons for trismus. One is plain SMF, second could be involvement of masseter, and third could be involvement of pterygoids. There are three reasons why this you would have to confirm by either a CT scan or clinically. Tumor in the RMT, it's most probably due to involvement of pterygoids. Tumor little anterior like in this, it may be due to involvement of masseter. Or if the patient has SMF, you can see the opposite buccal mucosa. If it's a hard white mucosa, then it's due to most probably due to SMF. Okay, there are three reasons for that. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So may I please request Dr. Abhinav Sonkar sir to felicitate Vijay Kumar sir. Move on to breast surgeries, and cancer, and this will be conducted by Dr. Pooja Ramakant ma'am. Ma'am is a professor in the Department of Surgery in KGMC. She's been awarded the certificate of eminence in research for publication. She's also the honorary secretary of the Indian Association of Endocrine Surgeons.
Hello, good morning everybody. So this is more like a question answer session. You people have to be more proactive and answering to enjoy the session. ठीक है, इसमें कोई theory नहीं है. It is just case based. Just I want to see your understanding and जहाँ पे you have a doubt, so I can clarify that part. So session will go that way only. So we will be talking on early stage breast cancer. So how do you define early stage? पहला question ये आता है. So TNM wise, what all you include in early stage? बताइए. T3 N0 तक. So T1 N0 M0, T2 N0 M0, T2 N1 या T1 N1 M0, T3 N0 तक. ठीक है. T1, T3 N1 onwards it becomes locally advanced. So early stage में you have lot of choices to offer to the patient, plus lot of choices in surgery, lot of choices in management part like chemotherapy, radiation, hormonal therapy, और उसका sequencing कैसे करना है that you have to make the call. How do you history में क्या क्या चीज़ें important है? Family history is important. Why family history is important? जेनेटिक म्यूटेशंस के लिए एंड प्लस टू प्लान की पेशेंट का इंडेक्स, जो पेशेंट जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है फैमिली में, दैट फर्स्ट आइडियली उसका होना चाहिए जेनेटिक म्यूटेशन, वो पॉजिटिव है तो यू प्लान फॉर द सीक्वेंस कि उसकी डॉटर है या सिस्टर्स हैं या सन है, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है. ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली कि डॉटर्स का ही करना है. तो जेनेटिक वर्कअप आप कर सकते हैं इफ़ पेशेंट कैन अफोर्ड इट, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, फीजिबल और जेनेटिकली अगर इंडिकेटेड है. वैसे इंडिकेशंस क्या हैं जेनेटिक वर्कअप के एज पर गाइडलाइंस? किसके होने चाहिए जेनेटिक टेस्टिंग? नहीं, कब करना है? फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स तो नहीं, पहला सबसे पहले इंडेक्स का करना है. इंडेक्स पॉजिटिव है तब आप फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स का करोगे, बट कब करना है? सब में करना है, किसी पर्टिकुलर सबसेट ऑफ पेशेंट्स में करना है? हाउ डू यू मेक दैट चॉइस? अगर आप देखें एज पर गाइडलाइंस ऑल पेशेंट्स विद ब्रेस्ट कैंसर लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज सबका होना चाहिए या सारे ट्रिपल नेगेटिव्स का होना चाहिए. ठीक है, बट क्यों नहीं हम कर पाते हैं? कॉस्ट इज़ अ प्रॉब्लम प्लस अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी इज़ अ प्रॉब्लम. तो प्राइवेट लैब्स में अवेलेबल है, नॉट इन एवरी सेंटर लाइक अ मैमोग्राम इट इज़ अवेलेबल, और इट इज़ नॉट दैट चीप दैट इट इज़ अवेलेबल एंड पेशेंट कैन फ्रीली अफोर्ड इट. तो फैमिली हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट. और हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है? पास हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन है इम्पॉर्टेंट. और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जस्ट टू नो द मेनोपॉजल स्टेटस. ओके. अदर कैंसर्स ऑल्सो, तो सिंड्रोमिक एसोसिएशंस हो सकते हैं, मल्टीपल कैंसर्स हो सकते हैं. ठीक है, एग्जामिनेशन में क्या है इम्पॉर्टेंट आपका? हाउ डू यू लेबल इट कि ये अर्ली स्टेज है? स्किन इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, चेस्ट वॉल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, लिम्फ नोड्स मोबाइल हो, N1 हो या N0 हो. ठीक है, व्हेन डू यू से N1? मोबाइल है क्लिनिकली, और इप्सिलैटरल बाइलैटरल दोनों तरफ हो सकते हैं. क्या एनी लिम्फ नोड विच आई कैन फील इन द एक्सिला बिकम्स N1? लेवल 1 नहीं, लेवल 1 सबके फील हो सकते हैं, कोई लीन थिन है उसका भी नॉर्मल लिम्फ नोड भी हो सकता है. बट व्हेन डू यू से N1? क्योंकि अब क्या है कि आपको N0 और N1 में डिफ्रेंशिएट करना है. फर्म टू हार्ड हो कंसिस्टेंसी में मोर देन 1.5 सेंटीमीटर्स अगर एक्सिला में लिम्फ नोड है, देन यू मे से N1 क्लिनिकली. क्लिनिकली ऑल्सो इंक्लूड्स द इमेजिंग पार्ट ऑल्सो. सो मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड में भी इफ दे से कि नोड लुक्स टू बी सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व्ड और मेटास्टैटिक, दे से N1. आपका क्लिनिकली भी N1 है तो फिर यू से एज N1, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है. क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज नॉट वेरी एक्यूरेट. ठीक है, समवन हु इज सेइंग N1, वो इमेजिंग पे इट कैन बी N0. सो यू हैव टू डू एन FNAC ऑफ दैट नोड टू कन्फर्म कि वो रिएक्टिव नोड है या जस्ट नॉर्मल लिम्फ नोड है या वो मेटास्टैटिक इन्वॉल्व लिम्फ नोड है. वी विल कम टू इट व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन आपका इंपॉर्टेंट है, लंप का साइज टू डिसाइड इट, और कोई स्किन इन्वॉल्वमेंट नहीं है बिकॉज दैट मेक्स इट LABC. सो अब वर्कअप में क्या क्या कराएंगे?
ट्रिपल असेसमेंट गुड, उसमें क्या होगा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमारा पहला पार्ट हो गया कंपोनेंट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री टेकिंग, रेडियोलॉजी और ब्रेस्ट पैथोलॉजी। रेडियोलॉजी में क्या कराएंगे, USG with mammogram. Mammogram is the basic screening tool. You have to do it. अगर dense breast आता है, जैसे बायरेट 0 है, you have to, ultrasound is added in mammogram as per the standard protocol in most of the centers. Like here also, आपको अलग से mammogram के साथ में ultrasound लिखना नहीं पड़ता. They do it, but some places they don't do it. So you need to have ultrasound along with the mammogram. But ultrasound alone is not good enough to diagnose. अगर डेंस ब्रेस्ट है, दे में से एडिशनल इमेजिंग इज नीडेड, अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है ठीक है, गुड इनफ, नहीं दिख रहा है, देन यू हैव टू गो फॉर द ब्रेस्ट, डेंस ब्रेस्ट में MRI, ठीक है। तो MRI इज डन इन वेरी सेलेक्टेड फ्यू, नॉट इन एवरीबडी। मैमोग्राम इज द बेसिक स्क्रीनिंग टूल, वो सब में होना है, दैट सेज डेंस ब्रेस्ट, देन यू हैव टू मेक दैट कॉल कि MRI कराना है नहीं कराना है, व्हाट कॉल्स यू मेक, डिसीजंस यू मेक, ठीक है। तो ये हो गया रेडियोलॉजी का। पैथोलॉजी में क्या करना है, ट्रू कट बायोप्सी करना है और FNAC ऑफ द नोड, अगर एक्जिला में नोड है, इप्सिलैटरल, बाइलैटरल, सर्वाइकल, कहीं पे भी लिम्फ नोड्स इफ यू फील सिग्निफिकेंट तो वो कराना है। कई बार ऑपोजिट एक्जिला में मेटास्टेसिस हो सकती है, ठीक है। तो अगर इफ़ यू फील सिग्निफिकेंट है देन यू हैव टू चेज इट। क्लिनिकली पैल्पेबल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, यू कैन डू इट अल्ट्रासाउंड गाइडेड और यू कैन डू इट ब्लाइंड FNA, डिपेंडिंग की साइज़ क्या है एंड हाउ यू चेज इट, ठीक है। और क्या वर्कअप कराना है, ट्रिपल असेसमेंट हो गया। कोर बायोप्सी में क्या क्या चेक करते हैं, अलॉन्ग विद IHC में ERPR, KI67 और HER2/neu, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें मिनिमम है, ये स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए टू मेक दैट डिसीजन प्रोटोकॉल की हाउ डू यू प्लान इट। तो ये हो गया। और क्या वर्कअप होगा, दिस इज़ अ डायग्नोस्टिक वर्कअप। आपने डायग्नोस कर लिया ब्रेस्ट कैंसर है, अर्ली स्टेज है, अब पेशेंट का आपको सर्जरी प्लान करना है, आप क्या कराएंगे, NACT कीमोथेरेपी के लिए बोल रहे हैं, नहीं क्योंकि अर्ली स्टेज है, विल कम टू द ट्रीटमेंट। मेटास्टेसिस वर्कअप करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। अब इसमें क्या है कि यू मेक दिस कॉल बेस्ड ऑन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जो अर्ली स्टेज है 90% दे मे नॉट मेटास्टेसाइज, 5% रिस्क ऑफ मेटास्टेसिस होता है। या इफ़ पेशेंट इज़ कंप्लेनिंग इन द फर्स्ट सिटिंग इटसेल्फ कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है डाइजेशन में या कुछ आपको लग रहा है जॉन्डिस क्लिनिकली कुछ लग रहा है, तब फिर आप मेटास्टैटिक वर्कअप कर सकते हैं। बट लोकली एडवांस में 50% हायर चांस ऑफ मेटास्टेसिस है, तो यू विल डू मेटास्टैटिक वर्कअप इन ऑल लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर्स। बट अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर्स में यू डोंट हैव टू डू, इट इज़ नॉट मस्ट। इट इज़ इफ पेशेंट इज़ वेरी एंशियस एंड पेशेंट वांट्स कि मेरा मेटास्टैटिक वर्कअप करो, तो यू मे डू इट, अदरवाइज you don't have to do it as a routine for every patient. So surgical fitness के लिए जो आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, जो टेस्ट कराते हैं वही आप बस साथ में कराएंगे, CBC, LFT, KFT, वायरल मार्कर्स, वो सब चीज़ें, कोएगुलेशन प्रोफाइल, चेस्ट एक्सरे, ECG आप कराएंगे फ्रॉम द एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू। कार्डियक फिटनेस है, somebody has problems in the USG abdomen में कुछ है तो आप करा सकते हैं, बट मेटास्टैटिक वर्कअप इज़ नॉट रूटीनली रिकमेंडेड इन अर्ली स्टेज। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए आई एम जस्ट डिस्कसिंग द बेसिक्स सो दैट बेसिक्स है वेरी क्लियर टू यू, बिकॉज नेक्स्ट सेशन यू हैव लोकली एडवांस, दैट इज ऑल डिफरेंट प्रोफाइल। किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, रेज हैंड्स एंड डिस्कस एट दैट टाइम इटसेल्फ, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में क्या है, यू हैव मेनी चॉइसेस, चॉइसेस डजंट मीन यू हैव कन्फ्यूजन्स। सो यू हैव सर्जरी ब्रॉडली, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी। अब हाउ डू यू सीक्वेंस इट कि हम पेशेंट का पहले क्या करेंगे, ठीक है। यू हैड सेड न्यू एडजुवेंट NACT हमें तब देना है जब किसी का, अब क्या है कि आपको ब्रेस्ट टू ट्यूमर रेशियो का डिसीजन लेना होगा। अगर किसी का स्मॉल ब्रेस्ट है एंड ट्यूमर साइज इज 5 सेंटीमीटर्स और 4 सेंटीमीटर्स एंड यू थिंक कि बिग डिफेक्ट विल हैपन इफ यू डू कंजर्वेशन, तो यू मे डू न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी फर्स्ट, डाउन स्टेज इट एंड देन डू सर्जरी। बट अगर कोई अर्ली स्टेज है, ERPR पॉजिटिव है, यू कैन डायरेक्टली गो विथ सर्जरी फर्स्ट, followed by adjuvant chemotherapy, radiation therapy, plus minus hormonal therapy उसके बाद में, ठीक है। अगर आपको डाउन स्टेज करना है देन यू मे गो फॉर कीमोथेरेपी फर्स्ट, ठीक है। और अब क्या है कि रेडिएशन आपका बाद में है, हार्मोनल थेरेपी बाद में है, सो दैट इज़ द डिसीजन लेटर ऑन।
सर्जरी में क्या है, नाउ यू हैव मल्टीपल चॉइसेस. अर्लियर यू हैड जस्ट MRM मैस्टेक्टमी सबके हो रहे थे. फिर हाउ थिंग्स इवॉल्व, वी केम टू ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरीज. अब ब्रेस्ट की सर्जरी सेपरेट है, एक्जिला की सर्जरी सेपरेट है. ठीक है, वी फोकस ऑन ईच पर्टिकुलर थिंग सेपरेटली. ब्रेस्ट कंजर्विंग में क्या प्रॉब्लम्स आए कि जब हम बिग डिफेक्ट्स निकाल रहे हैं तो उसमें डिफेक्ट आ गया, उसमें गड्ढा आ गया, तो कॉस्मेटिकली इट वाज नॉट लुकिंग गुड. रेडिएशन दे दिया, वो और ज़्यादा फाइब्रोज्ड हो गया. तो टू हैव कॉस्मेटिक आउटकम एज गुड एज ऑन्कोलॉजिकल सेफ्टी, कि आपके मार्जिन्स नेगेटिव हैं, ऑन्कोलॉजिकली इट इज़ सेफ, प्लस कॉस्मेटिकली वो गड्ढा ना आए, तो यू स्टार्टेड डूइंग ऑन्कोप्लास्टी. तो अब ऑन्कोप्लास्टी भी ऐड हो गया है. ऑन्कोप्लास्टी में आप जस्ट इधर से साइड से फ्लैप्स या फैट रोटेट करके डाल सकते हैं, इसमें मसल्स नहीं ले रहे हम. या सेकेंड वर्जन है जिसमें कि आप फ्लैप रिकन्स्ट्रक्शंस कर सकते हैं. मोस्ट कॉमनली यू टेक द LD फ्लैप्स, तो उसमें मसल भी आप ले रहे हैं एंड यू रोटेटिंग इट. फिर ऑपोजिट ब्रेस्ट सिमेट्राइजेशन भी अब एड ऑन हो गया. इफ लेडी वांट्स, अगर किसी का टोसिस है, इफ लेडी वांट्स ब्रेस्ट करेक्शन है, किसी का मैक्रोमेस्टिया है, दे वांट रिडक्शन इन साइज, तो रिडक्शन मैमोप्लास्टी आल्सो हैज़ बीन नाउ एडेड. बट ये आर्मेंटेरियम में पेशेंट क्या चाहता है, सर्जन क्या कॉम्पिटेंट है करने के लिए, ऑल दोज फैक्टर्स प्लस डिजीज फैक्टर्स, एवरीथिंग कम्स इन दैट पिक्चर. सो किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए आप क्या डिसीजन लेते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स. सो इट इज़ नॉट जनरलाइज कि हर पेशेंट का आप पकड़ के ऑन्कोप्लास्टी कर रहे हैं. ठीक, दैट इज़ नॉट द थिंग. तो आप जब एग्जाम में भी करेंगे तो यू हैव टू मेक दैट जजमेंट कि बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स आई थिंक दिस इज the best recommended for the patient. Patient's choice is equally respected. आप जितना भी ऑनकोलॉजिस्ट समझे, patient wants mastectomy, तो you say patient का choice है and you plan it. प्लस अगर मैमोग्राम में आपको मल्टीपल माइक्रो कैल्सिफिकेशंस दिख रहे हैं स्कैटर्ड पूरे ब्रेस्ट में, देन यू कांट कंजर्व द ब्रेस्ट. किसी का पास्ट हिस्ट्री में रेडिएशन हो चुका है ऑलरेडी टू चेस्ट वॉल ड्यू टू रीजन, तो यू कैन नॉट गिव RT, तो फिर आप यू विल गो मोस्टली फॉर द मैस्टेक्टमी पार्ट. मैस्टेक्टमी के बाद भी यू कैन डू प्राइमरी रिकन्स्ट्रक्शंस, तो वो पेशेंट्स को आप काउंसल कर सकते हैं. पेशेंट इज़ टू कीन ऑन डिज़ायरिंग इट. ठीक है, तो ब्रेस्ट के लिए ये सर्जिकल ऑप्शंस हैं आपके आर्मेंटेरियम में एज अ सर्जन. एक्जिला में क्या है कि अगर N0 है तो यू कैन गो विद सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सीज या लो एक्सिलरी सैम्पलिंग इफ़ यू आर नॉट पॉसिबल. अगर N1 है तो यू गो फॉर द एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शंस. अब सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कैसे करते हैं, कैन समबडी एक्सप्लेन? How many of you have seen it? किसी ने नहीं देखा है? ठीक है, तो रेडियो लेबल्ड कोलॉइड डाई भी आप डाल सकते हैं. वो न्यूक्लियर मेडिसिन का फैसिलिटीज़ नहीं है, तो यू कैन जस्ट सिंपली यूज़ मिथिलीन ब्लू. ठीक है, दैट इज़ चीप, इजीली अवेलेबल. N0 में आप कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल. तो आई विल शो यू पिक्चर्स ऑल्सो, बट ये N0s में आप कर सकते हैं. लो लेवल सैम्पलिंग है कि लेवल 1 आपने 4-5 लिम्फ नोड्स, मिनिमम 4 लिम्फ नोड्स आर डिसेक्टेड, तो यू रिमूव दोज लेवल 1 लिम्फ नोड्स इफ़ यू कांट डोंट हैव इवन मेथिलीन ब्लू. तो फ्यू सेंटर्स रिकमेंडेड एज अ रूटीन फॉर N0s. हम क्यों नहीं एक्सिलरी डिसेक्शन सब में कर रहे हैं? वाई वी आर कंजर्वेटिव इन एक्सिला? लिम्फेडिमा इज अ प्रॉब्लम. तो अगर नोड्स नेगेटिव हैं देन यू डोंट हैव टू अननेसेसरली रिमूव दोज लिम्फ नोड्स. एंड व्हेन डू यू से कंप्लीट एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन हुआ है? मिनिमम कितने नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स निकलने चाहिए? मिनिमम 10. यस, ठीक है, लेस देन 10 है तो वो इनएडिक्वेट है. बट अगर आप सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कर रहे हैं तो एटलीस्ट जैसे 4 लिम्फ नोड्स निकलने चाहिए. देन पैथोलॉजिस्ट कैन टेल कि वो 4 में से 1 पॉजिटिव है या 2 पॉजिटिव है या सारे निगेटिव हैं, जो भी डिपेंड करता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस मैमोग्राम, कैन समबडी टेल मी व्हाट इज नॉर्मल? हाउ डू यू प्लान फॉर दिस पेशेंट? ये अर्ली स्टेज का है. Be quick because I have 5 minutes left. हाँ, कैन यू सी ऑन द राइट साइड? लेफ्ट में भी थोड़े बहुत हैं. ये सब दिख रहे हैं, माइक्रो कैल्सिफिकेशन स्कैटर्ड. यू कैन सी होल ब्रेस्ट इज इन्वॉल्व. हेयर ऑल्सो यू कैन सी इट, फ्यू स्कैटर्ड. ठीक है, तो इसका क्या कि इस साइड के प्रूवन कैंसर है, इसमें आपको मैमोग्राम में मैमोटोम गाइडेड बायोप्सी ऑफ दिस माइक्रो कैल्सिफिकेशन करना पड़ेगा टू कंफर्म कि ये डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू तो नहीं है. इफ दिस ए बिनाइन कैल्सिफिकेशन है, दीज वी मे ऑब्जर्व. बट इस साइड के कैंसर के लिए व्हाट सर्जरी विल यू प्लान?
MRM, ठीक है, मैस्टेक्टमी, क्योंकि डिफ्यूज माइक्रो कैल्सिफिकेशंस हैं पूरे इसमें आप कंजर्वेशन नहीं कर सकते. प्लस यू कैन सी वन लिम्फ नोड इज पॉपिंग अप हेयर, तो ये N1 है, ठीक है, आपको ये भी दिख रहा है. So this is how you make the call, no matter it is early stage, but she is not a feasible candidate for conservation. ये अल्ट्रासाउंड डिटेक्टेड एक ये है 6 मिलीमीटर का कैंसर, मैमो में उतना क्लियरली दिख भी नहीं रहा है, अल्ट्रासाउंड पे दिख रहा है. यू सी दिस इज टॉलर देन वाइड, साइन ऑफ कैंसर. इसमें 6 मिलीमीटर का है, तो यू कांट डू FNA नहीं होगा. दिस वॉज जस्ट डन बेस्ड ऑन द स्क्रीनिंग, उस पर इमेज गाइडेड हो गए. 5 मिनट्स ना, ठीक है. इसका इफ़ यू सी द लिम्फ नोड, इसमें हाइलम इंटैक्ट है, तो दिस इज N0. सो व्हाट सर्जरी विल यू प्लान फॉर हर? BCS, ठीक है. यू सी इट इज सच अ टाइनी वन, तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन मीन्स वाइड लोकल एक्ससिजन प्लस सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, दैट ऑल्सो यू हैव टू स्पीक बिकॉज N0 है, ठीक है. दिस इज हाउ यू मेक डिसीजंस फॉर द पेशेंट. इस पेशेंट में इट वॉज अ बिगेस्ट लम्प, सो वी हैव गिवन हर कीमोथेरेपी फर्स्ट. जब कीमो मिला है तो इसमें ये पिन पड़ी हुई है, रेडियो ओपेक मेटालिक पिन, टू सी इट कि ट्यूमर साइज कितना रिड्यूस हुआ है. तो इस पेशेंट में यू कैन प्लान कंजर्वेशन, बट इफ़ यू सी अगर आप इतना एक्स्ट्रा निकालेंगे तो इट विल बी अ बिगर डिफेक्ट. तो इसमें क्या होगा ब्रेस्ट कंजर्वेशन के साथ में? फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन या ऑन्कोप्लास्टी सम सॉर्ट ऑफ. फिर वो डिपेंड करता है ऑन्कोप्लास्टी के, जब आप बात करते हैं तो यू टॉक अबाउट विच क्वाड्रेंट, अपर इनर, अपर आउटर, लोअर आउटर, सेंट्रल, मेमरी क्रीज पे है, कहाँ पे है, डिपेंडिंग ऑन दैट यू प्लान द ऑन्कोप्लास्टी. वो आपका इवनिंग में क्लास है, सो यू विल गेट टू दैट. तो ये है, प्लस इसमें लिम्फ नोड्स यहाँ पे हैं, इसमें हाइलम प्रिजर्व्ड है, इस लिम्फ नोड में यू कैन नॉट सी द हाइलम, प्लस ये राउंडिश सा है, तो N1 है. इसमें BCS विद ऑन्कोप्लास्टी एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन. इस पेशेंट में क्या करेंगे? कैन वी डू ब्रेस्ट कंजर्वेशन फॉर हर? नो, बिकॉज यू सी डिफ्यूज माइक्रोकैल्स हैं और ये NAC तक आ रहे हैं, देन दे आर स्कैटर्ड गोइंग टिल हेयर, ठीक है. नॉट अ आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस, ठीक है. दिस इज T1N0. कैन यू सी अ स्मॉल कैंसर हेयर? This is the benefit of doing a screening mammogram, because screening में you pick up lumps which are not palpable, so they are very small, tiny, 1 centimeters. 1 सेंटीमीटर से कम lump है, you don't even need a chemotherapy. तो even early stage में you can get away with surgery alone और radiation सब में होना है जिसमें आप conservation कर रहे हैं, but अगर less than 1 centimeter है तो chemotherapy also can be avoided. That's a big thing. Plus N0 है तो you can do a sentinel lymph node biopsy for her. इसमें you see the lump is here, node negative. What can you do? Close to the skin है आपका. हाँ, इसमें you can see the breast to the tumor ratio is quite good. Breast is big, lump is small. तो BCS alone with sentinel lymph node biopsy. ठीक है, this is the procedure for sentinel node biopsy. You see methylene blue dye है, ये आपने 2 ml लिया. Periareolar you injected intradermal, क्योंकि यहाँ breast के lymphatics आपके sapis plexus हैं. They will drain to the axilla. ये आपका lump which is marked. Once you inject, you see this is a lymph node, nice blue lymph node. Plus ये lymphatic channel भी आपको दिख रहा है, ठीक है. तो lymphatic mapping भी आपकी हो रही है. You can trace it up also. तो this is a very low cost and effective technique of doing a sentinel node biopsy. तो जो blue nodes आपको दिख रहे हैं naked eye से आप उसको निकाल सकते हैं. These are called sentinel. What is the meaning of sentinel? First draining node. तो that is called as a guard, watch guard. ठीक है, जो गेट पे खड़ा है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑन्कोप्लास्टी आई एम शोइंग. शी हैड अ बिग लम्प हेयर. अब ये देखिए आपका आउटर क्वाड्रेंट में है. सो वी हैड प्लान लैटरल इंटरकोस्टल आर्टरी परफोरेटर फ्लैप. यहाँ पे आप डॉपलर से मार्क कर लीजिए परफोरेटर्स जो चेस्ट वॉल पे हैं. यू मेक दिस इलेप्टिकल सिंगल इंसिजन, रेस फ्लैप लाइक अ मैस्टेक्टमी. आपने डीएपिथेलियाइज के देखिए स्किन मोबिलाइज करा, आपने यहाँ से अपना लंप निकाल लिया. इस फ्लैप को जो उठाया है इसमें मसल नहीं है, जस्ट फैट है. इसको फिर आपने अंदर करा, फिर आपने स्किन क्लोज कर दी. इसी बड़े इंसिजन से आप एक्सिला भी एड्रेस कर सकते हैं फ्रॉम सिंगल इंसिजन. सो यू सी ये आपका डीएपिथेलाइजेशन वाला प्रोसेस है. एट द एंड यू सी यू डोंट इवन सी द स्कार, क्योंकि स्कार आपका लैटरली चला गया. एंड यू सी अ गुड कॉस्मेटिक आउटकम. तो दिस इज ऑन्कोलॉजिकली सेफ प्लस कॉस्मेटिकली ऑल्सो गुड एंड नॉट मच ऑफ टाइम कंज्यूम्स, हार्डली हाफ एन आवर एक्स्ट्रा जाएगा. बट दीज options depend on patient to patient.
पेशेंट फैक्टर्स, डिजीज फैक्टर्स आपको इतने मैमोग्राम्स दिखाए हैं, तो लंप कैसा है, लंप टू ब्रेस्ट रेशियो कैसा है, माइक्रो कैल्सिफिकेशन स्कैटर्ड तो नहीं है, इस पेशेंट कीन रेडी टू टेक रेडिएशन थेरेपी इज अवेलेबल इन योर सेंटर, वो कोई इशू नहीं है, बिकॉज आरटी इज मस्ट फॉर पोस्ट बीसीएस या ऑन्कोप्लास्टी सब में। पोस्ट मैस्टेक्टमी आरटी के क्या इंडिकेशंस हैं अर्ली स्टेज में? पॉजिटिव मार्जिन तो रीएक्साइज करना है आपको, क्लोज मार्जिन है देन यू कैन गिव आरटी, ठीक है। 5 सेंटीमीटर से बड़ा लंप है या मोर देन 4 लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं तब आप रेडिएशन दे देंगे। अब लोग 1 to 4 नोड्स में भी आरटी दे रहे हैं, ठीक है। पोस्ट बीसीएस है, पोस्ट मैस्टेक्टमी यू हैव सिलेक्टेड इंडिकेशंस, हर पेशेंट में रेडिएशन नहीं देना है, ठीक है। कोई ERPR पॉजिटिव है तो आप हार्मोन्स देंगे, टेमोक्सिफेन या लेट्रोजोल डिपेंडिंग ऑन द मेनोपॉजल स्टेटस। कोई हर्ट्यूनियो पॉजिटिव है तो आप ट्रास्टोसुमैब देंगे, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द IHC। तो हार्मोनोथेरेपी ये हो गया। कीमोथेरेपी यू डिसाइड नोट पॉजिटिव है या नोट नेगेटिव है, टैक्सेंस करना है नहीं करना है, तो ये है सर्जिकल ऑप्शंस ये है। सो एनी कन्फ्यूजन इन दिस ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। So thank you all. So with this we move towards now locally advanced. So you have a base of early stage management. Thank you, ma'am. Can I please request Dr. Faraz Ahmed sir to felicitate ma'am? The next talk will be on locally advanced breast cancers. For this, I invite Dr. Anshika Mittal. Ma'am, she's an associate professor in the Department of Surgical Oncology at SNMC Agra. Ma'am is a surgical oncologist with an expertise in breast, gynec and gastro-oncology as well as head and neck oncology. She specializes in advanced procedures like breast oncoplasty, head and neck reconstruction, and also in palliative surgeries. Supposed to your doubts. इतने eminent speakers आए हैं. Show them your knowledge on this. We'll so I'm a surgical oncologist, surgeon. So I will touch this topic from a little different point of view. Can I all the residents just raise their hand? How many residents are there? Okay, fine. So today is locally advanced breast cancer. So does anybody know what is LABC? जो सबसे आगे बैठे हैं उन्हीं की punishment है. What is locally advanced breast cancer? Anybody else? Huh? Stage 3. Then very good. I agree with you. Stage 3. Then what is stage 3? So you all know the TNM staging. What is T4? कोई भी बोल दो बैठे बैठे. Skin involvement, NAC involvement, chest wall involvement, not pectoralis major. Then what else? Sorry? Inflammatory breast cancer. All these are T4, right? What is N1? Single ipsilateral mobile. What is N2? Multiple or matted or fixed to chest wall. What is N3? So now what we have is LABC. This is LABC. Okay. So either any N2, any N3 will be called, even if it is a 2 centimeter lump, but if it is N2 node or N3 node, it straight away becomes LABC. It's not just about T4. Then number 2, any T4, whether it is T4N0 or T4N3, any T4 you see becomes locally advanced breast cancer. In the end, ये थोड़ा सा doubtful है. What is T3N1? T3 क्या होता है? More than 5 centimeter and no skin involvement.
So more than 5 centimeter तो 6 centimeter भी हो सकता है, 10 centimeter भी हो सकता है. Node negative and node positive. So overall T3N1 we are taking in locally advanced breast cancer. But this is old staging. As you can see, I have put here clinical anatomic staging. What is the latest staging of breast cancer? It depends on the TNM. It depends on grade 1, 2, 3. It depends on hormone status, meaning ER, PR, and it depends on HER2 new status. So this is the latest staging. So as you can see, I don't have a marker. So in this, this is the clinical prognostic staging, and internationally wherever IHC is available, we are supposed to follow this. This is AJCC 8 available everywhere. Now you see what I have highlighted here, T2N1 M0, T3 N0 M0. Now according to our classification, this become early breast cancer, not LABC. But if you see these two things, stage 3B, stage 3A and 3B. So in grade 2, triple negative means ER, PR, HER2 negative becomes stage 3. वहाँ से आप लोग चिल्ला रहे थे ना stage 3. So it becomes stage 3. In grade 3, apart from TNBC, even luminal B. What is luminal B? ER positive, PR negative or Ki67 raised. So in grade 3, luminal B also becomes for T2N1 and T3N0. Now let's come to another scenario where you have clinically LABC, N2 disease, T3N1 disease, T3N2 disease. In this also you can see some stage 2s. Can you see some stage 2s? So let me bring it down for you. In grade 1 or 2, if triple positive, ER, PR, HER2 positive, they become early breast cancer, which were clinically LABC, but after doing the further workup, they can be treated as early breast cancer. Then triple and also ER, PR positive and HER2 negative. Okay? So right now you don't have to learn it up, but you have to imagine in your head that it's not about TNM. We have to go beyond TNM, look at the grade, look at the IHC markers, do a tumor board with our physicians, radiation oncologists, medical oncologists, and then decide what is going to be the treatment for this. Okay? So every T3N0 patient or every T3N1 patient is not same. It has to be decided according to the IHC and grade. And how do you get the IHC and grade? Only in core biopsy, not excision biopsy, only core biopsy. So this is typically what you see, loco-regional, LABC, especially in government medical colleges where you have poor patients. This is a typical picture in your mind. So right now we are talking about management of clinical T1 to 4, N0, or any node positive, let's say N2 positive, right, and M0. What is M0? Distant metastasis. So what is the workup? So I have taken all the slides from the latest guidelines. So what is the workup? For LABC as well as early breast cancer and HER2 positive or triple negative, there are some indications to do CCT, thorax, abdomen, pelvis along with bone scan, or if it is cheaper, you can go for PET CT scan. What are these indications? Especially node positive, HER2 positive or triple negative, or they have symptoms like backache, etc. So the investigation of choices for metastatic workup, cross-sectional imaging with bone scan or PET CT scan. So what is the management of LABC? If it is operable. Now how do you define it is operable? What is operable? You can bring the skin together, mastectomy mein. Chest wall is not involved, nodes are not matted, all those become operable, right? You can actually do a mastectomy and axillary dissection. So what are the choices of surgery in operable disease? In LABC, is it just mastectomy or can you do breast conservation? So breast conservation is a choice. It is a choice, even in T4 disease or NAC is involved. So either you can do a breast conservation, axillary staging,
and then as Dr. Pooja pointed out, oncoplasty, and thereafter you can do whole breast radiation with or without boost to the cavity. The other option is mastectomy. And how many types of mastectomies do you know? Total mastectomy, which is very often you see. Then you can do skin sparing mastectomy, especially in cases where you had tumors in different quadrants but skin was normal. Or you can do nipple sparing mastectomy, where you preserve the nipple also, especially in tumors in various quadrants. Okay? And then there is an option for reconstruction. What kind of reconstructions do you know after mastectomy? LD flap can be done for A cup, B cup, not for C cup. Huh? Pedicled flaps like tram, DIEP, very good. What else you can do? Implant. These are the reconstructive ladder. So let's come to contraindications for BCS. This is the most important slide when you should not do BCS. Inflammatory breast cancer or extensive skin involvement. Diffuse, as it has been said before, in mammography you have diffuse microcalcifications. Then inability to clear margins again and again. You've done a breast conservation, margin is coming positive again and again. So then you should do breast mastectomy. And let's just say multicentric disease. Don't go into the rest of it. Multicentric with what? So if it is multicentric, massive skin involvement, inflammatory breast cancer, or you're not able to clear the margins, then you should not do breast conservation. Does it say central quadrant? Does it say NAC involvement? It says extensive skin involvement. So all these cases you can give the option of breast conservation. So this is a summary of this. So mastectomy with primary closure. The first surgery you know is mastectomy. So mastectomy with primary closure. Multiple times you must have operated on. So these are operable LABC, where you can bring the skin together. So you can do that. Now let's see this patient. This patient has got NAC involvement. Maybe it is not doing very well here, but there is pude orange on the NAC. So this becomes NAC involvement. So she was labeled as T4, but the lesion was very small. So what we did is a breast conservation surgery with removal of NAC. So you can see the defect, and you can see we have done the sentinel lymph node also in this. And thereafter she has been reconstructed with LD flap. LD flap has been taken and a paddle of skin has been preserved to create the NAC. So what are the acceptable margins? How much margin do you have to take? So in invasive tumor where you have IDC, it should be no ink on tumor, means 0 mm margin. Margin should not be involved basically. If margin is involved, what are you going to do? Re-excision. Re-excision. As sir had said in the morning, tumor ko chhod ke nahi aana hai. So you have to do re-excision. Now if it is BCS or DCIS, so you need pathologically 2 mm margin. But jab hum surgery karte hain, we have to take minimum of 1 cm margin all around in breast cancer, in head and neck, both. So 1 cm unstretched clinical margin you have to take. This is an example of skin sparing mastectomy. I have tried to demonstrate this patient has got multiple tumors. There was one in the upper, 2 in the upper quadrants also. She had received NACT, but forget that. So there is no indication to remove the skin. So we have done skin sparing mastectomy. You can see the specimen. If you preserve the nipple, it is called nipple sparing mastectomy. If you don't, it's called skin sparing mastectomy. And you can see I have taken an LD flap, I have deepithelized the rest of the skin and reconstructed the NAC also. And this is the final outcome of the patient, and she's around 65. Still she wanted reconstruction. ऐसा नहीं है कि old lady है, so you just do the mastectomy. Even you have to take consent from each patient what kind of surgery they want. This is another patient. She also had multicentric disease. So she was planned for nipple sparing mastectomy. And you can see the planning of the incision as well as the LD flap marking. And this is what I'm showing, glove and finger technique, where you have to take out all the breast tissue. When you're sparing the nipple, still you have to take out all the breast tissue. You cannot leave behind any breast tissue behind the nipple. This is a specimen.
and this is the post-op outcome with LD flap. What about adjuvant chemotherapy? Do you, any of you, you've done operable, in operable LABC, now you've done some sort of surgery, either breast conservation or you have done mastectomy. What chemo would you like to give now? Single agent or multi-agent sequential? Bas exam ke liye you have to learn these two words, multi-agent, sequential. So what are the preferred regimes? AC followed by T. क्या याद रखोगे? AC followed by T. 4 cycles of AC, 4 cycles of T. What is AC and T? You can see here. Then if the patient has got cardiac toxicity, you will not give A. So it becomes TC. Then sometimes you can use other things like AC only or purana jo tha CMF. If the patient has got multiple comorbidities, you may find indication to use CMF. तो दो याद रखने हैं, AC followed by T, CMF. And what you have to say, multi, single agent बोलोगे क्या बोलोगे? Multi agent. What about adjuvant endocrine therapy? Premenopausal, what do you give? Premenopausal, what adjuvant endocrine therapy you give? Tamoxifen. Or you can make them ovarian suppression and give aromatase inhibitors. दो option है, you keep the ovarian function intact, meaning they continue to have their periods and you give them tamoxifen, or you kill their ovarian function somehow and then you give AI. ठीक है? Now in postmenopausal, what will you give? Aromatase inhibitors. Or if there are indications for contraindications to AI, you can give tamoxifen. What are the complications of tamoxifen in postmenopausal? Problems? Osteoporosis, ठीक है? It can cause endometrial hypertrophy leading to endometrial CA. इसलिए हम aromatase inhibitors prefer करते हैं, ठीक है? So how do you decide? First we'll do surgery or first we'll do neoadjuvant. Last lecture you were talking about neoadjuvant. So how do you decide that? कि इसमें neoadjuvant देना है पहले या इसमें surgery करनी है पहले? What are the principles? Huh? Okay, if you want to downgrade the tumor size so that you can do a breast conservation. Number 2, you can downgrade the axilla so you can preserve axillary dissection, conservative axillary surgery, so that you don't give rise to lymphedema or nerve injury. What else? Genetic profiling, very good. It depends whether it is a genetically worse tumor or good tumor. If it is worse, you would like to give the systemic treatment first. Start with the main treatment. Then what else? So again, as you said, tumor size, grades, lymph node, ERPR, HER2/neu, tumor genetics. All this is going to decide whether you are going to give surgery first or chemo first. So what are the benefits of chemotherapy? All of you said breast conservation can render inoperable tumors operable. Treatment provides important prognostic information. You never mentioned that. If your tumor is responding to chemo, is it good or bad? तो आपने ट्यूमर निकाल दिया, पहले सर्जरी कर दी, अब आप कीमो दे रहे हो, अब दिए जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि वो काम कर रही है नहीं. Here you can in vivo monitor the clinical response to chemo and even change it. अगर AC plus T से काम नहीं चल रहा है, you can make it paclicarbo. Fine. What is the other? If you give neoadjuvant chemotherapy, depending on कितना response आया उसका specimen में, you can change your chemo or add on some other molecule. So all these are benefits. What are the not candidates for neoadjuvant? Forget about that. It's too much for you. Candidates for preoperative systemic therapy is the most important slide. One is inoperable surgery. Inoperable patients like inflammatory breast cancer, extensive skin involvement, bulky N2 nodes, N3, T4. In operable cases also, you can give neoadjuvant in case it is HER2 positive or triple negative. Because अगर आप neoadjuvant देते हो उसके बाद क्या होता है वो मैं बताऊंगी. Why in HER2 and TNBC you should consider NACT first.
large tumor, node positive disease, and definitive surgery may be delayed, like first trimester of pregnancy, second trimester, or some other reason, cardiac issues, they are going for stent or something like that. Cautions could be like you may be over treating the patient by giving the chemo क्योंकि आपके पास सारी prognostic information अभी तक नहीं आई हैं. You have not removed the whole tumor, so you don't have the whole prognostic information. So let's go through this slide one by one. What is the role of neoadjuvant systemic therapy in TNBC? अगर आपने ये trial पढ़ा होगा NSABP, it's a very old trial. They compared randomized control trial whether you will give neoadjuvant chemo or you will give surgery followed by chemo. And they said that they are equal. So आपने इसको मान लिया, आपने surgery कर दी, and then you give adjuvant chemo, खत्म? नहीं, हमने ये नहीं माना, हमने पहले neoadjuvant chemo दी, then we did the surgery, okay? And now after doing the surgery, you've got pathological complete response. What does that mean? There was no invasive tumor in the breast as well as the axilla in the specimen. अगर ऐसे आ जाता है तो क्या करोगे? You can see that we know this patient's event-free survival is better. Hazard ratio is 0.24 as compared to the other lady who did not have PAC-CR. So you can prognosticate the patient. अगर आपका residual disease आया तो क्या करोगे? According to this trial, you can add tablet capecitabine 6 cycles in the adjuvant treatment, and that will improve your disease-free survival. And hazard ratio is 0.58. It's quite big. तो अगर आपने neoadjuvant chemo नहीं दी होती, you will not be able to give the advantage of capecitabine to non-responders. ठीक है? Other opportunities are there which we already discussed. So just I gave you example of triple negative. So triple negative and HER2 positive you should consider NACP. So again in this slide we are saying how you redefine the risk of the patient depending on the residual tumor. There is something called residual cancer burden, RCB grade 0 to 3. RCB grade 0 is pathological complete response, and you can see here 10 years event-free survival is as high as 86%. But in RCB grade 3 means a lot of tumor was left. The 10-year event-free survival is as low as 25%. So you can prognosticate the patient by giving NACT. So response to NACT, how do you do that? Clinical response. आपके OPD में patient आया, आपने NACT के लिए भेज दिया, फिर आपकी NACT 4AC plus 4T खत्म हो गई. Now patient has come to you, you've examined the patient. So how do you categorize? हैं? So you say 4 categories: complete response, partial response, no response और progression. यही 4 responses हो सकते हैं, ठीक है? Pathological only 2 responses, complete response or partial response. Okay? So what do you do now? Surgical treatment after NACT. Again, breast conservation. If breast conservation is not possible, then same mastectomy. So breast conservation के लिए आपको पहले clip लगा देना चाहिए था वहाँ पे, so that if it completely disappears, you know where the tumor was. Now, in very brief, I'll just touch upon this. What is adjuvant treatment post? Adjuvant treatment post someone who has received NACT and then surgery. So what is the adjuvant treatment? If they were hormone positive and PAC-CR is not achieved, you should give endocrine therapy with olaparib if they are BRCA positive or abemaciclib if they are high risk. What is abemaciclib? It is CDK4/6 inhibitor. So just I'm putting in words so that you have whoever wants to read can go in and read. If it is HER2 positive and you have given trastuzumab before, PAC-CR is there, you continue with the trastuzumab for 1 year. If PAC-CR is not achieved, they will change it. You have to change it to some other drug, so you have to change it, okay? In triple negative, as I already told you, if PAC-CR is achieved, then nothing. If PAC-CR is not achieved, you have to give 6 cycles of capecitabine, okay? And olaparib if it's BRCA positive, and pembrolizumab if it was included before. Have you heard of immunotherapy? What is that? PD-L1 inhibitor. So that is this drug. So take home points very briefly. Definition of LABC is beyond TNM now. Consider factors like grade, ER/PR status, HER2 status,
consider neoadjuvant systemic therapy in certain cases. Always consider breast conservation in every single patient, and there is no one fits all approach to LABC. Thank you. Any questions? Any doubts? Thank you, ma'am. I request Dr. please hand over the mic. For our next talk, we have Professor Srendra Kumar sir. Sir is a renowned general department. He is a field of expertise in the realm of general surgery, but he excelling in the domains of thyroid and breast surgery. And sir will be doing a video lecture for us on modified radical mastectomy. Undergraduate students, they are feeling hungry. So I will be discussing modified radical mastectomy. I would like to cover some aspects of modified radical mastectomy. So what actually modified radical mastectomy is? So it is a surgical procedure where we remove the breast, nipple areola complex, the pectoralis fascia, and skin over the tumor, and at least 1 to 2 centimeter all around the tumor, along with axillary lymph node. Pectoralis minor, it may be removed or it may be conserved depending upon the type of surgical procedure or modified radical mastectomy you wish to perform. So this you can copy it down. Petty's procedure. In Petty's procedure, what we do? We remove the pectoralis minor muscle, and this time in MS examination, one of our examiner was asking what is the advantage of removing pectoralis minor muscle. So it is written over here. It helps in dissecting the level 3 group of lymph node. So same holds true for Scanlon's procedure. Here we don't remove the pectoralis minor muscle, we cut it, we divide it. Then in Auchincloss, this pectoralis minor muscle, it is retracted. It is retracted, it is not cut, and we remove level 1 and level 2 group of lymph nodes. However, depending upon the load of axillary disease, we can even go for level 3 clearance. Next, coming on to the position of the patient. क्या position होनी चाहिए? Anyone who can describe the position required for modified radical mastectomy? It is supine in position. So what is so special about this position? What we can do is, we can even place a sandbag behind the ipsilateral scapula. Now what is the advantage of putting a sandbag behind the scapula? मेरे पीले थोड़ा जगले. What is the advantage of putting a sandbag behind the
ipsilateral scapula. It pushes the floor and posterior wall of the axilla anteriorly, and this makes the axillary clearance easy. Then, what is so special about these drags? So while performing axillary clearance, you can adduct the shoulder. So it relaxes the pectoralis muscle and helps in clearing axilla up to the level of level 3. Is this clear? Now, next, what are the major steps? So what is the what incision you would like to give? Raising skin flaps, removal of breast tissue, axillary dissection, hemostasis and closure. I think this we should discuss on video. Nahi chal raha. Anyway, coming on the incision, usually we prefer a transverse incision, and this transverse incision should include the nipple areola complex, the tumor, and at least 1 to 2 centimeter healthy skin around the tumor. However, one can modify the incision depending on the tumor. So in this particular patient, we gave transverse incision. One thing I forgot to tell you about position. Suppose you wish to perform some kind of breast reconstruction, say LD reconstruction. What should be the position of the patient? कैसे? LD reconstruction करना है. So you can perform modified radical mastectomy in supine position, and later on you can shift it to lateral position. Is this clear? Or some surgeons, they prefer to perform both the procedure in lateral position itself. ठीक है? रुक जाओ. Last step. So now raising the flap. रुक जाना वीडियो. उस पे जहाँ पे फ्लैप उठा रहे थे ना, उस पे. हाँ, यहाँ पे. Now what is the aim of raising the flap? It should not be very thin. It should not be very thick. ठीक है? Because if you make the skin flap thin, the chances of necrosis will be high. So what is the right plane in which we have to raise the superior as well as inferior flap? Between small subcutaneous fat globules and large breast tissue. So is this clear? यहाँ पे clearly दिख रहा है. दिख रहा है ये? Now, in obese patient, it is sometimes difficult to obtain this plane. What you can do in such case, or what we have to do in such case? Okay, thickness of flap. Some surgeons, they prefer the subdermal vascular plexus. ठीक है? So the subdermal vascular plexus, they should be over the skin flap. So this is how you can achieve the correct plane of raising the skin flaps. Is this clear? Next. Now what should be the extent of the incision? From the lateral sternal border to
anterior axillary line, and all possible attempts should be made not to extend it laterally. The reason is simple, because both the incision and they should be included in radiation field. These superior limit of flap up to the clavicle, and inferior limit rectus, ठीक है, inframammary fold. That is an easy landmark. ठीक है, तेज से बड़ा बस. Now, once you have raised both the superior and inferior flap, what next? What should be the next step? You have to raise, you have to remove the breast tissue along with pectoralis fascia. So this dissection, it's better to start it from the medial side. Now, why? Because the amount of breast tissue over the medial aspect is less. So it is easy to get that beautiful plane between pectoralis fascia and pectoralis major muscle. Is this clear? However, you may encounter some of the perforating branches that you can easily take care by cautery or even by ligating. Is this clear? Now, कहाँ तक ये dissection पूरा करेंगे? The lateral limit is the lateral border of pectoralis major muscle. Then the dissection is carried out in upper direction till you start seeing the pectoralis minor muscle. Is this clear? And once the pectoralis minor comes into view, what you do? You dissect or you take out the fibrofatty tissue in between pectoralis major muscle and pectoralis minor muscle. कौन सा नोड उसमें रहते हैं? इसको नींद से जगाना जरूरी है मेरे लाल. कौन सा? लेवल 2. अपना जॉनी ने बिल्कुल ठीक बोला. लेवल 2. वो लेवल 2 में होता है. Is there any specific name for it? Rotter's group of lymph node. मैं भूल गया था. ठीक है. So if you carefully look into the axillary clearance, this surgical procedure or this axillary clearance, it involves dissecting above as well as behind the pectoralis minor muscle. उसके ऊपर भी करना है dissect आपको, उसके नीचे भी करना है. Is this clear? ठीक है. Next. छोटा हो गया. Now, what are the various structures which are to be conserved in axilla? Number 1, axillary vein. Number 2 is nerve to serratus anterior, then thoracodorsal, and if possible, the intercostobrachial nerves. ठीक है? These intercostobrachial nerves, they can be either 3 or in some cases it can be even 4. ठीक है? So these nerves, intercostobrachial nerve, they have to be conserved, because if you cut it, the patient may experience severe paresthesia in the upper and medial aspect of arm. ये सब वाइवा के क्वेश्चंस हैं. Then how to identify axillary pectoral fascia? Then you can trace the pectoralis minor muscle and the latissimus dorsi muscle, and the point at the highest point where these two muscles intersect, just beneath it you may find the axillary vein as a C-shaped bluish structure.
Is this clear? Thank you. अब जग गया है ये, फराज जी ये जग गए हैं, गर्दन खिला रहे. Next. See, unless the intercostobrachial nerves, they are grossly involved by the tumor or the axillary lymph node, all possible attempts should be made to conserve it. Now, what is the reason behind it? We have already discussed. Next, in all the cases, preferably level 1 and level 2 clearance is sufficient. But since we have a high amount of axillary burden, it's better to perform a level 3 clearance also. Now, what are the boundaries of level 3? Dissection medially, exam going batch. Sorry, वो तो पास हो चुके हैं अब. Halstadian ligament, ठीक है, and the lateral border is unretracted pectoralis minor medial border, ठीक है. Next is level 2. वहां से आप कहां आ गए? Lateral thoracic वेसल, ठीक है, मीडियल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर से लेटरल थोरैसिक वेसल. ये लिमिट होती है किसकी? लेवल 2 की. एंड लेवल 1 यहां से लेकर कहां तक? व्हाट आर द लेटरल बाउंड्री, व्हाट आर द लेटरल लैंडमार्क्स? टेंडन ऑफ लेटिसमस डॉर्साई और थोरैको डॉर्सल पेडिकल. ये तीनों याद रखिएगा. कितना अच्छा दिख रहा है. थैंक्स टू अक्षय. ये मैंने नहीं किया, आई वॉज जस्ट रिकॉर्डिंग. Now, how to identify now to serratus anterior? Where you can find now to serratus anterior? It lies along the lateral aspect of chest wall. It is seen as a thin thread-like structure. अभी दिख रही है इसमें. रन करो, रन करो. रुक जाना. So what is this structure? It is now to serratus anterior. ठीक है, आगे बढ़ो. So this part of axillary clearance basically involves removing all the fibrofatty or fibrolymphatic tissue in between the now to serratus anterior and thoracodorsal pedicle. So what are the boundaries of axillary clearance? Either level 3 or level 2. What are the superior boundaries? Axillary vein. One should not go above the axillary vein unless the disease is grossly evident. ठीक है. Next, inferior boundary, angular vein. What are the lateral boundaries? Landmark, thoracodorsal, or some may consider the latissimus dorsi tendon as the lateral boundary. Is this clear? ठीक. Next आगे बढ़ो, बस खत्म होने वाला है. So
this structure, it's the, what is the structure? Thoracodorsal pedicle, and here is the now to serratus anterior. So we have literally cleared the fibrofatty tissue in between these two important structures. Now closure of incision. Before closing it, all the anatomical landmarks should be explained to the student or students. Okay? A thorough saline wash should be given, and the incision, it can be closed by putting two drains, one in the axilla and another beneath the flap. That's it. Any questions? कोई नहीं, सवाल पूछ। Dr. Nikhil Singh sir to felicitate sir for his talk. Boss. Welcome, boss. मैं पूछ, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मेरे पास सवाल हैं कम से कम बहुत सारे सवाल। भैया हमारे कहाँ पे रखा जाता है नारियल का हाँ और 4 नर्व, मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस ये इम्पोर्टेंस ये है कि ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। पेक्टोरल नर्व कहाँ होगी, बंडल कहाँ होगा, लैटरल मीडियल पेक्टोरल नर्व कहाँ मिलेगी, इनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो जब भी लोग क्या करते हैं कि BCS सबसे पहले MRM के पहले बोलते हैं कि 3D है, पोस्ट हम करेंगे और वो करेंगे BCS करेंगे। तो उसका तरीका ये है कि आपको ये बोलना है कि अगर परमिट करता है तब BCS करेंगे, क्योंकि BCS एक अच्छा प्रोसीजर है। और लेकिन जहाँ पे फैसिलिटी, लेकिन BCS इज अ गुड प्रोसीजर करेंगे, लेकिन हम लोग से यहाँ पे MRM करते हैं। तो दूसरा एग्जाम ने पूछा कि व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ BCS, क्या इंडिकेशन होगी BCS की, या कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होंगी? कॉन्ट्राइंडिकेशन BCS इंपॉर्टेंट है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होंगी? हाँ केटी बता रहा है, बोल। सर वो तो पास हाँ नहीं अभी नहीं, कहाँ हुए? हाँ बोलो, जल्दी बोलो। रिजल्ट कहाँ है? ट्यूमर टू ब्रेस्ट रेशियो अगर ज्यादा है इसका मतलब ट्यूमर बचेगा नहीं, कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल ब्रेस्ट नहीं मिलेगा। और सबसे पहले ही ध्यान रखना, अनरिलायबल पेशेंट हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गरीब है, नहीं आ सकता, अनरिलायबल पेशेंट, ट्यूमर्स टू ब्रेस्ट रेशियो, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रेडिएशन, और चौथा बाकी जो कंट्राइंडिकेशन तो रेडिएशन है। तो ये तुम्हें जब आंसर देना है तो डिप्लोमेटिक आंसर देना है कि मैडम गिवन दी सर्कमस्टांसेस we will go for MRM, but if the situation permits we will go for
अभी इसमें कोई लेक्चर नहीं है क्या? बुला लो उसे। अच्छा मैडम आ जाइए, हम तो बस इनको बता रहे थे क्योंकि इन्होंने 6 बार जब इम्तहान लेने गए तो पड़ गए, तो ये मैं बता रहा हूँ कि इतनी जवाब देना आना चाहिए, ठीक है, कि बीसेस कब नहीं करना है। उसके बाद ब्रेस्ट की कॉमन कॉम्प्लिकेशन बतानी चाहिए, विच इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन, क्या स्ट्रक्चर्स निकालते हैं, व्हाट लेवल ऑफ लिम्फ नोड। आपने इन्होंने कौन सी मैस्टेक्टोमी दिखाई थी? मैस्टेक्टोमी दिखाई थी, मैस्टेक्टोमी, आइलियो टॉमी। आइए 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 तशरीफ बताओ, जल्दी बताओ। नेक्स्ट स्पीकर, मैं तो फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा हूँ, मैं अपने हृदय की पीड़ा वेदना कर रहा हूँ। अरे यार तुम डोंट वरी, व्हाट आर 3 डिफरेंट मैस्टेक्टमीज यू नो? वन इज डेविड पेटी, जिसने हालस्टेड साहब को चैलेंज किया था कि सर्वाइवल बेटर है, कॉस्मेटिकली बेटर है, और उन्होंने कहा, हालस्टेड ने कहा था बेस्ट इज द लोकल डिजीज, उन्होंने कहा था ऐसा नहीं है, उन्होंने मैस्टेक्टमी निकाली है। उसके बाद 2 है, एक ऑचिंग क्लॉथ लिखते हैं क्लॉथ है, और एक है स्कैनलॉन है। दोनों में क्या अंतर है? ऑचिंग मैस्टेक्टमी में सबसे पहले क्या करते हैं, माइनर निकाल देते हैं, कॉस्मेटिकली डिसफिगरिंग होता है। फायदा क्या होता है? लिम्फ नोड ईल ज़्यादा होती है, लेवल 3 लिम्फ नोड में निकालते हैं, लेवल 2 लेवल 3 हमेशा नहीं निकालने होते। तो अब लेवल 1 लेवल 2 किस में निकालते हैं, और कौन सी 2 बची? और दोनों में क्या होता है? आप प्लीज आइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। किसमें? और एक में रिट्रैक्ट कर दो, इतना पता होना चाहिए। फिर कॉमन कॉम्प्लिकेशन पता होना चाहिए, फिर फिजियोथेरेपी आना चाहिए, फिर मेडिमा और अर्ली साइंस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा डेवलपिंग है नाम आना चाहिए। इतनी चीजें ऑल योर। नेक्स्ट यहाँ रुकोगे तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी, गाड़ी रुकने का मतलब है इम्तिहान के पहले गाड़ी रुक जाएगी, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। एग्जामिनर जो होते हैं बदमाश टाइप के होते हैं, तो वही पूछेंगे मेल होती है, आम क्या करती है, क्वेश्चन पूछे यार। Our next will be on the basics of breast oncoplasty, and this will be conducted by Dr. Geetikananda Singh, ma'am. Ma'am is an endocrine surgeon and a junior grade professor in our Good afternoon, everyone. Just to start with, what is oncoplastic breast surgery? Any idea? And is it same as breast conservation, or is there any difference? Anyone who can just think about, not necessarily that you will be knowing about it, but what do you think about it? क्या breast conservation और oncoplasty same अलग-अलग होता है? वो एग्जाम में गलत नहीं करता है, वरना फिर एग्जाम में लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर को भी हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन कर रहे होते हैं। ब्रेस्ट कंजर्वेशन और ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी इज सेम, सिनोनिमस, कोई डिफरेंस है दोनों में? सेम है? क्या डिफरेंस है? कौन सी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं? फ्लैप्स की रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। और कोई फर्क होता है? इसका मतलब है जो एलडी फ्लैप हम लगाते हैं वो सर्जरी है, तो फिर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, ये अभी तुम ही बता रहे हो। तो इसका मतलब है कि ऑन्कोप्लास्टी ब्रेस्ट कंजर्वेशन नहीं है, नॉट आल्सो रिकंस्ट्रक्शन। जो इम्प्लांट्स आप लगाते हो, जो फ्लैप्स आप लगाते हो, या जो आपने देखा है हमें लगाते हुए, वो सब ऑन्कोप्लास्टी नहीं होता। So what is oncoplasty then? Oncoplasty term ही derive हुई onco plus plasty, oncological resistance in combination with plastic surgery. Thank you. So my slides were not working actually. So this is Dr. Krishna Klo. He's a plastic surgeon and an oncosurgeon
who has a institute which is called Paris Breast Cancer Institute. It runs in Paris and he is the pioneer in oncoplastic breast surgery all over the world. अगर आप publications देखोगे तो this is the man who actually devised these procedures in order to improve the outcome. So we'll discuss what is it. Now whenever we talk about breast conservation, problem क्या है breast conservation का? अगर आपने कोई पेशेंट है जिसका साइज ऑफ ब्रेस्ट छोटा है या जिसका ट्यूमर मान लो अपर इनर क्वाड्रेंट में है, अपर इनर क्वाड्रेंट मीन्स वेरी लेस फैट, या लोअर क्वाड्रेंट में है, सो दैट मीन्स अगर आप कोई भी एक्सिजन वहाँ पे करोगे तो देयर विल बी ए क्लासिकल डिफॉर्मिटी विच इज़ कॉल्ड एज बर्ड बिग डिफॉर्मिटी. इन सबको अवॉइड करने के लिए ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन से ऑन्कोप्लास्टी में स्विच ओवर हुआ था. So that does not mean कि आप breast conservation नहीं कर सकते. Breast conservation means you are giving a standard incision over the lump. जैसे upper quadrant में है तो periareolar incisions, और नीचे है तो radial incisions. So you place a cosmetic incision, you go to the lump, you excise the lump with a wide margin, then you may or may not close that cavity and come out. So this is a simple breast conservation surgery. It does not require any special training, any special procedure. You just have to excise the lump with a wide margin, giving the incision which is cosmetic. But what is the change? Now suppose आपने 20% तक का breast निकालना है, you can easily do it with the breast conservation surgery, there is no problem. But if you want to excise something beyond it, then you need this oncoplastic surgical procedures. तो इसमें कोई rocket science नहीं होती है. They just give some special incisions and they have certain principles in mind which they try to follow so that you get a cosmetically acceptable breast. क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा resection कर दोगे using a standard breast conservation surgery, तो you are bound to cause deformities. So oncoplasty just utilizes the plastic surgery principles to create lesser deformities and a more cosmetic breast. Because you know, breast conservation करने का कोई advantage नहीं है if you cannot give a cosmetically acceptable breast to the patient. Then you might as well do a mastectomy or give a reconstructive procedure. So this is how the oncoplasty was developed. So what is this? It ranges from a simple reshaping and mobilization of breast tissue to more advanced mammoplastic techniques. What is mammoplasty? That is, you are cutting the breast and reshaping it into a more cosmetic form. Now when we are doing the oncoplastic procedure, we have to have three things in mind. First is excision volume. एक्सिजन वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर 20% से नीचे है तो आप ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन ही कर सकते हो. 20 to 50% है या मोर देन 50% है, देन यू नीड दिस ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी. सो यू नो, अगर मेरे को 20% से ज़्यादा निकालना है या सपोज 40 to 50 ग्राम टिश्यू से ज़्यादा टिश्यू मेरा निकलेगा, देन आई वुड बी नीडिंग दिस काइंड ऑफ प्रोसीजर. Then second is tumor location. As I told, upper inner quadrant and lower quadrants are very notorious to have deformities. तो अगर आपको कोई quadrant, आप सिर्फ upper outer quadrant है, which gives you a very good cosmesis despite large resections. इसलिए if you are not sure that this incision will give you a cosmetic outcome, then you better switch over to oncoplasty. And third is glandular density. Now this you should know, because जब हम ऑन्कोप्लास्टी करते हैं ना तो हम ब्रेस्ट को पूरा हटा देते हैं. हम ब्रेस्ट टिश्यू को नीचे पेक्टोरल्स के ऊपर से भी लिफ्ट कर लेते हैं, हम स्किन के नीचे से भी लिफ्ट कर लेते हैं. सो बेसिकली इट इज़ बेयर फ्रॉम टू एंड्स. तो अगर कोई ब्रेस्ट बहुत फैटी होगा तो उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होगा एंड इट्स विल एंड अप इन नेक्रोसिस. तो उसमें ऑन्कोप्लास्टी लेवल टाइप 2 देखते हैं, टाइप 1 की बात हम नहीं करते. सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू आर डूइंग एन ऑन्कोप्लास्टिक प्रोसीजर. Now I take you through this one by one. तो first is skin incision. आपको एक प्लांट तरीके से स्किन इंसिजन निकालना है, एंड ये जो कौन सी स्किन इंसिजन्स, कैसी इंसिजन्स हमें कहाँ देनी चाहिए, दे आर वेरी मच नाउ इन द लिटरेचर डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द लम्प. तो पहले हमको एक लम्प की पोजीशन देखना है, उसके अकॉर्डिंग अपना स्किन इंसिजन चूज़ करना है.
एंड प्लीज माइंड इट, ऑन्कोप्लास्टी में ऐसा नहीं होता कि छोटी सी इंसिजन दो और उसके अंदर से घोच के आप सारा निकाल दो, बिकॉज दैट विल कॉम्प्रोमाइज द मार्जिन्स ऑफ रिजेक्शन फॉर श्योर. तो ऑन्कोप्लास्टी का मतलब होता है यू टेंड टू गिव लार्ज इंसिजन्स so that you can remove large the malignant tissue with good margins, and you can also do adequate mobilizations and close. So oncoplasty does not mean smaller incisions. So the first is skin incision. You give a good skin incision. Then skin undermining. जैसे हम लोग mastectomy में करते हैं, subcutaneous fat के नीचे undermine करते हैं flaps को, the same way you would undermine in the breast also. Why you would do that? Because you have to close it also. So you want to mobilize the skin for a good cosmetic closure. Then third is nipple areola complex undermining. Now अगर आप सोचोगे कि निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स भी अंडरमाइन कर देते हैं, बट निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स अंडरमाइन करना इसलिए ज़रूरत होता है क्योंकि आपको मोबिलाइज करके उसी ब्रेस्ट टिश्यू को फिल इन करना है उस डिफेक्ट के अंदर. तो यू नीड टू मोबिलाइज द निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स ऑल्सो. और 1.5 सेंटीमीटर टिश्यू निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स के नीचे छोड़ के यू कैन अंडरमाइन द होल निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स. Then fourth is full thickness excision. So once you have undermined everything, then you would remove the tumor with the margins from top till the bottom up to the pectorals. So that means you are getting a very good margin throughout the sides. आपको superficial और deep margin मिल रहा है, केवल lateral margins का issue है. So lateral margins you can measure. Then glandular approximation. So glandular approximation means, as you can see this diagram, the skin is being undermined and this defect is being closed by glandular approximation. So you have mobilized the breast from underneath the skin. You also mobilize the breast over the pectorals and you fill in this defect. A problem क्या आता है? That you have a scar here. And apparently what will happen is, once you give a suture, the nipple areola will get retracted. Over a period, 3-4 महीने के बाद probably nipple areola complex उस scar की वजह से पूरा यहाँ पे deviate हो जाएगा. So what you need to do is, you need to place an opposite scar here. And you need to re-centralize the nipple areola complex ताकि ये scar उसको इस तरफ pull करे, वो scar उस तरफ pull करे, and in turn आपका nipple areola complex उसके center में ही रहे. So this is how you follow the steps of oncoplasty, and oncoplasty level 1 is actually very easy. This is how we deepithelize and re-centralize the nipple areola complex. And oncoplasty type 1 is actually very easy, does not require any special techniques. You just need to be a little well versed with the procedure and you can do it easily. But how does level 2 change? Level 2 कब आता है? When you need to do large resections. जब आपको 50% से ज़्यादा resections करना है, तब आता है level 2 का role. You need to remove the skin. Level 1 में you need not remove the skin, but in level 2 you need to remove the skin. Then you have to, the breast will actually shrink in size or will get smaller when you do level 2. So you have to tell the patient that the breast size will shrink and you might need to symmetrize the opposite breast also by doing a surgery in the opposite breast. And type 2 का advantage ये है कि you don't need to mobilize the parenchyma a lot to fill in the defect. इसलिए आप उसको fatty breast में भी कर सकते हो, dense breast में करना ज़रूरी नहीं है. Now I'll bring you to the picture straight away. Now see, this is a lower pole lesion, and what is being done is a superior pedicle mammoplasty. तो उन्होंने क्या किया? ये आपका lesion था. They've removed this whole tissue here, removed this whole tissue and preserved the nipple areola complex on an deepithelized pedicle and then repositioned it after removing the whole tissue. तो जब हम ये करेंगे तो क्या होगा? ब्रेस्ट का साइज ऑब्वियसली श्रिंक हो जाएगा. तो यू नीड टू प्रोड्यूस अ सिमेट्री इन द ऑपोजिट ब्रेस्ट बाय डूइंग अ सिमिलर प्रोसीजर इन द ऑपोजिट ब्रेस्ट एज वेल. Similarly, there have been described, various techniques have been described depending on where the lesion is lying. So this is another technique which is defined. There's a lesion here, and you can just remove this completely and mobilize the breast, parenchyma and skin to fill in the defect.
Similarly, for a lesion in the superior pole, you can do an inferior pedicle mammoplasty. And round block technique, this is something we very oftenly follow. बहुत easily ये आराम से हो जाती है. You go through a periareolar scar and you can fill in, remove the tumors and fill in the defect, and there is no actually scar also on the skin. So I'll show you. Just sharing a small video with you. This is not exactly round block, but a version, modified version of it, just to show you how it feels. कि प्ले नहीं हो रहा है. हाँ, कोई बात नहीं, पेन ड्राइव में है, वहाँ से निकाल सकते हैं. पेन ड्राइव में है. हाँ शायद यही है. नहीं है, मुझे नहीं लगता ये है. देखिए. This is not the one. मैक पे नहीं बनी थी, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, उसको खोल दो वापस पीपीटी को. So this PPT is anyways not running. So what we do is, when you do a round block incision, see, you can remove these large tumors by just using a periareolar incision and giving a very good cosmesis in the end. So this was done for a huge phylloides. Similarly, tennis racket mammoplasty, very easily done by using a combination of round block and a lateral based incision. You can remove a large amount of tissue, at the same time ending it, closing it with a good cosmesis, something like this. So the lesson learnt is, oncoplasty is not a rocket science. It is not a reconstruction. It is just using some simple principles in order to fill in the cavity, and it also follows the principle of nipple decentralization, because nipple areola complex will deviate once you do large resections. So the nipple has to be recentralized. But the complications of this will be that if you are excising or you are cutting through a lot of fatty breast, it may cause glandular necrosis, later on may cause infections, wound dehiscence, seromas, but these are all actually not very major complications. They are usually dealt with nicely. And breast is a very forgiving organ actually. You can do large amount of mobilizations and still manage to come out at most of the times. Now coming to volume replacements. Now as I told you, implants, latissimus dorsi flap, perforator flaps, these are not the part of oncoplasty. Oncoplasty does not involve volume replacements by using external volumes. It just utilizes the internal volume of the breast, that is breast parenchyma, to fill it up and still give you good cosmesis. If anything is used outside, it is called as a volume replacement technique. I am not teaching all of this in detail, but just to tell you that they are not synonymous. As breast conservation and oncoplasty are not synonymous, they are different. Okay, thank you so much. The problem is we are basically waiting for Vice Chancellor Madam to come, so we are not able to give a lunch break also. हाँ वही करते हैं, तब तक हम तुम्हें मैमोग्राम सिखा देते हैं. There is no other option. I'm sorry. चलो मैमोग्राम पढ़ते हैं. This is something you are seeing day in and day out, and still you don't know anything about it. तो ये क्या है मैमोग्राम? ऐसा ही दिखता है ना? Correct? Which view is this?
क्रेनियोकॉर्डल व्यू है ना. क्रेनियोकॉर्डल व्यू में आपको कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू सी अ मैमोग्राम यू हैव टू सी मैं कौन सा व्यू देख रहा हूँ. फिर ये देखना है कि मैं जो व्यू देख रहा हूँ वो एडिक्वेट है या नहीं है. तो कैसे पता चलेगा ये व्यू एडिक्वेट है या नहीं है. पेक्टोरालिस मेजर हार्डली 20% पेशेंट्स में दिखती है क्रेनियोकॉर्डल व्यू में. और कुछ, पहली बात की मैमोग्राफी लेबल्ड होनी चाहिए. उसमें पेशेंट का नाम, करने वाले टेक्नीशियन का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, कब कौन सी डेट को हुआ था, वो सब होता है. इसमें है नहीं है. सो दिस इज अ इनअप्रोप्रिएट मैमोग्राम. सेकंड, निपल शुड बी इन प्रोफाइल. प्रोफाइल का क्या मतलब है? निपल शुड बी इन सेंटर एंड प्रोमिनेंट. वाई? बिकॉज अगर निपल सेंटर में नहीं है, निपल पीछे की तरफ चली गई, तो यू माइट कन्फ्यूज you might miss a retroareolar lump first of all, and second sometimes you will confuse nipple for a lump itself. इसलिए nipple should be in profile, that you have to see. Third, pectoralis. Pectoralis muscle is seen in 20 to 30% of mammograms in CC view. ठीक है. Fourth, retroglandular fat is seen. What is retroglandular fat? This one. Okay, this should be seen. So if the nipple is in profile, you are able to see pectoralis major. You can see pectoralis major here. You can see the retroglandular fat, and you can see that nipple is in profile. So this is a okay mammogram, except that it is not labeled. Then look at the MLO view. How do you know this MLO view is adequate or not? ये भी देखना है. तो इसमें कैसे पता चलेगा? First, you draw a line. The nipples should again be in profile in both. You draw a line from the nipple and it should pass through the lower border of pectoralis major. ठीक है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है लाइन? शिवा इतनी जोर से मत सो यार, तुझे देख के मुझे भी नींद आ रही है. यहाँ पे हाँ. And third, pectoralis muscle should be seen like a convex border. ठीक है. And fourth, inframammary fold should be opened, which is not here and which is not there in majority of the mammograms available. Inframammary fold open होना बहुत important है. थोड़ा सा upper abdomen and inframammary fold should be seen because sometimes the lesions are just lying there. तो वो miss नहीं होना चाहिए. ठीक है? Clear? तो पहली चीज़ ये है कि जब आपको मैमोग्राम मिलता है तो उसमें देखना क्या है, ये देख कि इमेज करेक्ट है या नहीं है, पेशेंट का नाम क्या है, और वो जो उन्होंने एक्सपोजर दिया वो करेक्ट है या नहीं है. ठीक है. देन देर आर लॉट ऑफ एडिशनल व्यूज़ ऑल्सो. कभी कभी एडिशनल व्यूज़ लेने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कौन से मतलब मैमोग्राम में क्या देख रहे हो, उस हिसाब से आप डिसाइड करते हो. सो वन थिंग विच आई वॉन्ट यू टू नो हियर इज़ अ स्पॉट कंप्रेशन व्यू. This is a device which is used for giving the spot compression. Spot compression क्या होता है? Breast is made up of trabeculae, right? Sometimes the trabeculae are crowded together and they give the appearance of a lump. तो spot compression क्या करता है? Breast parenchyma को stretch कर देता है. जब उसको stretch करता है तो वो trabeculae open up हो जाते हैं and you can see them like a normal trabeculae. But if it is a malignancy or if it is a lump, then these trabeculae won't open up. And that will make you differentiate whether you are looking at a malignancy or a mass lesion versus a simple breast trabeculae. Then you also have to look at the type of breast, depending on कि वो कितने black and white है. तो जो ज़्यादा black mammograms होते हैं, they are actually fatty breasts. जो scattered fibroglandular opacity जैसे black and white होते हैं, where the breast parenchyma is 25 to 50% only, then you call it scattered fibroglandular. And if it is more than 50%, they are called dense breast. And जो dense breast होते हैं, they are also the ones which are notorious to have malignancy. And they are the ones जिनमें mammography probably उतनी अच्छी investigation होती भी नहीं है. But then you have to see which kind of breast you are looking at. Now when you look at a mammogram, what do you have to actually see? This is nipple areola. This is skin. This is C memory zone. This is a C-shaped structure.
outer C, inner C. So in between this C and skin is the pre-mammary zone. And in between this C and the pectorals is the retromammary zone. Understood? Now ideally these C's should be perfectly convex, like the way it is here. But if you are seeing any bulge or any angulation or any tethering, then probably you are looking at a malignancy or you are looking at a mass lesion, like this patient. This is a CA. Okay? So you have to look at all of this. Now there is something called as Milky Way. Milky Way means this is a 4 centimeter area in the CC view in the retromammary zone where there should not be any tissue. If there is any tissue seen here, then it might be the malignant breast tissue. So that you have to see. Similarly, in the MLO view also, this same Milky Way is also called as no man's land. If you see any tissue here, like these ones, then you have to be doubtful that it might be a malignant thing, because having a tissue is not common here. Now I would say actually a lot of activity happening here. Now can somebody tell me what can you see in this mammogram? Can somebody make out anything in this mammogram? Anything in this mammogram? Calcification तो दिख नहीं रहा है बहुत ज़्यादा, और कुछ? Can't you see something here which is bulging out? This is a mass lesion in the upper quadrant. ठीक है? You also have to see where the lesion is. This is the upper quadrant, this is the lower quadrant. Similarly, in the CC view, actually they should mark it. Where is the lateral and the medial? Or you can look at the axillary fold and say that this is the lateral part and this is the medial part. Okay? So you have to look at both the views, CC and MLO, and see where the lesion is lying. MLO मतलब upper outer में है, lower outer में है, तो वो इससे आप correlate कर सकते हो. ठीक है? Then when you are looking at a mass lesion, you have to look at the type of margins it is having. Which kind of margins it has, what is the density of the mass lesion, and you also have to look at the calcification pattern. Now any calcification, so मोटा मोटा जो है वो ये है कि कोई भी calcification जो linear है, ठीक है, या segmental है, एक segment में है, clustered है और more than 5 clusters है, then it might be a malignant calcification. But usually malignant calcifications are actually small. They are less than 0.5 mm. Anything which is more than 0.5 mm are usually benign. But fine calcification less than 0.5 mm, which is pleomorphic, that is variable in shape, it could be clustered, it could be linear, it could be segmental, then these are usually the malignant calcifications. Benign wala calcifications are usually diffuse or regional. Regional means they are confined to one quadrant. तो अभी जैसे मैंने बताया ना, जितनी फाइन कैल्सिफिकेशंस होंगी उतना ही मेलिग्नेंसी होने का रिस्क ज़्यादा होगा. Coarse calcifications more than 0.5 mm in size usually hint at the benign thing. Okay, now BIRADS you should know, because based on the calcification, based on the lesion, its margins, its characters, you give a BIRADS, and BIRADS as a resident you should be knowing. Okay, now please, slide number A, figure number A. Can somebody point out what is there? Figure number A. किसी को कुछ लग रहा है फिगर नंबर ए में? हाँ, sorry. There is a small malignancy here. This characteristic speculated lesion. Okay, stop. Okay. Okay. Figure number 2. Look at this lesion in the no man's area. Figure number 3. This speculated lesion here. And figure number 4.
Classically, this is called as comet tail appearance. Malignancy extending around a duct. Okay. What is there here? Look at the skin also. Don't forget the skin and nipple areola complex. That gives you a very good clue. There is no mass lesion per se, but the nipple areola complex on the right side appears to be thickened, retracted, and behind that the breast parenchyma seems to be shrunken and thickened. Correct? This is a very characteristic finding in lobular carcinomas. They don't present with discrete masses. They present like this. Now look at this. I'm showing you what you are seeing here is a spot compression. What is there? Look at the bulge in the C behind. कुछ हो रहा है यहाँ पे? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? So when you do a spot compression, this is still seen like a bulge, like a mass lesion. So this is a CA actually. Malignant mass. ये तो बहुत easy है. ये तो easy है ना? Clear cut speculated mass. But what you should not miss out is thickening of skin, almost whole of the skin, almost whole of the nipple areola complex, and the breast trabeculae also seem to be thickened around. So that might be also the malignant part. Not necessarily that they are thickened because of desmoplasia. Yeah, what's in there? ये तो अब बताना पड़ेगा यार. क्या है? Where is the lesion? कहाँ पे? कहाँ पे? Right side? And what's there? It's a clip. We placed a clip for location. What is there? Some benign calcification. But what you should not miss is this. A lesion in the opposite breast. And what you should not miss is this. Round, opaque, coarse calcifications are all benign popcorn calcifications which you see in a degenerative fibroadenoma. But what we are more concerned about is these kind of calcifications. They are called amorphous calcifications. Okay? And they could point out towards malignancy. But this calcification is very characteristic of being malignant because it is linear and it seems to be going around a duct. So when you see such kind of calcification distributed in a duct going towards the nipple, you probably might be looking at a malignant calcification. Then these are also the benign calcifications, rim-like calcifications कहते हैं इसको. They are also benign in a degenerated fibroadenoma or also called as oil cyst, post-surgical. Again, these rod-like calcifications, they are also benign. ठीक है? What is this? This is called diffuse calcification, scattered throughout the breast, but they are generally benign. ठीक है? Though they look very malignant kind, but they are generally benign because they, if you look at them carefully, they are quite round and they are quite well defined. Appreciate कर पा रहे हो यहाँ से? They are quite round and well defined. So these kind of calcifications are called teacup calcifications. When you look at them in a lateral view, you will see like a half moon shape because they are actually the calcification in the ducts and they would settle down at the bottom. So they are called as teacup calcifications. Now what we don't want to see is this kind of calcification. Clustered pleomorphic calcification. Pleomorphic means they are in different shapes and they are put in clusters. Okay, so these are the characteristic calcifications seen in malignancy. Clustered pleomorphic calcifications. Yeah, ये भी खत्म हो गया. Thank you. अभी क्या करें?
check, check. Ma'am, Hello, may I hello, request check, check. Dr. Hello, to solicit it, ma'am. check, 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 check. Hello, hello, check, check. Hello, 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 hello. Madam, I think just she'll be arriving there in a couple of minutes. So I request you all to please keep silence, refrain from नहीं है, कोई बात नहीं करना है, ठीक है? Avoid at least that is the focus here, ठीक है? किसका भैया रखा है ये?
Okay. Good evening, Honorable Vice Chancellor, Madam. As we all know, we have gathered today for first day of our surgical education program 2025, a program that is exclusively designed to serve as a 5-day academic bonanza to PG students pursuing general surgery and practicing surgeons all across the state. The academic feast Very good afternoon to all of you. It's a very special day for us, ma'am. And Dikshit ji, sir, it is indeed a very special day. We're not using plastics, words which are not coming from our heart. And this has happened because it was our cherished team. Lady here, Dr. Suresh does robotic surgery, Dr. Pahwa is a urologist, Singh does urology. We all want to have hands on this, want to grab this difficult piece of instrument. It is an expensive instrument, everybody knows it. So it is indeed my proud privilege to welcome our Honorable Vice Chancellor. And Madam has a very positive push. She went through the proposal and then she showed me a thumbs on the WhatsApp that please go ahead, it is a good procedure and then all the documentation. A very positive attitude towards development, positive attitude towards the use of technology in medicine. Madam is herself a hemato-oncologist and she herself established first department of hemato-oncology in SGPGI, and probably she was the first to do bone marrow transplant in SGPGI in the state of UP. So you can understand that she understands technology well, she is aware of this. And sir, where do you come into picture? You are like Krishna to us. सुदामा और कृष्ण की आपने सुदामा निर्धन थे, कृष्ण धनी थे, तो आपने हमें वो पीस ऑफ इक्विपमेंट जिसके लिए हम सपना देखते थे, आज हमारा वो दिन सर पूरा हो रहा है. बहुत अच्छा दिन है, मुझे लगता है कि ये 2025 बहुत अच्छा गुजरेगा. और हम पूरे विभाग की तरफ से 2 लोग हैं, आप ऑनरेबल एंड योगेश कुमार दीक्षित, वी आर सेइंग थैंक यू एंड मे रिक्वेस्ट द हाउस टू प्लीज at least for 1 minute. We will not say much. We will not say much. You, madam, is very short of time. She was conducting interview. She came in the mess. I know you're all very short of time. May I request Mr. Dikshit to please come forward. Shagar, you take the mic. And second, Dikshit ji is also a good initiative that under madam's leadership, we have been given a new entire project. When it is finished, it will be one of its kind building in whole of India, not in the state of the whole of India. Modern building system, escalators, patient facilities, ICU, OT, and madam has been very positive about everything. She takes personal interest in pain and designing, development, and everything. Madam, please come forward to Mr. Yogesh Kumar Dikshit ji. मैडम नमस्कार. माननीय कुलपति KGMU प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद, विभागाध्यक्ष सर्जरी विभाग प्रोफेसर अभिनव अरुण सोनकर, यहाँ पर उपस्थित शल्य चिकित्सकगण,
सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, प्रेस मीडिया से पधारे सारे बंधुगण, मैं आज पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की उत्तरी क्षेत्र 3 की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह हमारे लिए एवं प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है कि KGMU राष्ट्रपति महोदय द्वारा माननीय कुलपति KGMU प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद को चिकित्सा विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए अभी जनवरी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मैं पावर ग्रिड की तरफ से यहाँ उपस्थित सभी लोगों की तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूँ। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्चुअली वी आर power transmission company, we are a Maharatna company, Ministry of Power, and under corporate social responsibility we have been doing a lot of CSR activities, and in last 10 years we have done a CSR of approximately 1500 crore rupees, and in Uttar Pradesh only we have contributed 220 crore rupees in CSR, and most of our CSR activities are directed towards medical field। जो भी हम CSR की एक्टिविटी करते हैं उसका 60% लगभग हम चिकित्सा के क्षेत्र में देते हैं। उसी क्रम में हमने KGMU में एक विश्राम सदन बनाया था जिसको आप लोग पेशेंट क्या PRA बोलते हैं शायद, एकोमोडेशन, हम लोग उसको विश्राम सदन बोलते हैं। तो वो हमने पहले यहाँ किया था KGMU में, और आज की रोबोटिक सर्जरी का जो सिस्टम है, मुझे आशा है कि इस उपकरण से सारे प्रदेश के बीमार व्यक्ति हैं जिनको इसकी आवश्यकता है, क्योंकि ये जैसा मैडम बोल रही थी नॉन इन्वेसिव है, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें आपका हीलिंग पीरियड बहुत ही कम होगा। तो इसके कारण से प्रदेश के बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। और पावर ग्रिड की तरफ से मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर हम इस क्षेत्र में KGMU के लिए या कहीं भी किसी चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ और कर सकते हैं, वी आर ओपन टू इट, वी विल एक्सेप्ट रिक्वेस्ट वी कैन कंसीडर। तो पुनः मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद के साथ अपना स्टेज शेयर कर सकूँ। मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, और मैं आशा करता हूँ कि ऊपर जल्द से काम करना शुरू कर देगा। जबकि आप लोगों के प्रशिक्षण के बारे में अभी डॉक्टर अरुण बता रहे थे कि कुछ ट्रेनिंग होनी है, लोग मध्य में या मार्च के अंत में ये काम करना शुरू कर देगा। तो वो दिन हमारे लिए निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक प्रदेश में पहला रोबोटिक सर्जरी सिस्टम यहाँ पर चालू हो जाएगा। पुनः आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। Now I request our Honorable VC Madam to bless us with words of wisdom. Mr. Yogesh Dikshit, Dr. Sonkar, all the other people, all the other staff who's come from the Power Grid Corporation, all the other staff, the esteemed faculty members from KGMU as well as from the other institutes. I can see Dr. Anjali sitting, and all the staff, students, residents of the Department of Surgery. I would like to congratulate all of you, and especially Dr. Sonkar, who took the initiative and has got this surgical robotic system SSI 3 by the Power Grid Corporation. But a special thanks to the Power Grid, to Mr. Yogesh and all the other staff members who have come from Power Grid for this very noble gesture of giving medical equipment which will be of direct benefit to mankind. So a special thanks to you. And it's at cutting edge technology. So it brings KGMU into the forefront of cutting edge technology also, which is the mandate of academic
University. As I also said that with these CSR funds of Power Grid, KGMU has also established a patient relative accommodation. Very, very important for a hospital and to which we pay very little attention. And now I think I've made it mandatory for any new building that parking and a patient relative accommodation have to be designed concomitantly. So thank you for that also. And it was a good visionary effort that Power Grid gave funds for making 4 floors, but they gave also money for putting a foundation that the building could go up further on up to 12 floors. So now with the efforts and initiative of the Honorable Chief Minister and the then Chief Secretary Mr. Durga Mishra, we have got more funds under CSR for making the 8 floors. And the 8 floors are under construction. So now it will be a full 12-floor building, and it was good to have laid down the foundation for its expansion. Of course, even that space will be less for the number of beds which are in KGMU, but at least some relief. This day also marks the beginning of your education week, and I would like to congratulate the Department of Surgery, all the faculty in the department and the faculty who've come from other institutions who will be participating in delivering the lectures for this surgical week. It's good that the department is also focusing on education, on the basic advanced education of our budding surgeons. So many congratulations and good wishes for that also. So I'm very happy again that the department has acquired a robotic system. I've put a core committee into place which will look into all aspects of the robotic systems which are being acquired by KGMU, so that all the SOPs, all the training part, the operational part, procurements of its consumables are smoothened out and the system runs smoothly and without any obstacles. I can see Dr. Pava is sitting here. He's one of the members of the committee. So it's a committee where people who have a knowledge and who will be taking an initiative in establishing the SOPs have been put into the committee. I wish you good luck, Dr. Solikar, with the robotics system. I know your surgery will go to its next level of excellence, and good luck for it. And thank you, Mr. Saxena, again for this very, very great effort on your part to give us under CSR funding. Thank you. Now I request Shri Yogesh Kumar Dikshit ji, Honorable Chancellor and respected Sonkar sir, kindly come forward. Yogesh Dikshit. Will be formally mantra. A huge round of applause, ladies and gentlemen. I request DC Madam and Professor to kindly please.
among the audience, we have some. I request Professor K.K. Singh sir to kindly state Shri Ramji. He is senior DGM. Kindly forward. He is senior DGM Human Resource and Nodal Officer. Srimati Kiran Singh, madam, also with us today. She is senior DGM Lucknow and side note officer. I request Professor Power sir to kindly say. We also have today Sri Sabaha Tumarji. He is Deputy General Manager CSR Lucknow. I request Professor Suresh Kumar sir to kindly state. Sri Sabaha. As a gesture of appreciation, I have been informed that CSR team of Honorable VC Madam. I request the team to kindly do the honors. थैंक यू सर। ऑडिट की परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम ईडी सर से रिक्वेस्ट करेंगे सर ऑडिट की तरफ से हमारे रिस्पेक्टेड वीसी मैडम को फेलिसिटेट करेंगे ये सर। थैंक यू सर। इसके बाद हम एचआर रमन सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर एचओडी जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट सोनकर सर को आप फेलिसिटेट की तरफ से और साल ओढ़ा के। थैंक यू सर। And ladies and gentlemen, brings us to the end of the. Grateful to our chief guest, Shri Yogesh Kumar Dikshit ji, and Honorable Vice Chancellor Madam. For your gracious. Please accept our sincere gratitude for your support. Now I invite one of the lunch that is served in the second class. And the faculty and the power grid will join us in the meeting room. High.
इधर करो ओके नहीं आ रहा चलिए ठीक है so I hope some of you are still awake and Kushagra and Geetika has inspired and given me this topic. So is there any role of surgeon in surgery in metastatic breast cancer? Yes or no? Just raise your hand. Whosoever believes yes, raise your hand. So how many are there? Few. Chalo, let's begin then. So first I am going to present you a case. Is some issue with this thing? Not moving? नहीं ठीक है आ गया I think it should move. Yeah. Okay. Am I audible? Okay. So this was a 42 years old unmarried premenopausal woman who had been treated for PCOD in past, and she presented to us with complaint of lump in right breast for last 5 years, which had been gradually increasing in size. On examination, she had a 6 by 5 centimeter lump in right lower inner quadrant along with multiple lymph nodes in axilla. So as is the norm, we did a mammogram which revealed a bi-red lesion in right breast along with axillary lymph node, and there was a bi-red 2 lesion on the contralateral breast suggestive of old fibroadenoma. So we went ahead and did a core needle biopsy which revealed infiltrating duct carcinoma grade 2, and on ISC 7 was 10 to 15%. We also did an FNAC from right axillary lymph node which showed that this cancer is to axillary lymph node. So as is the norm, so this is what is the stage, at least T3 and 1. So in this stage we go ahead and do all the metastatic workup. So on bone scan there was a metastatic lesion in L4, lumbar 4th vertebrae. However, her other metastatic workup did not reveal any other metastasis. So a diagnosis of right breast cancer CT3N1M1 was made, and we discussed this patient in multidisciplinary tumor board, and the patient was started on chemotherapy. So the radiotherapist said that metastasis is appearing stable and there is no immediate threat or compression on the spinal cord. However, at this level the spinal cord is already non-existent and there is only, what do you call, corda equina is there. So they said first complete systemic therapy, then we will revisit this case. Otherwise, if the patient is having compression, or first we would do palliative radiotherapy. So we put this patient on anthracycline followed by taxane chemotherapy along with zoledronic acid, which is a bone protective agent, and this was followed by radiotherapy to spine. So then the plan was she had partially responded and the lump size has decreased, lymph nodes were just palpable. The plan was to put on this patient on tamoxifen for, and meanwhile she repeat PET scan was requested. So this PET scan showed that the lesion in the breast has involuted, it is mild metabolically active, and the lesion in spine was also not showing any metabolic activity and it was just sclerotic. However, this PET also revealed a few nodular lesions in right apex of lung, and which could be, but these were not metabolically active, so they said these need to be closely followed up. So how many would take up this patient for surgery at this point of time? Raise your hand. None. Okay. So what we did was that we went ahead and we performed modified radical mastectomy in this patient along with bilateral salpingo oophorectomy. And histology revealed a T2 and 1 lesion which was still IDC grade 2.
lymphovascular emboli was present, and there was no evidence of any disease in ovaries. Subsequently, this patient was put on letrozole along with palbociclib, and she is continuing on 3 monthly zoledronic acid infusion as well. And since this surgery, she has almost completed. In fact, she recently visited us for more than 1 year of follow-up, and she is doing fine. So, would you also like this same plan of therapy in the phase of metastatic breast cancer? Or do you find this slightly not as per plan? How many of you think it is not as per plan? Okay. So, what is the dilemma here? Whenever we look at metastatic breast cancer, I'm sorry, I'm just reviewing this code. So, what are our treatment goals? For any stage, we set treatment goals. Like when the patient is, thank you, when the patient is having early breast cancer, we are treating that patient with potential cure. Even in locally advanced breast cancer, cure we say is possible. Or is it? That we will come to later. But however, whenever we are looking at metastatic disease, our first goal is to preserve or improve quality of life. Second would be to palliate if there are any symptoms, like if the patient presents with fungating tumor or bleeding tumor, we tend to remove it with palliative mastectomy. Then maybe to prolong progress-free survival or overall survival. Then, but the question is, can we cure these patients? How many would say yes? No. So, our general understanding is that this is incurable disease. That's why these patients are usually put on systemic therapy, and there is very limited role of surgeon. So, let's examine the question further. So, how does this thing, we come to this conclusion that this is incurable disease? So, let's just go through the history. Our initial understanding of breast cancer was like it's propagate in a systemic manner. That's why Halstead proposed the theory of radical mastectomy. But later on, Bernard Fisher said no, breast cancer is a systemic disease, and probably the tumor in breast is just one of those manifestations. That's why we started treating these patients with systemic chemotherapy, and that led to a huge difference in progress-free survival and overall survival. However, currently, like we have seen these patients, so Hellman came up with a different kind of proposition. He said that it's not a continuum. Like the systemic disease is not systemic in one go in all patients, and probably there is a spectrum. A patient could have a localized disease, patient could have an intermediate disease, which is somewhere in between systemic disease and localized tumors. So whatever the case may be, in metastatic breast cancer, when we decide for systemic therapy, what other factors we consider? One is how's patient performance? Is there any other comorbidity? Because that would determine what kind of chemotherapy or systemic therapy you are going to offer to patient. What is family support and social support? That's also equally important, because patients have to visit hospital again and again. Then, what is patient's willingness for intense therapy? If it is incurable disease, let us take patient's preference also into account. If patient doesn't want to undergo toxic therapy, why should you subject that patient to that kind of therapy if it is incurable disease? Then one important consideration is the metastatic breast cancer, which we are looking at, whether it is de novo or it is a relapse metastasis. By de novo, I mean the patient presented with metastasis. These are 5% of patients presented in first go with metastatic breast cancer. So that also, because if patient presented de novo, that means patient has not is treatment naive. That means patient has not
received any chemotherapy or systemic therapy, and there is high chances that if we give that therapy to the patients are likely to respond. But a patient who has already received chemotherapy and then relapse, so it is quite possible that patient would be tolerant or immune to that kind of therapy. So that is one of other consideration. Then we also take into account whether patient is having skeletal or visceral metastasis. As general, we know that skeletal metastases are very slow growing metastasis, but visceral could be quite aggressive disease. Then nowadays, one of the important consideration is that what is the molecular type of tumor. And there comes the role of whether it is hormone positive TNBC or HER2 expressing tumor. Then the topic which I am going to discuss today in slight detail is whether patient is having oligometastasis or patient is having multiple metastasis. So from where this comes? How does it make difference if the patient is having oligometastasis or multiple metastasis? If it is metastasis and patient is incurable. So let's examine the facts. So this concept is not very new, but relatively new. And this has comes from the study, like when patient is having metastatic disease, the survival rate could vary between 20 to 40%. And the patients who are likely to achieve no evidence of disease after systemic chemotherapy are likely to survive better. It's no-brainer. And who are the patients who are going to achieve no evidence of disease after systemic therapy? These are the patients who are likely to have a limited number of metastases to begin with. So there comes the concept of oligometastasis. So a patient with limited metastasis is likely to fare much better than a patient who is having widespread metastasis. So now the question is, what is oligometastasis? Actually, there is no consensus definition what you defined as oligometastasis. However, if you take ESMO definition into account, they say a patient who is having up to 5 metastases, irrespective of site or organ, is defined as having oligometastasis. And up to 20% of all the metastatic breast cancer patients are likely to have oligometastasis. Then in this oligometastasis also we have to differentiate who are having genuine metastasis, oligometastasis, and who are having induced oligometastasis. I think I need not to explain it further. Genuine would be a patient who is treatment naive, like a patient who presented at first with oligometastasis, and recurrent would be a patient had been treated for primary disease, and down the line after 5 years or 10 years that patient come back oligometastasis. So this is recurrent or synchronous or metachronous oligometastasis. However, there could be a situation which is induced oligometastasis, like patient is having widespread metastasis, you put the patient on systemic therapy and then patient only 4 or 5 are remaining. So this is not the genuine oligometastasis because the patient presented with widespread metastasis. So why this concept is important? This concept is important because our initial concept was that only primary tumor is responsible for disseminating the metastasis. But currently it is also believed that in cases of oligometastasis, not only primary metastasis, which is mother tumor, but the daughters, those are also acting as a host for subsequent metastasis. So if there is limited disease, it is possible that we remove those metastases as well and patients are likely to do better. At present, we do not know how would you find out that which patients are likely to do better. The oligometastasis would remain in oligometastasis stage for long and would not rapidly progress to disseminated metastasis. There are some research going on which is based on
evaluating microRNA and circulating DNA, where maybe we could differentiate oligometastasis from disseminated metastasis. But however, we are looking for prolongation of survival in these patients. So if it is the case, so this concept has been already been examined in some prospective trials. There are many retrospective which have shown us that the patients who are having only bony metastasis are likely to fare better. There are here I have listed 4 prospective studies which are randomized studies. All of them have showed that if you treat a primary metastasis, there is not much difference in overall survival. However, a subset analysis of this MF07 trial later on showed that the younger patient with ER/PR positive tumors and patient who are having only solitary bony metastasis are likely to have better overall survival if they are treated with curative intent. Similarly, in large retrospective studies also, there is a concept that depending on prognostic strata, the patient with metastasis are likely to have better overall survival if treated with curative intent. That means primary tumor is removed. And over and above, there was a 5th randomized trial was also conducted that also concluded the same. So at present what we know is premenopausal patient, young patient and patient having bony metastasis, if they are offered primary surgery, they are likely to have better overall survival. So now in fact we are moving with this idea whether it is possible to cure the cancer or not. So if we think like purists, then cure would be kind of sounding not correct term. But how do we define cure? If a patient we offer a good systemic therapy and patient live as much as other patients who are likely to have normal life expectancy, then that would be cure for the patient. If my life expectancy is 67 today, I treat a patient of breast cancer and that patient is living up to 67 years, probably that is cure. Other concept is maybe we cannot cure, but like other lifestyle diseases, we can change that breast cancer, metastatic breast cancer to chronic condition. So many of us are living with many chronic diseases. Why not breast cancer? And all of us who are treating breast cancer, we are seeing more such patients who are living longer with advance in systemic therapy. So I will quickly go through these slides. So when there is question of cure, so why not to remove those oligometastases also? There are smaller studies as listed in this table, but they have shown that if we deal with these oligometastases with radiotherapy or even surgical resection, the cure would be, or overall survival would be further enhanced. And there are some randomized trials which are undergoing for mastectomy, whether by stereotactic radiotherapy or surgical resection. We hope to see the results in near future. So overall, what I could say is the patient is young, has good performance status, patient is not having TNBC tumor, patient is not having liver or CNS metastasis, and having oligometastasis, maybe we can offer them cure or at least prolong overall survival. So just to conclude, that we know palliative surgery has a limited role in form of removal of fungating tumor or removing some compression due to metastasis. However, the progress in systemic therapy has led to good survival in these patients, and at least a subset of patients with oligometastasis could be treated with curative intention. So next time when you see such a case, so don't think what we have done was wrong, because just go back to our first slide. The patient was young, she was premenopausal, she was having solitary bone metastasis, and down the line she is doing all right. And she is as good as any locally advanced breast cancer would be down the line after 5 years. Thank you very much. Thank you, ma'am. So if you have any query or your question, I'll be happy one or two questions. Or
Otherwise, people are happy after having a good substance. So no issues. Thank you. Next we have a big lecture. This is on Pheochromocytomas and patient preparation for surgery. So this is conducted by Dr. Ratnam. Sir is an endocrine surgeon in SGPI. He is a very researcher with over 300 publications. But sir couldn't be here today. So we have a recorded lecture which we will be playing. Good afternoon, everyone. I thank the organizing committee for this opportunity, and we shall deal in the next 15 minutes regarding pre-op management of pheochromocytoma. It will include pre-op and as well as intra-op. 52 years old. She presented to us with classical triad of pheochromocytoma, headache, palpitation, and sweating for the last 1.5 years. She had uncontrolled hypertension for 1 year and she is postmenopausal. On examination, she had a pressure of 130 by 80 on standing, and fundus did not show any or hemorrhage. Ultrasound showed a 4.5 into 3 into 4 centimeter well-defined lesion in the right suprarenal region, and 24-hour urine metanephrine and normal metanephrine both were elevated. Calcitonin and overnight dexamethasone suppression test was. Echo scan showed a concentric LVH with grade 1 diastolic dysfunction. And here you can see the CT scan showing a well-defined 4.3 into 4.5 centimeter heterogeneous tumor in the right adrenal gland. And classically here you see this with increased metanephrine and normetanephrine, which is suggestive of pheochromocytoma. So the diagnosis of pheochromocytoma, she was started on alpha blockade. The selective alpha blocker 2.5 mg once daily, then gradually increased to 7.5 mg with 10 grams of salt as well as 3 to 4 liters of water per day. She had 6th hourly BP monitor, both supine and standing, and then once alpha blocked, beta blocker 20 mg was added. Then she was in vivo with fluids on the night before surgery. And she underwent a laparoscopic transperitoneal right adrenalectomy. This was the pre-op orders. You can see intra-op surges of catecholamine secretion was there. That was reflected as BP surge, and she was managed effectively by our anesthesiologist. And she underwent a uneventful transperitoneal adrenalectomy, laparoscopic adrenalectomy. The maximum blood pressure was 238 by 110, and minimum was 80 by 38 actually. Here you can see the cut surface of the tumor. And post-op, she was kept in ICU for a single day for the management of hypotension. Once that hypertension was, she was shifted to our ward and she was discharged. And first week, we do metanephrine
was within normal limit, and final histopathology was pheochromocytoma. So why in pheochromocytoma, the anesthesia part of management as well as pre-op is very important. That is because 40% of hospital death occur during induction of anesthesia or during operative procedure. With adequate pre and intraoperative procedural therapy, the mortality has decreased from 40 to 0 to 3%. And anesthesia management is complex also. And coming to the history of pheochromocytoma, in 1886, it was first diagnosed by Frankel at an autopsy. The word comes from pheos, the dark color occurs when it is treated with chromium salts. And first surgical removal was by Roux in Europe and Mayo in US. Epinephrine was isolated by Kelly, and Horton demonstrated the presence of noradrenaline in pheochromocytoma. Catecholamine derived from cells, cause of less than 0.1% of usually arises from adrenal medulla, atrium, broad ligament of ovary, organ of Zucker candle as well. Coming to the neural crest cells, from the neural crest cells, the neuroblast arise, and from the neuroblast, chromaffin tissue gives rise to paraganglia, from which paraganglionoma can occur, and from the chromaffin tissue arise the pheochromocytes, from which pheochromocytoma arises, and it's a tumor. You also have to understand these are all various neuroendocrine tissues which are responsible for various neuroendocrine tumors, like anterior pituitary gives rise to pituitary adenoma, thymus, the thymoma, thyroid, medullary thyroid carcinoma, lung, wart cell tumors, and the pancreas, insulinoma, VIPoma, and gastrinomas, and the intestine gives rise to carcinoids. Origin, already said, which are derived from the neuroblast of the neural crest, which undergoes chromosomal mutation. It commonly secretes noradrenaline and by adrenaline, dopamine, other substances include BIP, ACTH, and most of the pheochromocytomas are benign. And most commonly, noradrenaline secreting, dopamine secreting tumors can have hypotension. That is very, very important. And this you have read in your biochemistry itself. Phenylalanine gets converted to tyrosine to dopa to dopamine to norepinephrine and epinephrine. Final, it is converted to VMA. So VMA, vinyl mandelic acid, is a very specific test for confirmation of these tumors, urinary VMA. And where these alpha blockers and beta blockers diagram, and here you can see the alpha receptor, the beta receptor, and these were these drugs which we are going to deal with. I'm coming to that in a few minutes. So if it is norepinephrine secreting, then the alpha effects predominate. Increased systolic, increased diastolic blood pressure reflects bradycardia. Whereas if it is a epinephrine secreting, increased systolic, decreased diastolic, and bradycardia. And coming to the preparation, the main goal of pharmacological preparation includes normalize blood pressure, normalize the heart rate, and we have to prevent arrhythmia, and we have to normalize the function of other organs. And this volume depletion, which has occurred due to the pheochromocytoma, normalize myocardial function, and prevent surgery-induced catecholamine storm, normalization of electrolyte and glucose disturbances. Standard is to provide an alpha blockade for at least 10 to 14 days. We have to be very careful. We have to block the patient for 10 to 14 days. That is very, very important. For blockade, we can use alpha blockers, phenoxybenzamine, prazosin. We will come to that. Beta blockers, calcium channel blockers,
used by some groups, minimum duration of 3 to 5 days, and inhibitors also. Alpha blood pressure, prevent paroxysms, restore intravenous volume, decrease regenerate receptor functioning. So there is a criteria by which we can see whether the alpha blockade is complete or not. That is known as Roisen's criteria, which says that no in-hospital blood pressure more than 169 for 24 hours to surgery, blood pressure not than 80 by 45 millimeters of mercury during standing static testing, no ST or T wave changes 2 weeks prior to surgery, and no more than 5 PCs per minute. So this is Roisen's. It was modified. Roisen's is now available, and there is criteria from Miller's anesthesia also, almost similar criteria before we say it's completely blocked. So there are two types of blockade, alpha blockade, non-selective alpha blockade, non-competitive. And the most important drug is phenoxybenzamine, which has got a long half-life. Undesirable chronotropic and inotropic effect do exist. It is a prolonged alpha blockade, and it causes somnolence, headache, stuffy nose, postural hypotension, and after you remove the tumor, it is hypotension does prolong. So, but the dosage is 10 mg daily. The other non-selective alpha blockade is phentolamine, which is very uncommon, not commonly used. So prazosin is a selective alpha blocker, which is short-acting, and usual dose is 1 milligram 8th hourly, and start with 1 milligram 8th hourly, and then increase up to 12 milligram per day. It has short elimination, and this is the most commonly used alpha blockade in many centers. Beta blockade is done after you are confirmed that you have done a good complete alpha blockade. May precipitate CHF if there is underlying cardiomyopathy. Propranolol is most commonly used beta blocker, and alpha blockade never should be used. Propranolol, as I said, atenolol, esmolol, and labetalol can also be used. Other antihypertensives, alpha methyl parathyrosin, calcium channel blockers, and ACE inhibitors. Some groups use only calcium channel blockers, like in Germany, fully use short-term calcium channel blockers. Other relevant investigations will include hemoglobin to see restoration of intravascular volume. Evidence of end organ damage in the form of renal function has to be evaluated in the form of ECG, chest X-ray, echo, excess catecholamine, and insulin resistance. So blood sugar is also important. Pre-medication, we should avoid anticholinergic, avoid histamine releasing drugs, anxiolytics like benzodiazepines can be given. And intraoperative goals, we have to have a cardiovascular stability, avoid drugs which can cause catecholamine release, and maintain intravascular volume, maintain euglycemia. These are the 4 important goals. And ECG monitoring needs to be done, pulse oximetry, CO2 monitoring, CVP monitoring, especially if you have cardiomyopathy associated with pheochromocytoma. IV access or CVP access is mandatory. Which should be avoided. We have given why all. It may cause histamine release. It may be vagolytic. It can cause sympathetic stimulation. It can cause dopamine receptor blockade also. So safer drugs: isoflurane, sevoflurane, vecuronium, propofol, fentanyl, glycopyrrolate. These are all most commonly used. Physiologist will be using these drugs. Intubation, we need deep plane anesthesia, liberal opioid use, lignocaine, and we are dealing with the pheochromocytoma patient. And during ketamine, and then maintenance
is by isoflurane or fluorine, and bolus of muscle relaxant is very, patient should not be light actually. And epidural, we do prefer epidural in our patients, and that will take care of the pain post-operatively also. And if you have intraoperative BP surges, it can be treated with SNP or with phentolamine. Some groups use IV metoprolol, esmolol, or labetalol also. Sodium nitroprusside is preferred. So we have to have a intraoperative BP measurement, anesthesia using opioids for effective symptom. And magnesium is a drug in case many of these things fail, magnesium can be used. Sodium nitroprusside is considered, it's a GTN is a venodilator. It's wrapped in silver foil. And advantages I have mentioned, I'm not going into the details of each drug for the sake of time. Alpha adenoreceptor antagonist causes mainly arterial dilation. It acts as an antiarrhythmic to epinephrine also. So in severe failure, magnesium sulfate bolus can be given. And it's useful, as I said. Some alpha 2 like dex, clonidine, and noradrenaline release. If there is ventricular in origin, treatment options include lignocaine, beta blocker, and amiodarone. Hypotension usually occurs ligated adrenaline or blockade due to intraoperative fluid loss or increased anesthesia depth. So if due to tumor before tying, just that the vein. Once the vein is tied, stop all the drugs, and then we give FSRs and FFP also are useful, and to maintain CP 10 to 15 millimeters of mercury. You can, if there is low cardiac output, low SVR, then resistant hypotension vaccine needs to be used. There are rational using of each drug, which again is out of scope of this lecture. If you want, you can read textbook of Pheochromocytoma, which you will not. So antiemetic needs to be given. Be careful that on-density prolongation. Post-operatively, these patients are nursed in either ICU or HDU. We need to maintain blood glucose. Then if both are done, then we need to give steroids also. Hypotension is the common cause of death. We need to give fluids and do it with either CVP measurement or with other parameters. Causes of hypertension in a pheochromocytoma surgery after pheochromocytoma surgery is missed pheochromocytoma, underlying essential hypertension, surgical injury with renal. So these are the references. The most important thing in pheochromocytoma surgery, even though some groups say like alpha blockade is superfluous, as on date, we need to be safe to our patients, and alpha blockade is very important for successful management of pheochromocytoma. Thank you again. Hope to meet you all. Two workshops now. One is on hemoport insertion and the other one is on breast ultrasound. हाँ जी, हम लोग लास्ट में आ गए. नींद आ रही है सबको? रिकॉर्डेड में तो सब लोग सो ही गए थे. क्या करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा में हम लोग? कैसे ब्लॉकेट करते हैं? पहले अल्फा करते हैं.
कौन से फीवर पहले बीटा करते हैं? किसे पहले करते हैं? हमेशा पहले करना है बीटा किसी में नहीं करना है, ठीक है, यानी मतलब सो गए थे सब लोग ब्लॉकेट ही करना है। कुछ अगर वेंट्रिकुलर रेट बढ़ा हुआ है करते हैं। सम स्कूल जैसे सर ने बताया कि वो लोग बिना यहाँ पेरी सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत अच्छे से वो फ्लक्चुएशन ब्लड प्रेशर का सब चीज़ों का मैनेज कर लेते हैं, बट इन हम लोग हमेशा नहीं, सुरेंद्र सर को बोलना पड़ेगा मुझे तुमसे करने के लिए तो हमेशा पहले अल्फा ब्लॉकेड। ठीक, अब हमारी 2 वर्कशॉप्स हैं, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड बायोप्सी वर्कशॉप्स, ठीक है। तो कीमोपोर्ट वर्कशॉप हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जिसमें मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, तो मैं कीमोपोर्ट का वीडियो दिखाऊंगा, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट कीमोपोर्ट एंड गेट हैंड्स ऑन कहाँ पर डालते हैं, एंड कीमोपोर्ट हमारा अभी आ जा रहा है 10 मिनट में, उसमें कैसे नीडल करनी है, कैसे क्या करना है। ब्रेस्ट बायोप्सी में वी हैव चिकन बायोप्सी मॉडल जो कि वहाँ पर स्किल लैब में है, तो वहाँ पर मैडम वहाँ अल्ट्रासाउंड भी रखा है हमारा, तो वहाँ अल्ट्रासाउंड आप लोग करेंगे एंड करेंगे, ठीक। तो यू कैन विलिंगली डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है, अपनी मर्जी से। यहाँ से बाहर जाना है तो स्किल लैब जाना है, उधर नहीं जाना है, ठीक है हमारा वहाँ पे स्किल लैब से पहले जाने नहीं तुम लोग को। कहने का मतलब आधे आधे डिवाइड हो जाओ, ठीक है। जिसको कीमोपोर्ट देखना है, सीखना है, मतलब यू कैन डू आइदर वेज और डबल 2-3 जितना हो तुम कर सकते हो, दोनों चीज़ें भी कर सकते हो, बट टू इजीली काम करने के लिए कन्वीनियंस से करना आधे आधे डिवाइड हो जाओ। जो लोग कीमोपोर्ट करना चाह रहे हैं वो प्लीज स्टे बैक है, एंड जो लोग ब्रेस्ट बायोप्सी एंड अल्ट्रासाउंड सीखना चाह रहे हैं वो प्लीज स्किल लैब में चले जाओ, वहाँ गीतिका मैडम लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे। जहाँ जैसे लोग करके आके यहाँ आ सकते और कॉल, कोई पे किसी को कहीं भी रोका नहीं जाएगा। चाय का क्या सुबह 40 का ब्रेक चाहिए, 5-10 मिनट कर सकते हैं इफ यू वांट। यस यस, चलो चलो अभी समाचार हो रहा है मेरी घड़ी में, तो 5 मिनट, ठीक ठीक, चलो चलो 5 मिनट, फटाफट जाओ, फटाफट आओ। लघु शंका का दीर्घ शंका रजत
27.
हो जाएगा उसके बाद यू कैन कम। हाँ जी, वेलकम बैक। ये पीपीटी एक्चुअली हम लोग का जो वास्कुलर कोर्स हुआ था लास्ट ईयर अभी रिसेंटली उसी का है। तो सेम कीमोपोर्ट की वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं। कीमोपोर्ट को हम लोग टिवैड भी बोलते हैं, टोटली इम्प्लांटेबल वीनस एक्सेस डिवाइस। ठीक है, एक्चुअली वीनस एक्सेस कैसे चूज़ करना है ना, हमको कब कीमोपोर्ट लेना है, कब आईवी लाइन लेनी है, कब पिक लाइन लेनी है, तो वो चीज़ दैट हैज़ टू बी टेलर्ड एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट। कितनी बार हमें यूज़ करना है, कितनी बार थेरेपी देनी है, हमें थेरेपी में क्या देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, हमें टोटल पैरामीटर न्यूट्रिशन देना है, कितनी बार उसका एक्सेस लेना है, कुछ और देना है, कुछ और फ्लूइड्स देने हैं, या पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है, बच्चा है, बड़ा है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि एक्चुअली हमें वीनस एक्सेस डिवाइस कौन सा लेना है। टिवैड इज़ वन ऑफ सच वीनस एक्सेस डिवाइस। ठीक है, पिक लाइन है, मॉडरेट साइज पोर्ट्स होते हैं, सेंट्रल लाइन है, दैट ये सारे आपके वीनस एक्सेस डिवाइस में होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 3 चीज़ों में डिवाइड होता है, शॉर्ट टर्म वीनस एक्सेस डिवाइस, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो पेरिफेरल कैनुलास होते हैं या सेंट्रल लाइंस होती हैं, मीडियम टर्म में मिड लाइन कैथेटर्स होते हैं या पिक लाइन होती हैं, लॉन्ग टर्म में टनल कैथेटर्स या कीमोपोर्ट्स होते हैं। जो कन्वेंशनल पेरिफेरल कैनुला हम लोग को पता है 2 से 3 दिन तक मैक्सिमम रखते हैं, हम लोग खींच तान के उसे 5-7 दिन चला लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाता है, फिर उस वेन को हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज़ पेनफुल फॉर द पेशेंट ऑल्सो। पिक लाइन 3 से 6 महीने के लिए होती है। पिक लाइन लास्ट टाइम अगर आप लोग को याद हो, अक्षय ने डेमोन्स्ट्रेट करा था, यहाँ से डालते हैं हम लोग एंड इट इज़ काइंड ऑफ लॉन्ग लाइन जो कि सेंट्रल आईवीसी पर जस्ट जहाँ हमारा आईजेवी मिलता है हार्ट में, एट्रिया में, वहाँ तक जाती है। दैट इज़ अ लॉन्ग लाइन जिसे पिक लाइन बोलते हैं। टनल कैथेटर भी ऐसे होते हैं जो कि 6 वीक से ऑलमोस्ट 1 साल तक रखे जाते हैं। कीमोपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि साल भर से ज़्यादा तक रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका ये बहुत फ़ायदा है। एंड इसकी टिप कहाँ होती है? एसवीसी में होती है। यू कैन सी तीनों की टिप एसवीसी में हो रही है, जहाँ आईजेवी जाती है, और बस ऊपर की प्लेट कन्वेंशनल पेरिफेरल जो कैनुला है वो पेरिफेरल वेन में रहती है। ये आईवी कैनुला है, मुझे इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल लाइन हम लोग डालते हैं, सब लोगों ने इमरजेंसीज़ में देखा है, ट्रॉमा में देखा है, सेंट्रल लाइन एनेस्थीसिया में इलेक्टिव में देखा है ना। तो आईजेवी में सेंट्रल लाइन डालते हैं या सबक्लेवियन वेन में वो लोग सेंट्रल लाइन डालते हैं। सिमिलरली पिक लाइन है वो भी पेरिफेरली डाली जाती है एंड दैट रीचेस, जिसका पेरिफेरल एक्सेस हमारे पास बाहर रहता है, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ लॉन्ग लाइन जो कि आईजेवी तक या एसवीसी तक जाती है। पतली होती है, 4 to 5 फ्रेंच होती है। ठीक है, इससे नॉर्मली फ्लूइड हम लोग दे सकते हैं, पर पीआरबीसी ट्रांसफ्यूजन वगैरह या कुछ हैवी ऑस्मोलर कॉन्सेंट्रेशंस हम लोग नहीं दे सकते। कॉमनली हम लोग यूज़ करते थे जब हम लोग टिटनस ट्रीट करते थे पुराने ज़माने में, जब सर्जिकल डिपार्टमेंट टिटनस ट्रीट करता था। यूरोलॉजी के बगल में आप लोग देखा होगा बिल्डिंग, उसके बेसमेंट डबल बेसमेंट बना हुआ, उसमें बहुत डरावना है वो, पहला बेसमेंट फिर दूसरा बेसमेंट, मतलब इट इज़ वेरी हॉरेबल। खैर उस ज़माने में टिटनस को वहीं रखा जाता था बिकॉज वो सब शांत रहता था, अंधेरा रहता था। टिटनस में जरा सा भी लाइट भी होता था, वो स्टिमुलस से पूरा बॉडी टोनिक कॉन्ट्रैक्शन चल जाती है। तो उनमें हम लोग आईवी कैनुला नहीं ले सकते, क्योंकि बॉडी अगर टोन में, अगर मान लो ये फ्लेक्स हो गया, आपने आईवी कैनुला नहीं रखा है तो फ्लूइड नहीं जाएगा। टिटनस वाला पेशेंट पानी नहीं पी सकता क्योंकि इजोफेजियल स्पैज़म में रह सकता है, तो उसको रहता है, तो उसको हमेशा आपको टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन ही देना है। तो उसमें ये पिक लाइन बहुत फ़ायदेमंद होती है कि आपको छोटा छोटा देना है फ्लूइड, तो चलती चल जाएगी।
क्योंकि अंदर गाइडेड वायर रहता है तो मुड़ेगा नहीं, मतलब हाथ भी मुड़ गया तो लेकिन आपका फ्लूइड चलता रहेगा। वेन की वजह से, हाथ मुड़ने की वजह से वो एक्सेस गड़बड़ नहीं होता है। ये कुछ ऐसे सेंट्रलाइज्ड कैथेटर्स हैं, ये भी कॉमनली हाई एंड हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं। ये डायरेक्टली यहाँ से चेस्ट से जाते हैं और एसवीसी में एंटर हो जाते हैं। आते हैं मेन चीज़ पे, टिवैड या कीमोपोर्ट। कीमोपोर्ट नॉर्मली हम लोग आईजेवी में भी डाल सकते हैं या सबक्लेवियन वेन में, दोनों तरफ से डाल सकते हैं। कॉमनली हम लोग जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं अपनी ओटीज़ में, हम लोग आईजेवी में इंसर्ट करते हैं। लंबे समय तक सबसे ज़्यादा कीमोपोर्ट का फ़ायदा है, कीमोपोर्ट एक बार लग गया उसके बाद मरीज़ एकदम साल भर तक निश्चिंत रहता है। निश्चिंत का मतलब वो सबक्यूटेनियसली लगता है, स्किन के नीचे होता है ना, तो बाहर उठना बैठना नहाना धोना किसी को पता नहीं चलता है। इट इज़ जैसे कॉलर बोन के नीचे जस्ट लग जाता है एंड उसके बाद बहुत आसान है, पेशेंट नहा धो सकता है, सब कुछ कर सकता है एंड थेरेपीज़ ले सकता है। पेशेंट ओपीडी बेसिस में, मतलब आएगा उसने थेरेपी ली और फिर वो जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं उसे एडमिटेड रहने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चों में बहुत आसान है क्योंकि बच्चों में कोई भी कैनुला लोगे बच्चा निकाल देगा, खींच देगा, नहीं समझेगा तो ब्लीडिंग होने का डर या कैनुला फेलियर होने का डर है, वो बच्चों में नहीं होता है इसमें। तो ऑब्वियसली बिकॉज स्किन के नीचे है तो वो चीज़ आसान होती है एंड इट इज़ सेफ एंड डजंट रिक्वायर एनी केयर। तो कीमोपोर्ट किस में डालना है? कीमोपोर्ट उनमें डालना है जिनको जाहिर सी बात है लंबी थेरेपी देनी है, साल भर या 3-4 महीने एटलीस्ट थेरेपी हमको देनी है, ऐसे में डालना है। ऐसे लोगों में डालना है जिनको बार बार थेरेपी देनी है, कीमोथेरेपी देनी है, मल्टीपल ऑस्मोलर सोल्यूशन, हाई एंड ऑस्मोलर सोल्यूशन देने, बार बार वीनस एक्सेस आप लोगे, एक बार हाई ऑस्मोलर फ्लूइड दिया वो वेन खराब होगी, दूसरी बार लिया दूसरी वेन खराब होगी। तो कहाँ तक खोदते रहोगे? तो कीमोपोर्ट का फ़ायदा ये है कि डायरेक्ट कीमोपोर्ट में आपने नीडल डाली एंड वो डायरेक्टली सर्कुलेशन में वो फ्लूइड या ब्लड या जो भी चीज़ आपको देनी है, कीमोथेरेपी जो भी चीज़ देनी है, वो डायरेक्टली उस आपकी सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट या सेप्टिसिमिक पेशेंट में देना बहुत आसान होता है बिकॉज वी डोंट हैव द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोफ्लोराइटिस इन देम। ओबीस पेशेंट या पीडियाट्रिक पेशेंट में जहाँ और मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाते हैं, वेन्स नहीं मिलती, तो वहाँ ये बहुत आसान है क्योंकि डायरेक्ट हमारी मेजर वेन में जा रहा है। एंड वेन एवर पॉसिबल प्लेस देम अर्ली, मतलब ऐसा नहीं हो कि पेशेंट सिक होता जा रहा है फिर डालोगे तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। अर्लियर थेरेपी प्लान करके टाइमली इसको डाल देना ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक हर प्रोसीजर के प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं, इसके फ़ायदे तो मैंने गिना दिए, इसके नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि इट इज़ ईजी, स्किन में नीचे चला जाता है, आपने पकड़ा, मैं दिखाऊंगा, बस बहुत अच्छी सी फील आती है, आपको समझ में आता है कि स्किन में कुछ रखा है, नीचे बटन सा रखा है, उसमें प्रिक किया एंड यू आर इनटू द कीमोपोर्ट और उससे आप सर्कुलेशन दे सकते हैं, आप ब्लड विड्रॉ भी कर सकते हैं। आपको सैम्पलिंग है तो पेरिफेरल वेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली उससे ब्लड सैंपल विड्रॉ कर लीजिए, या कुछ कीमोथेरेपी देनी, कुछ भी चीज़ करना है तो बहुत ईजी है, टोटली पेन फ्री, सबक्यूटेनियस है। बस जैसे एक पिन चुभती है या निडल चुभती है, बस उतना पेशेंट को दर्द होगा, उसके बियॉन्ड थ्रोम्बोफ्लोराइटिस वाला दर्द नहीं होगा। बार बार यहाँ लाइन ख़राब होगी, कीमोथेरेपी चल रही थी लाइन ख़राब होगी, पेरिफेरल एक्सट्रावेसेशन हो गया, ये सब जो दिक्कतें हैं ये नहीं होता है। सैम्पलिंग के लिए मैंने बताया यूज़ कर सकते हैं, विड्रॉ सकता है। बच्चों में या जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या जिनमें थोड़ा सा केयर जरूरत है, उनमें बहुत आराम से हम लोग कर सकते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट होते हैं कीमोथेरेपी वाले पेशेंट में। कीमोथेरेपी एक्सट्रावेसेशन इज़ व्हाट यू से इट्स द मोस्ट हॉरिफाइंग थिंग, बिकॉज अगर वेन खराब हो गई तो खराब ही हो गई, चलो वेन खराब होना इज़ नॉट द मोस्ट डेंजरस थिंग, बट वो टिश्यू खराब होना, बिकॉज पेशेंट ऑलरेडी कीमोथेरेपी में है, उसका कोई भी वुंड नहीं हील करेगा। एक कीमोथेरेपी के बाद अगर एक्सट्रावेसेशन हो गया तो ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने लगेगा वो वुंड को भरने। पेशेंट कंटिन्यूस कीमोथेरेपी रहेगा, वो वुंड भर नहीं पाएगा, टिश्यूज़ होंगे नहीं और वो ख़राब होते जाएंगे। एंड अगर किसी छोटे बच्चे में या एल्डरली पेशेंट में ऐसा होता है तो इट इज़ पेनफुल टू सी ऑल्सो। लंबे समय तक मेंटेन कर सकते हैं, 3-3 महीने बाद सिर्फ हेपेनाइज फ्लूइड हम उसमें डाल देंगे ताकि उसकी टिप पे ब्लड क्लॉट ना जमे। कॉस्मेसिस बढ़िया रहती है, पता चलता नहीं है। यू कैन सी कि इस लेडी के जस्ट लेफ्ट राइट साइड में स्लाइटली उभरा हुआ दिख रहा है, दैट इज़ योर कीमोपोर्ट। सबक्यूटेनियस होता है तो इसलिए ज़्यादा पता नहीं चलता है। मर्फीज़ लॉ क्या कहता है कि जो कुछ गड़बड़ हो सकता है वो ज़रूर होगा, यानी कुछ भी चीज़ गड़बड़ होनी है वो हो जाती है। डीमेरिट्स यानी कि एक एडिशनल प्रोसीजर है। देखो आईवी वेन डालने में कोई बहुत आईवी कैनुला डालने में उतनी आपको
प्रैक्टिस नहीं चाहिए, वो विद प्रोसेस ऑफ लर्निंग विद इन कपल ऑफ डेज और वीक आ जाता है, बहुत ईजी है, हम लोग अपने जूनियर्स को सिखाते हैं। बट कीमोपोर्ट डालना उतना ईजी नहीं है ना। कीमोपोर्ट डालने के लिए एक लर्निंग कर्व होता है, ठीक है, मतलब जिसको आता है वो डाले, या एटलीस्ट उसकी टीम डाले जिसको आता है वो प्रोसीजर। ऑब्वियसली एक कीमोपोर्ट है, कुछ चीज़ है, एमआरआई कंपेटेबल है और दूसरी चीज़ें भी हैं, तो इट बी एस अ कॉस्ट 20 से 25,000 का एटलीस्ट आता है। सब्सिडाइज रेट में 16-17,000 20,000 के अराउंड आता है, मतलब एक एडिशनल कॉस्ट है, आईवी कैनला कॉस्ट है कहीं ज़्यादा, एंड उसकी कॉम्प्लिकेशन भी है। अगर आपने वेन पंचर कर दी, प्लूरा पंचर कर दी, गलत जगह पंचर ले लिया, तो ये सब चीज़ें एरम्बोलिज्म, न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स वगैरह वगैरह रेयर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मतलब इट ऐसा नहीं है कि सब कुछ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड है, हर चीज़ के प्रोसीजर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर आप गाइडेड कर रहे हैं, अच्छी तरीके से कर रहे हैं, सब तरीके से कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मिनिमाइज होंगी या नहीं होंगी, बट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाते हैं कि कैथेटर डिस्फंक्शन हो जाता है या कैथेटर थ्रोम्बोसिस हो जाती है, वो सब चीज़ें थ्योरेटिकल ज़्यादा हैं। एनीवेज टिवैड्स बहुत अच्छे हैं, जिन लोगों ने टिवैड या कीमोपोर्ट देखा है, प्रैक्टिस किया है, तो वो लोग जानते हैं कि इट इज़ ब्यूटीफुल थिंग। कैंसर वाले पेशेंट्स में इट इज़ अ बून एक्चुअली, ठीक है, एंड इट इज़ इन टुडेज एरा स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, चलो ये सब फोटो है, मैं एक छोटा सा वीडियो दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे हम लोग करते हैं, और उसके बाद हाँ जी, उसके बाद विल हैव हैंड्स ऑन कि कैसे नीडल कैसे डालनी है, क्या करना है, कहाँ पे डालते हैं, बेसिकली प्रोसीजर हम लोग यहाँ देख लेंगे। एंड आई विश कि जो भी जिस टीम में भी है, दूसरी टीम में कीमोपोर्ट्स डाले जाते हैं, हमारी टीम में डाले जाते हैं, जो भी रेजिडेंट्स आ सकते हैं ओटी में, जिस दिन रिपोर्ट डालते हैं, आप लोग प्लीज़ आओ। ये सब आर्मेंटेरियम हमको चाहिए, बहुत पुराना वीडियो है, कुलन का बनाया हुआ वीडियो जो कि हूँ आज। ये कीमोपोर्ट हमारा है जो मैं दिखाऊंगा, इसका सामान है सारा। ये बेसिकली कीमोपोर्ट है और उसका कैथेटर है, ठीक है, जो कि मेन रोल प्ले करता है हमारा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पेशेंट लेटा होता है, एंड लाइक यू कैन इमेजिन ये पेशेंट लेटा हुआ है, तो ऑब्वियसली पेशेंट का स्लाइटली हेड डाउन कर लेते हैं, पोजीशन में स्लाइटली हेड डाउन कर लेते हैं। उससे क्या होता है, जितना भी वीनस पुलिंग होता है हेड की तरफ से हो जाता है, मतलब हेड की तरफ सारा वीनस पुलिंग हो जाएगा ग्रेविटेशनल की वजह से। तो जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो जो वेन है हमारी, जो वेन है हमारी वो फुल हो जाएगी। ये वेन है, वेन हमेशा ऊपर होती है, इंटरजुगुलर वेन है ना, बाहर की तरफ होती है, लेटरली होती है बाहर की तरफ। ये स्किन है ऊपर, ये ऊपर स्किन है, स्किन के पास में होगी आईजेवी होगी, कैरोटिड हमेशा पीछे होती है, ठीक है। तो जब हम पीछे कर लेंगे तो पेशेंट को हेड डाउन कर लेंगे तो हमारा आईजेवी फूल जाएगी क्योंकि ब्लड से भर जाएगी, तो हमारे को पंचर करना आसान हो जाएगा। एंड अल्ट्रासाउंड पे वेन है, वेन की कोलैप्सिबल वॉल्स होती हैं, जब हम अल्ट्रासाउंड प्रोब दबाएंगे तो वो हमें दबती हुई दिखाई देगी, जबकि जो नीचे कैरोटिड है, ये जो कैरोटिड है ये प्रेस नहीं होगी, ये पल्सेट करती हुई दिखाई देगी, पीछे वाला पल्सेट कर रहा है ना, और उस पल्सेशन की वजह से वो हो रहा है। हम लोग इस एरिया में लोकल लगाते हैं, किस एरिया में इंसर्ट करना है सबसे पहले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग के स्टर्नोक्लेनोमास्टॉइड के 2 हेड्स होते हैं, है ना, 2 हेड्स होते हैं, तो हम अपोजिट साइड अगर हेड टर्न करेंगे, एक स्टर्नल हेड एक क्लैविकुलर हेड, तो इनके बीच में इंसर्ट करना है, ठीक है। यहीं पर इट इज़ द सेफेस्ट प्लेस, नॉट टू नियर टू द क्लैविकल, क्लैविकल के बहुत पास भी नहीं होना है, बिकॉज वहाँ पर फिर क्लैविकल में हमारी जो पंचर साइट है वो रगड़ेगी, बहुत दूर हो जाएंगे क्योंकि हमारा पोर्ट यहाँ करेंगे तो ऐसे करके हो जाएगा, तो किंक, ये किंक हो जाएगा, कैथेटर किंक हो जाएगा। तो समवेयर एट बिटवीन 1 to 2 सेंटीमीटर जस्ट अबव द क्लैविकल जो वी बनता है हमारा बिटवीन 2 हेड्स ऑफ स्टर्नोक्लेनोमास्टॉइड, उस पर इंसर्ट करते हैं, लोकल देते हैं। उसके बाद हम लोग नेगेटिव प्रेशर से एस्पिरेट, ये लोकल दे रहे हैं हम लोग साइड में, और फिर अल्ट्रासाउंड से लोकल दिखेगा, फिर अल्ट्रासाउंड। अब ये हम लोग एक मोटी नीडल इसमें मैं 2 mm से अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम लोग उस वेन घुसने, आईजीवी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उसके बाद आगे वेन हमारी, यू कैन सी वेन हमारी, ये वेन खा रहे हैं। जैसे हम नेगेटिव प्रेशर के संग जाएंगे तो उसमें डार्क रेड कलर का, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने लगेगा। कैरोटिड में पंचर होगा तो एकदम फ्रेश रेड ब्लड आएगा और आपको प्लंजर खींचने की जरूरत नहीं रहेगी। कैरोटिड पंचर हुआ तो अपने आप वो एकदम सुर्ख लाल, एकदम बहुत खूबसूरत रंग निकलेगा, लेकिन वो खुलता चला जाएगा। उसका मतलब है प्रोसीजर वहीं अबॉर्ट कर दो,
तुरंत निकालो एंड प्रेशर दे दो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट येस, आपको तुरंत डीकैनुलेट करना है एंड कंप्रेस कर देना अगर आपने कैरोटिड एक्सीडेंटली पंचर कर दी है तो, ठीक है। तो मैं नहीं, अरे वाह है तौबा भैया फायर ब्रिगेड बुला लो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। कुछ नहीं होगा, प्रेस करके रखो थोड़ी देर, पेशेंट को सीधा कर दो एंड स्टेबल हो जाए दो, पेशेंट के वाइटल्स मॉनिटर कर लो एंड देन यू कैन सी, यू कैन प्रोसीड ऑन द सेम साइड और अपोजिट साइड अकॉर्डिंगली, या एज ऑफ नीड से अगर हेमाटोमा बहुत ज़्यादा है यू कैन अबॉर्ट द प्रोसीजर एज ऑफ देन नाउ, मतलब डिपेंडिंग ऑन द हेमाटोमा कितना बना है। आइडियली सर्कमस्टांसेस में जब हेड डाउन रहेगा तो ये सब मतलब दिक्कत नहीं होती है, आराम से। जब पंचर हो जाती है उसके बाद हमने सिरिंज हटा ली, नीडल इन सीटू रहने दी, नीडल के थ्रू यहाँ पर हम लोग गाइड वायर डाल रहे हैं। सी ऐसा सर्कुलर ये चीज़ है, उसमें गाइड वायर पड़ा है जो कि आगे से जे शेप्ड है, ये आगे से जे शेप्ड है ना, ये टिप दिख रहा है ऐसे मुड़ा हुआ है। तो हमको अगर राइट साइड में डालना है तो हम लोग ऐसे ही डालेंगे, लेफ्ट साइड में डालना है तो इसको ऑपोजिट टर्न कर देंगे, ठीक है, ताकि वो टिप हमारी हर्ट ना करे एंड वो जो वॉल के अराउंड स्लाइड करती हुई चली जाए, ठीक है। राइट में ऐसे ही डालेंगे, लेफ्ट में ऐसे करके चला जाएगा, ठीक है। दोनों वीनस एक्सेस राइट का स्ट्रेट होता है, लेफ्ट का ऐसे करके घूम के जाता है ना, राइट एट्रियम के अंदर जाना है तो लेफ्ट में अगर जाना है तो ऐसे जाएगी, टिप ऐसे रहेगी, और राइट में जाना है तो टिप ऐसे रहेगी, डायरेक्टली खोदती हुई ना जाए आईजीवी को, बट स्लाइड करते हुए चली जाए। स्मूथली जानी चाहिए, बहुत स्मूथली, आराम से जाती है, बहुत प्यार से चल जाती है, ठीक है। कहीं पे भी रेजिस्टेंस आ रहा है यू हैव टू स्टॉप एंड जस्ट सी की रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है, जबरदस्ती घुसेड़ना नहीं है। सीएम हमारे साथ रहता है, ठीक है। तो जैसे ही जाएगा गाइड वायर अंदर, हम लोग सीएम से देखते हैं, यू कैन सी ये क्लैविकल्स दिख रहे हैं, ये कार्डिक शैडो आ रही है हमारी, और ये हमारा लेफ्ट साइड में हमने पंचर लिया, लेफ्ट साइड से राइट में आ गया हमारा गाइड वायर, आराम से शैडो हमारी कंफर्म हो जाएगी, यहाँ पर आ गया। कई बार क्या भसड़ मस्ती है कि यहाँ से आता है और ये यहाँ से इधर आईजेवी ऊपर चला जाता है ना, तो उसमें तुम्हारी पोजीशन थोड़ा सा गाइड वायर को वापस खींचना है, पेशेंट की पोजीशन फिर से करनी है एंड ग्रेजुअली और बहुत स्मूथली जाना है, तो वो अंदर तक एट्रिया तक हम लोग पहुँच जाएंगे। वंस दिस इज कंफर्म, यानी कि हमारा गाइड वायर सेफ पोजीशन में, सबसे डिफिकल्ट स्टेप ये होता है। वंस दिस इज डन, तुमने सिरिंज होती है, ऑब्वियसली सिरिंज से हम लोग, वो नाइफ होता है, नाइफ से हम लोग डायलेट कर लेते हैं, ठीक है। कोलोंजन सर बाद में डायलेट करते हैं, आई प्रेफरली जब पंचर के टाइम ही पहले मैं स्टैब इंसिजन देता हूँ, ये सर का वीडियो, दैट्स वाई सर बाद में डायलेट कर रहे हैं। व्हाट आई प्रेफर डूइंग कि हमने लोकल दिया, उसके बाद हम जिस साइड पे मुझे जाना है ट्रायंगल के बाद, क्योंकि ट्रायंगल में जब हम लोग लोकल देते हैं तो वो ट्रायंगल ब्लेब ऊपर उठ जाता है, तब कहीं ऐसा लगता है कि वेन हमारी खो गई है, तो आई प्रेफर मार्किंग विद द कैप, हम ऐसे थोड़ा सा मार्कर बना लेते हैं उसका कि यहाँ पर मुझे पंचर लेना है, लोकल देके आई गिव अ स्टैब देयर सो दैट माय पंचर साइट इज मार्क, कि मुझे पता है यहाँ पर जाना है, और स्किन का रेजिस्टेंस फिर नहीं आता है। टोटली ऑर्कल जैसे करना है कैसे भी कर सकते हो, बोथ वेज आर इक्वली गुड। डायलेट करते हैं, इसके बाद ये डायलेटर है जिसमें ग्रे शीट होती है, बीच डायलेटर होता है वाइट कलर, ये इसके थ्रू के ऊपर हम टनलिंग करते हैं, तेल हमारी पड़ी है उसके ऊपर हमने ये डायलेटर से डायलेट कर दिया। ट्रैक डायलेट करना, आईजेवी तक हमें इस ट्रैक को डायलेट करना है, ठीक, डायलेट कर चेत चढ़ाई, उसके ऊपर ये वापस चढ़ा दिया, डायलेट कर दिया, उसके बाद चढ़ा वापस इसके ऊपर हमने डाल दिया। अब ग्रेजुअली हम इसको डालेंगे और पीछे से डायलेटर को डायलेट करके गाइड वायर के संग कर लेंगे, आगे वाली चीज आगे वाली चीज बहुत स्मूथली, ठीक है। जैसे ही बाहर निकलेगा सब कुछ, ऑब्वियसली हमारा डायलेटर मोटा था, है ना, तो वहाँ से ब्लड आने लगेगा, तो तुम उस पर सिंपल गॉज रख दोगे, दैट मीन्स यू आर इन द राइट प्लेन, ब्लड आ रहा है, दैट इज करेक्ट, तुम गॉज रख के कवर कर दोगे तो वो रुक जाएगा, वीनस ब्लड है ना, वो हल्का हल्का यूज तो करेगा ही। उसके बाद ये कैथेटर काम आता है, कैथेटर को धीरे करके हम, मोटा हो गया कैथेटर हमारा मोटा होता है, ग्रेजुअली डालेंगे एंड हमें देखना है कैथेटर ये इस तरह से इसके अंदर जाएगा। कैथेटर जब आ गया, सेम इसके संग कैथेटर अंदर डालते जा रहे हैं, टनल को बाहर लेते जा रहे हैं, फिर इसको काट लिया हमने, जो हमारे हाथ में हैंड है उसको काट लिया, निकल गया। ये सिंपल खींचे भी निकल सकता है, तुम नाइफ से इंसाइज कर रहे हो उससे भी निकल जाएगा, सिंपल खींचोगे तो उससे भी निकल जाता है। उसके बाद ये वाला एंड आपने टनलर को, डायलेटर को बाहर
अब ये बस इस स्टेप पे बहुत ध्यान रखना है। अब एक एंड इस कैथेटर का हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है, एक एंड बाहर है, तो इतना भी कैथेटर अंदर नहीं डाल देना है कि भैया आप पकड़ने के लिए 1 सेंटीमीटर रह जाए कि पता चले पल्सेशन के संग पूरा कैथेटर अंदर चला गया, ठीक है। इतना भी बाहर नहीं रहना है कि आपने इतनी मेहनत से पंचर किया, आपने जरा सा डाला, अरे मैंने डाल दिया और वो पल्सेशन के साथ या खींच के गलती से बाहर आ गया, ठीक है। तो दोनों चीज़ें नहीं होनी, अंदर भी नहीं जाना है, बहुत बाहर भी नहीं आना है, इट हैज़ टू बी इन सिक्योर्ड इन प्लेस, ठीक। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अंदर गया तो फिर सीधे उस कार्डियोथोरेसिक सर्जरी को एक्सेस करना पड़ेगा, वास्कुलर सर्जरी, तभी एक्सेस होगा। ये लेटरली हम सी आर्म का एक्सरे, सी आर्म से एक्सरे ले रहे हैं, जहां पर हम ये सेकेंड रिब का लेटरल मोस्ट आउटर मोस्ट पार्ट देख रहे हैं, यहां पर हम कीमोपोर्ट का पोर्ट फिक्स करेंगे। जो पोर्ट है, कैथेटर हमारा यहाँ कहीं जाके इधर से चला गया हार्ट की तरफ, या हार्ट यहाँ कहीं पे है, ये क्लैविकल आ रही है, यू कैन इमेजिन ये लेफ्ट साइड का दिख रहा है पार्ट में, ठीक है। तो ये लेफ्ट रिब है जो आउटर मोस्ट सेकेंड रिब पे, ये हमारा फिक्स करते हैं हम लोग कीमोपोर्ट को। फिर ऑब्वियसली कीमोपोर्ट वहां लोकल दिया हमने, पूरा रास्ता जहां से वो हमारा नेक में से कैथेटर है से वहां तक जहां पर हम इम्प्लांट करेंगे, पूरा रास्ता हमारा लोकल देते हैं। अब ये हम एक पॉकेट बना रहे हैं उस कीमोपोर्ट को डालने के लिए, और ये यहाँ से नेक में हमारा हुआ है ये कैथेटर जो कि दिख रहा है, कैथेटर उस सबक्यूटेनियस से ट्रैवल करके उस पॉकेट के अंदर से निकलेगा। पॉकेट तुम्हारी इतनी एडिक्वेट होनी चाहिए कि कीमोपोर्ट जो है वो स्नगली फिट हो जाए, बहुत बड़ी भी नहीं कि कीमोपोर्ट फिसलता रहे उसके अंदर, ढूंढ ही नहीं पा रहे हम लोग कीमोपोर्ट, इतनी छोटी भी नहीं कि स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग कीमोपोर्ट को डालने के लिए। इट शुड स्नगली फिट कि बैठ जाए तो उसके बाद ज़्यादा हिले डोले नहीं, एटलीस्ट ट्विस्ट ना हो, ठीक। ये इसको इसके अंदर पॉकेट में डाल के हम लोगों ने देख लिया, इंश्योर कर लिया, हाँ पॉकेट हमारी साइज की बनी हुई है। उसके बाद ये टनलर है, ये स्टील रॉड होती है एक, इससे हम लोग यहाँ से लेके टनल बना रहे हैं नेक तक, लोकल देखा था पहले, अब हम यहाँ से इसको निकाल देंगे, ये हमारा टनलर निकल गया, टनलर निकल यहाँ से लेके टनलर हमारा यहाँ निकल गया, और उसके बाद हम उस पर कैथेटर टिप जोड़ के उसको खींच के ले आएंगे अपने साथ। हाँ, ये एक चीज़ बीच में इंपॉर्टेंट स्टेप है, यस मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। ये टनलर हम डाल रहे हैं, ठीक है, हमारा अब हमें कितना खींचना है बाहर, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो जो हमारी टिप है वो दिख रहा है कि इसकी टिप पर लेड होता है, हाँ जहाँ पे यू कैन सी द कर्सर, ये दिख रहा है कुछ डार्कन, ठीक है, ये हार्ट के संग पल्सेट करता हुआ दिखेगा, टिप हमारी डार्क लेड बॉल होती है उसमें, तो पल्सेट करती हुई वो सियाम में हम जब रियल टाइम में देखेंगे, कंटिन्यूस सियाम देंगे तो वो पल्सेट करती हुई दिखाई देगी। तो वो लेड की टिप हमारी इतनी होनी चाहिए कि सुपीरियर वेना केवा और हार्ट एट्रिया के जंक्शन पे होनी चाहिए, हार्ट के अंदर नहीं जाएगी, हार्ट के अंदर जाएगी, राइट एट्रिया में गई तो फिर वो फिर मतलब पेशेंट को अननेसेसरी सिस्टोल पैदा कर देगी ना, वो इरिटेट करेगी ऐसे नोट को। तो इट शुड बी जस्ट एट द जंक्शन ऑफ जस्ट एट जंक्शन ऑफ एट्रिया एंड आईजीवी। तो वो हम देख लेंगे, नॉर्मली लेफ्ट से डालते हैं तो अराउंड 11 to 12 सेंटीमीटर होता है, राइट से डालते हैं तो रफली 10 सेंटीमीटर होता है, डिपेंडिंग ऑन बॉडी हैबिटस, डिपेंडिंग नेक साइज, डिपेंडिंग सब चीज़ों पे, छोटा बड़ा बच्चा कैसा है, एक एवरेज एडल्ट का बता रहा हूँ रफली। राइट साइड डालते तो इट इज़ लेंथ इज कि 10 सेंटीमीटर, हमारी नेक तक 10 सेंटीमीटर, मतलब नेक तक 10 सेंटीमीटर का मतलब है यहाँ से लेके जहाँ फिक्स करना है वो 10 सेंटीमीटर लेंथ, और लेफ्ट साइड है तो इट शुड बी अराउंड 12 सेंटीमीटर रफली, कई में 11 भी होता है, कई में 10 भी होता है। सी वो पल्सेट करता हुआ दिख रहा है। अब हमने इसके ऊपर उसे दूसरा एंड कर दिया, खींच के निकाल के ला इधर ले, एंड इसमें खींचना जाए, एक हमने गाइड वायर टेम्पलेट के छोड़ दिया जिससे कि खींचते हुए बाहर ना ले आए। इतनी लेंथ जितनी नेसेसरी रखनी है, ये मार्किंग है, 1-1 सेंटीमीटर की मार्किंग है, हर 10 सेंटीमीटर 10, 15, 20, 25 लिखा होगा हर सेंटीमीटर पे, और ये हमने काट दिया, काट दिया। ये थोड़ा सा नॉब है जिसमें एक ब्लैक मार्किंग है, अगर मैं फिर से दिखाता हूँ, नॉब है, यहाँ हमने मार्किंग के अपने मार्कर के काट दिया, होता है एडिक्वेट साइज हिसाब से हमने काट दिया। उसके बाद ये नॉब है, इसमें एक ब्लैक मार्किंग है, दैट बैकवर्ड्स बॉडी
उसको चढ़ा दिया एंड उस बैक जो शीशे वाला जो केस था उसको भी ग्रेजुअली उसके ऊपर चढ़ा दिया जिससे snugly ये फिटिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ये कीमोथेरेपी बचाता है। आपने के अंदर कीमोथेरेपी डाली, पता चला तो सारी कीमोथेरेपी यहीं चेस्ट में निकल जाएगी एंड फाइनली चेक किया, आपने एस्पिरेट करके देख लिया, ब्लड आ गया और उसमें हेपेटाइटिस सलाइन पुश कर दिया अच्छे से, स्मूथली जाना चाहिए, एकदम स्मूथली जा रहा है। तो दैट मीन्स कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। जब ये कंफर्म हो गया तो हमने गाइड बार निकाल लिया, इसको सूचर बैक कर दिया, सबक्यूटिकुलर क्लोजर कर देते हैं जिससे कि हो जाता है। हाँ यस, इसमें फिक्सिंग की जगह बनी होती है कीमोपोर्ट में, तो उसको हम फिक्स करते हैं। यू कैन सी ये नॉब बने हुए हैं, सिलिकॉन के नॉब हैं, ये ऐसे 4 नॉब बने हैं, ठीक है। कुछ लोग 2 जगह से फिक्स करते हैं, यानी एक इधर एंड से सूचर ले लिया, यहाँ फिक्स कर दिया और एक इधर ले लिया, तो वो भी ठीक है, पर उसमें एक साइड इफेक्ट या गड़बड़ी क्या रह जाती है, कॉम्प्लिकेशन, कई बार इस एक्सेस पे ट्विस्ट हो जाता है। तो व्हाट आई प्रेफर डूइंग, इसको इधर फिक्स करो, इसको इधर फिक्स करो, इसको इधर फिक्स करो, पॉकेट के अंदर 3 फिक्सिंग साइट हो जाएंगी, जिससे 3 दिशाओं में खिंच जाता है, तो वो रोटेट नहीं होता है। क्योंकि अगर फिक्स कर दिया और पता चला मैनिपुलेशन के दौरान अगर वो रोटेट हो गया तो फिर तो मतलब फिर से लोकल देके खोलना पड़ेगा और रीफिक्स करना पड़ेगा हमें, तो वो कॉम्प्लिकेशन से हम थोड़ा सा बच जाते हैं। सिंपल वाइक्रल 203 जिससे फिट करना है आपको, जिससे आप कर सकते हो। एब्जॉर्बल सूचर से जाहिर सी बात है फिक्स करना है। ले लिया एंड एक बार फिर से कंफर्म किया कि सब कुछ कि नहीं, सियाम से सब कुछ जहाँ वहीं है, देन क्लोजर होता है। कि बिकॉज अभी पेशेंट लोकल एनेस्थीसिया में हमारे पास, तो हम जो कुछ ओटी में कर सकते हैं, बढ़िया से क्लोजर दे दिया, बटरफ्लाई डाल दी या उसके संग नीडल भी आती है वो भी डाल दी, ठीक है। हालांकि जिसने देखा हुआ प्रोसीजर वो थोड़ा सा अच्छे समझ पाया होगा, जिसने फर्स्ट टाइम देख रहे हो जो बच्चे लोग, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग सब लोग 2 ग्रुप्स में आ जाओ, ठीक है, 2 ग्रुप्स में आगे, तो मैं बता दे रहा हूँ क्या कैसे होता है। somewhere in